आज कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सिलसिले में फैसला कुन दिन है। ATF सदर्न पंजाब बनाम सिंध, ये मुकाबला आपके लिए बराह रास्त आ रहा है। चौथा और आखिरी दिन अब से कुछ देर के बाद शुरू होने को है। सिंध की टीम एक बड़े स्कोर के ताक़ुब में है और अब तक उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। पहली इनिंग्स में 57 रन्स बनाए हैं दोनों ओपनर्स मिलकर। साइम अयूब ने कल एक बार फिर अपने टैलेंट की अच्छी खासी झलक दिखलाई। 43 रन्स पर वो नाकाबिल शिकस्त थे और खुर्रम मंजूर भी रात गुजारने में कामयाब हुए और शाम का जो बहुत ही मुश्किल सेशन था वो उन्होंने टाल लिया। उन पर दोनों जानिब से हमला हो रहा था, फास्ट बॉलर और स्पिनर के ज़रिए। लंबी बैटिंग लाइनअप है सिंध की और बहुत लंबा सफ़र भी उनको तय करना है। और कल दिन ढलने से पहले दोनों स्पिनर्स को भी आजमाया गया, चारों पेसर्स को भी, लेकिन कोई भी जो बॉलर है वो ओपनर्स को अपने दाम में नहीं ला सका। मोहम्मद अब्बास ने 5 ओवर्स किए, अहमद बशीर ने 6 ओवर्स का अच्छा स्पेल किया था। वो बार बार सवाल पूछते रहे। मोहम्मद इलियास जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, दूसरी इनिंग्स में वो भी विकेट से महरूम है। अब तक 3 दिन के बाद ये इतर है इस मैच का। ATF सदर्न पंजाब ने 278 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में। कल दूसरी इनिंग्स उनकी 283 पर तमाम हुई। सिंध की टीम को धचका लगा था 181 पर ऑल आउट होकर इस खेल के दूसरे दिन, और अब उन्हें 324 रन की मजीद ज़रूरत है ये मैच जीतने के लिए और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 में अपनी पहली कामयाबी मुमकिन बनाने के लिए। कल तीसरे दिन के खेल की ख़ास बात ATF सदर्न पंजाब के ओपनिंग बैट्समैन ज़ैन अब्बास की शानदार सेंचुरी थी। 138 रन उन्होंने बनाए और बहुत अच्छे लगे। वो बैटिंग क्रीज पर बैक फुट पर उनके शॉट बड़े दिलकश थे और स्पिनर को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। एक छक्का भी लगाया था अबरार अहमद की गेंद पर मिड विकेट पर, और ये कट शॉट इसके हमेशा से वो रसिया रहे हैं। और बाद में मोहम्मद उमर को जो उन्होंने ये ऑफ ड्राइव किए, ये भी देखने का समा था। पूरी तरह से वो इख्तियार में नजर आए और एक दीदा ज़ेब इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। 13 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। पहली निस्फ सेंचुरी ज़्यादा तेज़ थी और ज़िम्मेदाराना इनिंग्स कबीरा वाला से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैन अब्बास की जानिब से जो उनको याद रहेगी। ये दूसरी सेंचुरी है उनकी इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मौसम में। तो आज पिंडी के मौसम में उन्होंने सुबह मैदान में पहुंचते ही अली यूनुस से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। सेकंड कंसेक्यूटिव 107th ऑफ योर करियर, कितने खुश हैं आप इस 100 से? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने रन किए और काफ़ी खुश हूँ अपनी इस इनिंग्स को लेकर, स्पेशली जिस वक्त टीम को ज़रूरत थी और उसी वक्त डिलीवर किया, तो इसकी ज़्यादा खुशी है अपने 100 से। सेकंड इनिंग 100 हमेशा मुश्किल होते हैं, तो आप अपनी जो 700 है उसमें कहाँ रेट करेंगे इस इनिंग को? फॉर श्योर वन ऑफ द फाइनेस्ट 100 आई हैव एवर स्कोर्ड और बड़ा खुश हूँ इससे और मैं इसे सबसे ऊपर ही रखूँगा अपने 7th 100 को और खुश हूँ कि मैंने टीम के लिए किया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो थी, साथ टीम को फ़ायदा हुआ। कंडीशंस आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, जब आप बैटिंग कर रहे थे तो क्या डिफरेंट कर रहे थे आप बाकी बैटर से जो आपको सक्सेस मिली? डिफरेंट तो कुछ नहीं कर रहा था, सबको बता रहा था साथ में, और बस मैं नॉर्मल खेल रहा था। जो मेरी गेम है, जो मेरे रेंज में बॉल आ रहे थे मैं उन्हें हिट कर रहा था। मेरा प्लान यही था कि मैंने कम से कम डॉट बॉल खेलने हैं, सिंगल्स लेने हैं और जो भी मुझे मेरे स्ट्रेंथ पे बॉल मिलेगा मैं उस पर बाउंड्री लेने की कोशिश करूँगा। जैन काफ़ी सालों से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाए, तो कैसे मोटिवेट रखते हैं अपने आप को? बस अली भाई, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है। आपको पता है कि अभी हमारी ओपन स्लॉट वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाकी ये है कि क्रिकेट ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है और इसमें हमेशा यही कोशिश होती है कि अपना अच्छे से अच्छा दें। बाकी जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, यही मोटिवेशन लेके मैं चलता हूँ। आज के दिन की बात करें, बहुत अहम दिन होने वाला है, पिच भी थोड़ा लो रह रहा है, तो क्या लगता है आपको कब तक आउट कर लेंगे उनको? देखें, सिंध एक काफ़ी एक्सपीरियंस साइड है। उनके पास फवाद आलम जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सैफ़ी भाई हैं, सैम काफ़ी अच्छा, उनका एक नया प्रॉस्पेक्ट है। तो
आसान तो नहीं होगा लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उन्हें आउट करें और मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जैन अब्बास एंड थैंक ऑल यू द वेरी बेस्ट। मच, थैंक यू वेरी मच। यह बड़ी उम्दा बैटिंग की जैन अब्बास ने, जिसकी वजह से ATF सदर्न पंजाब की टीम ये मैच आज जीत भी सकती है। आज शीतल हवाएं चल रही हैं यहाँ सुबह से ही और एक निखार आ गया है पूरे रावलपिंडी और पोठोहार के इस इलाके में कल के तूफान के बाद। और ऐसे में जो आज की पिच है इसका रवैया कैसा होगा, क्योंकि हालात बदले हुए हैं और ये हमें बताने के लिए शाह फैसल पहुंच चुके हैं वहाँ। Bright sunny morning here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Looking at the surroundings, you wouldn't tell that there was a lot of rain overnight, and it was for quite some time, but the conditions are just about perfect. Talk about the pitch, the 4th-day pitch. There's not a lot of wear and tear, but this wicket started a bit dry than the previous two, so there is something for the spinners to work. I'm standing here at the media center end, and if you look in front of me, there's some footmarks here outside the line of off stump. We saw Salman Ali Agha bowl a few overs last night. If he bowls with a little bit of pace, he can get help from here. And if you look at the further side of the ground, at the pavilion end, there are some rough outside the off stump. And Ali Usman, being a left-hander, and Sindh having 5 left-handers in their top 8, could really come into play over there. Intriguing day of play ahead, and I think it's spin it to win it. यहाँ स्पिनर्स को आज मदद मिलने का इम्कान है दोनों एंड से, क्योंकि रफ जो है वो डेवलप हो चुका है इस पिच पर और एक नए अज़्म के साथ और जीत की तमन्ना लिए हुए ये दोनों ही टीमें पहुंच रही हैं मैदान में। ये कल के नॉट आउट ओपनिंग बैट्समैन हैं। साइम अयूब 43 रन पर, खुर्रम मंजूर ने 55 गेंदें खेली हैं। कल 102 गेंदें इन्होंने विकेट के बगैर गुजारी। बड़ा ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि आसान नहीं होता दूसरी इनिंग्स में शाम के वक्त नई गेंद को खेलना, 17 ओवर्स को झेलना बिछड़े बगैर। और इस बारे में मज़ीद हम बात करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन यासिर हमीद कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं, उन्हें हम सुबह बखैर कहते हैं। जी सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई और ऑल व्यूअर्स। कल एक अच्छा स्टार्ट लिया था सिंध ने। साइम अयूब जो है उन्होंने बड़ी दिलकश बैटिंग की, बड़ी पुरकशिश स्ट्रोक्स खेले, 43 रन स्कोर किए कल उन्होंने, और उनके साथ उनके सीनियर पार्टनर खुर्रम मंजूर जिन्होंने 14 रन बनाए और अच्छा सरवाइव किया। अहमद बशीर जिन्होंने पहली इनिंग्स में खुर्रम मंजूर की विकेट हासिल की थी आउट स्विंग पर, उन्हें स्लिप में कैच आउट कराया था। कल भी खासी परेशानियां इन्हें खड़ी की खुर्रम के लिए। अब तक 6 ओवर्स में 2 मेडन किए, 20 रन, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। मोहम्मद अब्बास और अहमद बशीर ये दो ऐसे बॉलर्स हैं, यही बॉलिंग का आगाज़ करेंगे अटैकिंग फील्ड के साथ। आज को जो पहला घंटा है ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि रात की बारिश के बाद जो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ये किसी हद तक हैवी होगा, उसका फास्ट बॉलर्स फ़ायदा उठाते हैं रावलपिंडी में। जी हाँ बिल्कुल यकीनन, क्योंकि रात को बारिश भी हुई है और हवा में एक खुनकी है, थोड़ी ठंडक है, तो लेट्स सी कि किस तरह करते हैं बॉलर्स बॉल। यहाँ शेप दिखाई दी, लेकिन ऑफ स्टंप के ये इतनी बाहर से बाहर निकल गई। एक बात यकीनी लग रही है कि यहाँ पर सलमान अली आगा जो हैं वो पूरी तरह से हमला करने की कोशिश करेंगे, और दोनों ही टीमें के जहन में अभी तो वो 16 पॉइंट्स की आरजू होगी, क्योंकि एक अच्छी इब्तिदा मिल गई है। और अगर यहाँ साइम बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन हैं जिनके रन्स रुकते नहीं हैं। लेग साइड में खेल दिया खाली जगह पर, यहाँ
कम से कम 2 रन खुर्रम मंजूर पालेंगे। तो सिंध की टीम जो है वो चाहेगी कि साइम अयूब एक सेंचुरी बनाए और एक लंबी इनिंग्स खेलें। उस सूरत में फिर उनकी जीत का भी इम्कान रहेगा। जी अच्छा रिस्ट वर्क खुर्रम मंजूर का, अंदर आया बॉल और उसे बड़ी फुर्ती के साथ खेले, बड़ी कंसिस्टेंटली ऑफ स्टंप की लाइन पे लेफ्ट कर रहे हैं खुर्रम मंजूर कल से, और आज भी हमने देखा कि पहला बॉल छोड़ा इन्होंने। एक दफ़ा फिर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल और उसको जाने दिया खुर्रम ने। आज की पिच काफ़ी ड्राई लग रही है, थोड़ा सा रफ पैचेस भी हैं। अली उस्मान जो कि उनके स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो हेल्प कर सकते हैं इस पिच पे, और आगा सलमान भी बॉल करते हैं। अली ने कल अपने इकलौते ओवर में काफ़ी उनको टर्न मिली थी इस पिच से। वो पहली इनिंग्स में जब हालात बॉलर्स के हक में थे, ATF सदर्न पंजाब के, और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, तो इनको खेलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था फास्ट बॉलर्स को। आज स्पिनर का भी दिन हो सकता है। सलमान अली आगा जो हैं ये दाएं हाथ के बैट्समैनों के सामने उस रफ को काम में ला सकते हैं। दोनों एंड पर रफ मौजूद है। सलमान अली आगा जो हैं ये अगर पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे तो इनको मदद मिलेगी, जिस तरह कासिम अकरम ने किया था। ये अच्छी गेंद थी, बात मुश्किल में नजर आए खुर्रम मंजूर। जी हाँ, अच्छी लाइन, थोड़ा सा अंदर से किया बॉल, और मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन जगह होगी जहाँ पे बॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आउटसाइड या ऑफ स्टंप जाएंगे तो खुर्रम मंजूर को छोड़ेंगे। हमने उनकी इंटेंट देखी है, वो बॉल पे चेज़ नहीं कर रहे, तो बेहतर यही होगा बॉलर्स के लिए कि उनको अंदर से खिलाया जाए। कोई जल्दी नहीं खुर्रम मंजूर को, और अच्छी तरह नज़र में रखते हुए एतमाद से जाने दिया उन्होंने इस गेंद को। तो यूँ ये ओवर इख्तिताम को पहुंचा, 59 मजमूई स्कोर। मोहम्मद अब्बास ये मरकज़ निगाह हैं, अब तक 5 ओवर्स कर चुके हैं, 17 रन इन्होंने दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इस टीम के ये सबसे माने हुए खिलाड़ी हैं सदर्न पंजाब के। नसीम शाह क्योंकि पाकिस्तान टीम के हमरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं, और हसन अली अनफिट हैं, तो उन दो सदर्न पंजाब के बॉलर्स की अदम मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी मोहम्मद अब्बास पर है। पहली गेंद जो है वो उन्होंने सिक्के पर गिराई, ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन वो जो जगह चाहते थे बिल्कुल वहीं गेंद फेंकने में कामयाब हुए। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि मोहम्मद अब्बास एक्सपीरियंस से भरपूर उनका करियर है और बड़ी जगह पे बॉल करते हैं, हम सबको पता है। और साइम अयूब जो है बड़े होनहार प्लेयर हैं। अच्छा शॉट साइम अयूब का। आज पहला हदफ यही होगा कि अपने 50 रन्स मुकम्मल करें। ये दूसरा मौका होगा इनके करियर में, और उसके बाद जाहिर है कि इनकी नज़रें जो हैं अपनी अव्वलीन फर्स्ट क्लास सेंचुरी पर होंगी। इनसे बड़ी उम्मीदें हो गई हैं
जब नेशनल T20 कप शुरू हुआ था तो पहले इनका नाम नहीं था स्क्वाड में, फिर एहसान अली ज़ख्मी हुए और उनकी जगह पर इनको बुलाया गया। वाइड ये हो सकती थी वाइड बॉल क्रिकेट में। दो खिलाड़ी ज़ख्मी हो गए थे सिंध के, एक रुमान रईस और दूसरे एहसान अली। रुमान रईस की जगह सुहेल खान ने ली थी। उन्होंने नेशनल T20 कप में सिंध के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की और साइम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। अच्छा शॉट खेला गैप में 2 रन्स के लिए। साइम अयूब का ये आज का पहला स्कोरिंग शॉट था। जो बहुत जल्दी अपना इम्पैक्ट शो कर रहे हैं साइम अयूब। अभी इनका पहला सीज़न है। एम्पायर जो है खालिद महमूद, जिन्होंने अच्छा मैच था इनके लिए। आसिफ याकूब सीनियर एम्पायर, एलीट पैनल के एम्पायर हैं। जी हाँ, ये दोनों ही PCB एलीट पैनल में शामिल अंपायर हैं और इस वक्त जो सबसे सीनियर अंपायर हैं सर्किट में वो खालिद महमूद हैं। 28 साल से अंपायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद अब्बास जो है क्या चाहेंगे कि यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर ही इनको ज़्यादा बॉलिंग की जाए और फिर LBW करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर ये बार बार इनके पैड्स पर आएंगे तो साइम अयूब को रन्स बनाना आते हैं उस सूरत में। जी बिल्कुल, हर किस्म का जो हरबा है वो अपनाएंगे और आजमाएंगे। सीनियर बॉलर हैं और इख्तिताम पजीर हुआ 61 पे कोई आउट नहीं। एबटाबाद में बलूचिस्तान की टीम मुश्किल में है। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में 136 रन्स पर उनकी 5 विकेटें गिरी हैं। अभी 168 रन्स उनको चाहिए हैं इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए। नॉर्दर्न ने अपनी पहली इनिंग्स में 520 रन्स बनाए। फैज़ान रियाज ने डबल सेंचुरी बनाई। अहमद जो हैं ये वार्म अप हुए बगैर ही आए हैं। मोहम्मद अब्बास को देखकर लग रहा था जैसे उनका पहला ओवर वार्म अप था, लेकिन अहमद बशीर को मूवमेंट मिल रही है। फैसलाबाद खैबर पख्तूनख्वा के 220 के जवाब में सेंट्रल पंजाब ने 173 रन बनाए। उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। बारिश की वजह से अभी वहाँ मैच शुरू हो नहीं सका। खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है इस साल यासिर उनके ज़्यादा रन्स नहीं आ रहे। एक सेंचुरी ज़रूर स्कोर की कामरान ने, ये गेंद नीचे रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है दबी दबी खेली है इस सीज़न में। तीसरा राउंड हो चला है। जी उनका शायद रिदम बन नहीं रहा इस दफ़ा, और जिस तरह हमने पास्ट में देखा है उन्होंने पिछले साल भी पिछले साल के भी चैम्पियन हैं, उससे भी पिछले साल के। और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है नेशनल T20 में, तो एट टाइम्स टीम्स पे भी जो ये टाइम आ जाता है कि उनकी शफलिंग होती है, प्लेयर्स नए आते हैं, कुछ नए प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं शायद उनकी टीम में, तो जिनके सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वकार ने सेंचुरी स्कोर की एबटाबाद के पिछले मैच में, और इसके अलावा एक और जो अच्छी इत्तलात थी कि कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की थी। अब वो सीनियर बैट्समैन हैं।
एक बार फिर रन नहीं मिला खुर्रम मंजूर को। अहमद बशीर जो हैं ये इस वक्त चाह रहे हैं कि ये खुर्रम मंजूर को ही इस सेंट से बॉलिंग करते रहें और साइम अयूब पर अटैक जो है मोहम्मद अब्बास करें, जो लेफ्ट हैंडर के सामने हमेशा ज़्यादा फाल रहते हैं। जी बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी यही लग रही है। कल से हम देख रहे हैं खुर्रम मंजूर ने यही एंड संभाला हुआ है ज़्यादा मोस्टली, और अब्बास को ज़्यादा साइम ने फेस किया, लेकिन बड़ा पॉजिटिव खेले साइम की जो कल की इनिंग थी। और आज अगर इसी तरह की बैटिंग वो कर गए तो सिंध एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ सकता है इस मैच में, उनकी बैटिंग को देखते हुए पीछे। एक रन लिया बहुत तेजी से। साइम अयूब बड़े बासलाहियत बैट्समैन हैं, ये स्ट्रोक मेकर हैं और एफर्टलेस अंदाज में अपने रन्स बनाना जानते हैं, पेस इनको पसंद है। देखिए कितना ज़्यादा इनके पास वक्त है अपने शॉट्स खेलने का। इस ओवर में सिर्फ एक ही रन बन सका बशीर के, 62 स्कोर है 20 ओवर्स के बाद। खुर्रम मंजूर जो हैं ये मोहम्मद अब्बास को कल शाम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया गया है। मोहम्मद अब्बास अब तकरीबन आदी हो चले हैं इस सूरत हाल के। अक्सर विकेट कीपर्स जो हैं वो स्टंप्स पर आ मिलते हैं, लेकिन ये खुश नहीं है कवर के फील्डर्स से कि रन नहीं होना चाहिए था। खुर्रम मंजूर चाह रहे थे कि ये वही सामने रहे। ये अब्बास ने बहुत बॉलिंग की है कल से साइम को, और खेले भी बहुत अच्छे हैं। जो प्लान अब्बास उनके अगेंस्ट कर रहे थे उसको बड़ा अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया है साइम ने। ये वो लाइन और लेंथ है जहां पर मोहम्मद अब्बास को ज़्यादातर विकेटें मिलती हैं लेफ्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़, यही इनकी कामयाबी का राज है। ये तकरीबन अपने दाम में ले आए थे। ये देखिए ऑन द ऑफ खेलने के लिए गए, ये इतना आसान काम नहीं होता रेड बॉल क्रिकेट में। ये अच्छा शॉट नहीं था, इस शॉट को अवॉइड करना होगा साइम को। और जो बिल्कुल जो स्कोरिंग शॉट्स हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट करें, शॉट बनाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। यह सबक सीखा है, फ़ौरन ही जो है अगली गेंद है उसको जाने दिया, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की साइम अयूब ने। इससे ये भी जाहिर होता है कि ये अच्छे लर्नर हैं, क्विक लर्नर। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। फ़ौरन अपनी गलती को रेक्टिफाई किया उन्होंने और बाहर की बॉल को जाने दिया। यही बेहतर तरीका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का, जब पूरा दिन हो आपके पास बैटिंग करने के लिए और इतने शॉट्स हैं कि ज़रूरत ही नहीं है इस बॉल को छेड़ने की। वेल डन। एक बार फिर अब शायद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने आउटसाइड या ऑफ स्टंप चेज़ नहीं करना, जो कि एक अच्छा साइन है। और अब्बास उधर ही बॉल कर रहे हैं। अब यहाँ से ये एक अंदर लेके आएंगे इनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप की लाइन से। यहाँ ये अगर ये शुरू में निगोशिएट कर लेते हैं तो बाद में इनको रन्स मिलेंगे,
क्योंकि नया दिन है, आपको फिर से सेट होना पड़ता है। आप 43 रन पर ही क्यों ना खेल रहे हूँ या 143 पर। फिर स्ट्रोक खेलने पर खुद को आमादा किया था साइम अयूब ने। अब्बास इसका बिल्कुल बुरा नहीं बनाएंगे। ये बॉल थोड़ा सा अंदर से किया इन्होंने स्टम्प्स की लाइन से और बाहर ही निकला बॉल। कंट्रोल लूज किया क्योंकि बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला। सीधा खेलना चाहते थे, थोड़ा सा शॉट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। गेंद नीचे रही, लेकिन खुशकिस्मती थी साइम की कि ऑफ स्टंप की खासी बाहर थी। तो आज के दिन का ये चौथा ओवर जाता रहा। 63 ATF सदर्न पंजाब। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छी बैटिंग लाइन जो कि एक अच्छे आगाज़ से इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सऊद शकील, उमैर बिन यूसुफ, फवाद आलम, साद खान, सरफराज अहमद, नंबर 7 तक इनकी बैटिंग है। इंटरेस्टिंग है ये मैच, इनकी पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। और शानदार बॉलिंग, लाजवाब गेंद थी, बाल बाल बचे, आउटसाइड एज के बहुत करीब से गई खुर्रम मंजूर के। खुर्रम मंजूर जो है वो कल से उनका फोकस है कि इन्होंने बॉडी के पास खेलना है। ये इनके सर्वाइवल की बहुत बड़ी वजह है, जो इन्होंने बहुत अच्छे लेफ्ट भी किए और इस तरह का जो थोड़ा सा बॉल अच्छा बॉल होता है उस पर इनका बल्ला करीब रहता है इनके। और जो विकेट कीपर हैं आज इन पर भी नजरें रहेंगी। आखिरी दिन है इस मैच का। क्रिकेट में कहा जाता है कि जितनी मुश्किल बैटिंग होती है, ये जितनी आसान या मुश्किल बैटिंग होगी उतनी आसान या मुश्किल विकेट कीपिंग भी होती है। पिचेस पर स्लिप फील्डर्स पर भी नज़रें होंगी। अगले मैच में दरअसल उमर सिद्दीक जो हैं ये विकेट कीपिंग की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे सुबकदोश हो जाएंगे। एबटाबाद में जो इनका बलूचिस्तान से मैच होना है अगले राउंड में, उसमें आज़म खान विकेट कीपर होंगे। आज वो ज्वाइन करने वाले हैं यहीं इस्लामाबाद में ही ATF सदर्न पंजाब की टीम को। वेस्ट इंडीज़ से आए आज़म खान, बारबाडोस के लिए फाइनल खेल के CPL का। जी हाँ, बिल्कुल जो नेचुरल विकेट कीपर होते हैं या जो रेगुलर विकेट कीपर होते हैं, देखिए रेगुलेशन का बॉल था लेकिन उनके हाथ से निकल गया। हार्ड हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, अपने पास आने दें बॉल को। स्लिप कॉर्डन और स्लिप कीपर ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया होगा इस मैच में, क्योंकि रिज़ल्ट का इस पे बहुत इन्हिसार है। 1-2 कैचेस अगर अच्छे पकड़ते हैं तो ये मैच में होंगे, ड्रॉप करते हैं तो ये मैच से बाहर हो जाएंगे। या ख़ास तौर पर जिस तरह की बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं, ये खोज में हैं आउटसाइड एज के अहमद बशीर। इसलिए आज जो स्लिप की हिकमत अमली है वो भी बदली हुई है। पहली स्लिप में सलमान अली आगा आ गए, जो पहली इनिंग्स में ज़्यादा वक्त दूसरी स्लिप में थे। और इस टीम के जो बेहतरीन स्लिपर हैं वो जैन अब्बास हैं, वो आज दूसरी स्लिप पर हैं। ये अच्छा फैसला किया है कोच शाहिद अनवर ने। कल ये मैदान में नहीं आए थे सेंचुरी करने के बाद, और ये अच्छे फील्डर हैं स्लिप के। जी हाँ, सलमान अली आगा की अगर बात करें तो उन्होंने मुश्किल कैच पिछली इनिंग में पकड़ा खुर्रम मंजूर का, और सीधा कैच जो था फवाद का आई गेस वो ड्रॉप किया था। तो फील्डर तो वो अच्छे हैं लेकिन अक्सर आसान चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है इंसान, मतलब प्लेयर बैट्स फील्डर।
तो बॉल निकल जाता है। तो आसान चीज़ों की भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और शानदार गेंद, काबिल तारीफ स्पेल नौजवान अहमद की जानिब से। देखिए मुसलसल परेशान करते गए हैं, यहाँ के वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हैं, यहाँ से खेलने पे मजबूर होते हैं एंगल के साथ। गेंद इन हुई और फिर आउट हो गई पड़ने के बाद। 63 पर कोई नहीं। जी हाँ, डाउट क्रिएट होता है जब आप क्रीज को यूज़ करके बाहर निकलते हैं। अहमद बश साइम अयूब को यहाँ ये समझने की ज़रूरत होगी कि इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन कुछ देर के लिए उनको अपनी ख्वाहिशों के हवाले नहीं करना, ख़ुद को रोक कर रखना है। एक बार जब गेंद अच्छी नज़र आने लगेगी, पाँव बेहतर अंदाज में चलने लगेंगे, गेंद को आप खेलने के आदी हो जाएंगे, तो फिर आपको रन्स मिलेंगे। बहुत से रन्स हैं आखिरी दिन भी पिंडी में। जी हाँ, बिल्कुल। इनको इस पहले घंटे को सरवाइव करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह ये खेल रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो आई एम श्योर कि ये इस टाइम को निकाल सकते हैं। खूबसूरत बॉल, एक्सीलेंट बॉल। अब इनका बॉल काफ़ी स्विंग हो रहा है, हवा में स्विंग हुआ, पड़ के बाहर निकला, और पीछे से भी अगर आप देखें तो यूं जाते ही चला गया। खूबसूरत बॉलिंग, इस पेस के साथ इतना कंट्रोल बहुत कम देखने को मिलता है। और अब तो ये बिल्कुल ये फैशन बन चुका है इंटरनेशनल रेड बॉल क्रिकेट में कि जो लेफ्ट हैंडर हैं उनको ज़्यादातर जो राइट आर्म पेसर हैं वो अराउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं। उससे एक तो ये होता है कि ऑफ साइड जो है वो आप क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लेफ्ट हैंडर हैं ये ऑफ साइड में रन्स बनाते हैं। और ये जब से ब्रायन लारा को ग्लेन मैग्रा ने सबसे पहले उनके खिलाफ ये अंदाज़ अपनाया था, जो बड़ा कारगर रहा था। लारा को अक्सर कॉट बिहाइंड करा दिया करते थे। ये देखिए इस बार लाइन और लेंथी शॉट खेलने के लिए साइम अयूब ने शानदार कवर ड्राइव किया, और अब वो सिर्फ 1 रन के फासले पर हैं अपनी निस सेंचुरी से। ये कमाल शॉट था, बहुत ही खूबसूरत शॉट। थोड़ा सा आगे गिरा था बॉल और पूरा उसको रीच करके मिडल ऑफ द बैट गैप में खेले 4 रन्स के लिए। और कितना अच्छा बैलेंस था इस शॉट में, अगर आप देखें तो उनका जो बैलेंस, हेड पोजीशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सब कुछ ही बेहतरीन। ग्रेट शॉट। एक और अच्छा शॉट। हम बात कर रहे थे कि इनको कुछ बच के चलना चाहिए, लेकिन शायद जो साइम अयूब की सोच है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या। उनके रन्स भी यहीं से आते हैं, ये ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर से, तो अपने अंदाज पर वो समझौता करने पे तैयार नहीं है। ये अपनी जगह पर एक अच्छी सोच है। जी हाँ, बिल्कुल। बॉलर ने एक ट्रैप बनाया हुआ है। हमें पता है कि अब्बास जो है वो क्लास बॉलर है, लेकिन वो उसे बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं। अच्छा बॉल,
खूबसूरत डिलीवरी, बीट हुए इस बार और ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 67 पे कोई आउट नहीं। पहली इनिंग्स में सिंध की इब्तिदा अच्छी नहीं थी। 12 पर पहली विकेट गिरी और फिर 24 रन तक पहुंचते उनने 4 विकेटें गंवा ली थी। लेकिन वो जो दबाव है उसको कम किया इन ओपनर्स मिलकर दूसरी इनिंग्स में। 67 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। अहमद बशीर आएंगे बॉलिंग करने के लिए और क्रीज का ये जितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं वही परेशानी का सबब है। यहाँ एक फास्ट बॉलर जो हैं ये यासिर हमीद से भी उनका मुकाबला हुआ था। भारत के फास्ट बॉलर जो हैं वो यही अंदाज़ अपनाते थे, क्रीज का ऐसा इस्तेमाल करते थे अहमद बशीर की तरह। आपको वो नाम याद होगा बहुत अच्छी तरह यासिर? जी जी बिल्कुल अच्छी तरह याद है, लक्ष्मीपति बालाजी। बालाजी। वो भी इस तरह डाउट क्रिएट होता है जब बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज बॉल करे और बाहर निकाले, तो आखिर तक यही रहता है कि बॉल मुझे अंदर आएगा क्योंकि बॉलर क्रीज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहीं से वो बाहर निकालता है, इस तरह अहमद बशीर कर रहे हैं। तो वो जो डाउट है वो बैट्समैन के माइंड में हमेशा रहता है। उस सीरीज़ में लक्ष्मीपति बालाजी ने बड़ी मकबूलियत हासिल की थी यहाँ पे। उनकी जो स्माइल थी वो बहुत अच्छी थी। जहाँ भी वो जाते थे, जब वो मैदान में खेल रहे होते थे तो उनके नाम के नारे लग रहे होते थे। और लम्स में एक प्रोग्राम हुआ था उस टेस्ट सीरीज़ के दौरान लाहौर में जी, और वहाँ पर भी बालाजी को मेहमान बुलाया गया था राहुल द्रविड़ के साथ। वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, ये भी थे मेहमानों में। तो वहाँ पर भी बालाजी के नाम के नारे लग गए थे लम्स के उस हॉल में। उनको बड़ी मकबूलियत मिली थी उस सीरीज़ में। जी हाँ बिल्कुल। और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी उसमें, और उनका जो बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था, स्माइलिंग थे वो बहुत ज़्यादा, तो लोगों को बड़े पसंद आए वो। यहाँ पे आप खुरम मंजूर जो जिस रोल में खेल रहे हैं, आप इनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। हालांकि हमें पता है कि ये स्ट्रोक प्लेयर हैं और ये अपने शॉट्स नहीं रोकते, लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ा होल्ड किया हुआ। कल से मैं देख रहा हूँ 76 बॉल्स खेले, सिर्फ 18 रन बनाए इन्होंने। ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो बाद में रिकवरी भी कर सकते हैं अच्छी। अब दोनों एंड पर बड़ी उम्दा और नपीतुली बॉलिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा मुकाबला हो रहा है। और ये बड़ा ही एक नाजुक सा मरहला है। अगर यहाँ जल्दी विकेट नहीं मिलती तो फिर ये बहुत लंबा दिन हो जाएगा सदर्न पंजाब के बॉलर्स और फील्डर्स के लिए। जी बिल्कुल आसान नहीं होगा। जिस तरह बैटिंग हो रही है तो बॉलर्स का भी ये एक इम्तिहान है। अगर ये स्कोर चेज हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मार्का होगा सिंध की टीम का। जो उनकी अप्रोच है इस वक्त तक बहुत अच्छी है। इस सिंगल के साथ ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 67 पे कोई आउट नहीं।
Still searching for their first wicket, the ATF Southern Punjab bowling lineup. Edged and taken. As I said, they're looking for their first wicket. They've got one, courtesy to a brilliant outswinger from Mohammad Abbas. And he was the one who was looking good to get a wicket, and he's got one, the important wicket of Khurram Manzoor. A wonderful start to Mohammad Abbas and ATF Southern Punjab. Have a look at that. Straightened up and a good catch in second slip. Well, this is wonderful. Excellent way. Big prize wicket. Khurram Manzoor gone at 19 runs, 80 deliveries for him. It's 68 for 1. The captain walks in. For the loss of first wicket, Khurram Manzoor. That's some impressive record by South Shakil. 3,609 runs, 12 50s, 1200, 18 50s and 1200. Good conversion rate, best of 174. A very good average of 49.43. Good captaincy. Set up Khurram Manzoor very nicely, brought the wicketkeeper up to the stumps. Probably that was the reason got that wicket. Now the responsibility lies on South Shakil. He has to stay there with Saim Ayub, who's looking on song on 49. Such an important session, this first one. Look at that, the keeper up to the stumps. The length was the key. Bit of movement. That is expected in the first hour, especially, and a very good catch by Zain Abbas in second slip. Excellent take. Abbas really having all of his experience. Wonderful time for him to display his skills here. And I think Saud was gone on duck by Abbas in the first inning. But what a take. These sorts of catches, they've been changing the moments. Just shaping away. Wicketkeeper was up and he dived it to the left side. Well capped. And look at the jubilation. Excellent. Yeah, very good captaincy. And good setup by Mohammad Abbas. He brought the wicketkeeper up to the stumps. The movement was minimized. Khurram Manzoor had to play within the crease, had to play close, and we know what Mohammad Abbas is capable of. He's a very experienced, very good fast bowler. And that was the wicket they were searching for. This will set up this day very nicely. Sindh still needing to get 313 runs to win. There's Agha Salman on the left, the captain. Umar Siddiq, the wicketkeeper. They've all done well. Seems like it's a team wicket. They've all worked in together to get that first wicket. An important one. Bit of movement for Abbas. That is not a good news for Sindh. Yes, I did see almost a couple of overs ago that when the ball was going very much near to the off stump and getting away, shaping away. So it's a good one. And good signs. And Abbas has got a tendency to move the ball around. Really experienced. Here's one option.
Ali Usman. At the moment, the ball is doing a bit for ATF Southern Punjab, so they'll happily ball their fast bowlers at the moment. Few words for South Shakir, but all in good faith. It's 68 for 1. Ahmed Bashir will continue around the wicket to Saim Ayub. I wonder what this wicket of Khurram Manzoor will put pressure on Saim Ayub, because he's the one who's looked free fluent, looked to score runs. Would that make a difference? Wider of the crease this time. Just creating that angle, Ahmed Bashir. They'll have to play all those tricks to get a wicket off Saim Ayub, because he holds the key. It's as simple as that for Sindh. Saim Ayub, if he stays on, the hope is there for Sindh to chase down that total. But if they lose their wicket here, things will change drastically. He's looking very good, a very good prospect. Saim Ayub, very stylish, brave, good player. Nicely driven through the gap. Might not have enough legs, but will definitely give him a couple of runs, and is yet another 50 for Saim Ayub. That is a fantastic inning under situation, pressure situation, and he is delivering. 51 at the moment. Yes, extremely well played. Chasing down the target, always the key when you're staying on the crease, scoring runs. And it's the last day of this game, and hope so that he may be converting those 2 figures in 3. Should try here. And this is the moment when he's approaching to the 50 runs. Well done. Yeah, he's just a great prospect to have, Saim Ayub. He's converting his white ball form into his red ball form. Look at that rate, strike rate, 75. It's his second first-class 50 at this level. He's just into his 3rd game of his career. 68 balls. That's the most positive sign from the young batter. So we can say that he is a typical example of a typical modern-day batter. Yes, exactly. Bat according to the situation when it's demanded from you. Yeah, the plan seems to be just come wider of the crease and ball with the angle, just creating that uncertainty in batter's mind that there can be one delivery move away from him. That is what he would be hoping from. Bowling wide of the crease, bowling with the angle, and one ball that straightens or goes away from Saim, that will be one to look for. Yes, and might be Saim may be having this thing that in the first inning, he bowled him, Ahmed Bashir. So might be there is some sort of anxiety. Yeah, you make a good point. That's a similar sort of angle he's searching for. The last inning, the first inning of the game, he was flashy outside the off stump. He went for the drive, was beaten all ends up. Well, looks good. Well, looking on to the bat and ball battle here at Pindi Cricket Stadium, the last day, and the boys, they are working hard. It looks like that they are making efforts, because earlier on some points were there that might be they will go towards draw, but it's really a good way to bat on and ball. Full face of the bat, nicely driven. 70 for 1, Sindh. Saim Ayub scored his second first-class 50 in a grand style.
Fourth inning, 50 runs are always valuable. And the way he has done it has been beautiful. He's been attacking, positive. Working really hard on the ball, just keeping that one side shining. That is the key here. We saw a bit of reverse swing yesterday from Mir Hamza. So what this wicket of Khurram Manzoor has done is that put Sindh on a back foot, because we were all of this opinion that they will go after, especially that first session. And he did get over that hard part, the first half an hour. Khurram Manzoor played well to Abbas and Ahmed Bashir. But it had to happen, just one ball, and we see that the ball is keeping low on this pitch. Yeah, I agree with your point, because Khurram was just taking one end. And I think so Saim Ayub, he was just having a good time approaching to his 50. I think that he would have been here. So he might be getting some more aggressively and scoring runs, because lots of good advices from a test cap player. Standing along with you, batting there. So it gives lots of hopes that your heart has been going big, high, you can bat well, that how the ball has been pitching, where you need to go further. So you're right, there might be some sort of point now at this stage that we should be looking like 10 to 15 more minutes, slightly on the back foot. Yeah, it's going to be a mighty task chasing down this total. They do have the potential of doing it. They've got quality batters in their lineup. Saud Shakil definitely will have to step up as the captain. Scored a brilliant 150 in the last game at Faisalabad. These are different conditions. These are tough conditions. And this is a quality bowling lineup who's actually suited for this sort of pitch. With Abbas there, I think everyone else, Ilyas, you talk about, Ahmed Bashir, they bowled really well alongside him. Edged and gone for a boundary. First runs for Saud Shakil. Yes, Abbas did his level best, but that ball has just gone through. And that's the way we have got 2 runs offside. He was just pushing forward, but not being able to comfortably play that, but earned runs. Yeah, Mohammad Abbas wouldn't mind this, because Saud Shakil went for it, did pushed at it, and this is what he's hoping for. For one outside edge, there are 2 slips and a gully placed for that. But the only positive was that he played it with soft hands. Should be looking to get 2, if not 4. Good work by Ahmed Bashir. They complete 2 runs. It's a sort of silence, but they are earning runs. Sometimes maybe the bowler is trying hard, but luck is not favouring you. We're looking on to this 305 more runs to win for Sindh. And Sindh did it in a past like way back in 1973-74. Chased down 425 against PIA. But I think we both were not born at that time. I'm pretty sure I wasn't. Back in 1973 against PIA at Nya Stadium, Hyderabad. But the recent, in this system, once Southern Punjab did chase on 370 at State Bank Sports Complex in season 2020.
So they must believe they can do it. They got plenty of batters. Look at that batting lineup. Umair bin Yusuf, excellent player. Quaid-e-Azam, very much experienced. Saad Khan, Sarfaraz Ahmed. They've got the potential. They've got the firepower in them to do it. They must believe they can. But at the moment, all eyes would be on Saim Ayub. How he carries this inning along. And at such young age, he's got this tag with him that he's the most improved batter for Sindh side. That angle again. He's searching for that little place just to between the gap between bat and pad. He must have learned from this first innings decision. That's how he scored his 50. Beautiful cover drives. Whenever he looks, he just looks magnificent. He's just not taking any ball for granted. Those cover drives are just beautiful to see. Anything, and that zone, he goes hard over them. Yes, exactly. Bat speed, hand-eye coordination. This has been perfect there. Rare deliveries that he was not comfortable. That flew up from the gully point, but all over, you can say like 97% he has played on merit. That's a good calculation, 97%. Must be very good with maths, Ejaz. Exactly calculating 97%. Wonderful. Yeah, 3% negative for that shot, which flew over the gully point. You can cut those numbers. You're a kind teacher, if you are. Nicely driven, equally well fielded too. Cricket will be top class. It's a very important day. Sindh needing 304 runs to win. One of the most exciting young players on crease, taking the responsibility on himself. This is what you want to see. A young batter stepping up and taking the game on himself. And how quickly he has developed his name. That everyone around in the cricket circle is talking about. As far as Saim Ayub stays, Sindh have the chance to win it. That's a huge compliment to have this early in your career. Because he has proven himself in white ball cricket. And this is his third game and already 250s to his name. It's just an excellent prospect. Yes, exactly. Good time to earn points. And become in the eyes of the selectors. Because every time we did see that in the past, that there are some sort of batters who have been batting there in longer format, might be waiting for 30, 40 odd runs, then their strike rate improves. But he has batted well. Strike rate improved right from the start of his inning. And we're in the headlines in a national T20. It's a good prospect for Pakistan's cricket. Just persisting with that line and length outside the off stump, Ahmed Bashir. I think that seems to be the plan given to him. With that angle, one odd ball keeping low, yeah, that's what probably he is suggesting. Trying to hit those pads or the wickets. Abbas, definitely, this is of huge help to these young bowlers. A mentor in the side. I'm sure this will be a great learning curve for Ilyas and Ahmed Bashir. Imran Randhawa can bowl also. Good man to have in your side. Consistency is the key, and that's what Ahmed Bashir is persisting with. It's 77 for 1. That's an interesting start. Highest successful run chase in 4th inning. As you said, 441 runs being chased by Faisalabad Wolves against Salkot Stallions in 2014-15. Lahore also doing it, 406 against Wabda in 1984. But the latest one has been that number 5th, 370 by Southern Punjab against Sindh back in 2020 at State Bank Ground in this new format.
I think that is the most significant of the record. If they can do it, if Sindh can chase this down, this will be a record in this new format. It's not gonna be easy. It's gonna be a very, very daunting task. Here is a new challenge for Sindh batters. Pfeiffer in the first inning, he'll be looking to repeat the performance. We've already seen a 10 for being taken by Mohammad Abrar for Sindh. He will be looking definitely for one. The stage is set, conditions are conducive, the ball is keeping low, everything is in their favour. Just got to ball in the right areas. He's so pleasing on eyes whenever he plays either side of the wicket. It's not just his cover drives. If you look, whenever he plays towards onside, he looks so stylish and so comfortable. The balance, look at that head position also, watching the ball till the end. He's never looked to hit it in the air. The quality is that he likes to play those rolling shots. That is the reason of his success. And his face is showing that he's pretty calm. Got to be careful. Yeah, he should know, he should realize the importance of his wicket, Saim Ayub. Because as long as he stays, Southern Punjab will be on the back foot. Because he's the one who likes scoring runs quickly. That is a huge compliment to have that early in your career. Amazing. Yes, it's good that everyone, the big guns, they are watching you, they are talking about your skills. And Pakistan is a sort of land where talent has been really promoted, if been seen on social media and somewhere. Hassan Khan, excellent fielder, excellent all-round cricketer rather, I would say. He bowls well, bats well also, and we know his fielding capabilities. It's been lovely since last evening. In Islamabad and Rawalpindi, it's been raining. It's been windy, very cold breeze. Fantastic day to play cricket. Yes, exactly. If we are able to see again those Margla Hills, can tell you that is the office, Met Office, that has been giving the rain forecast, the weather forecast, I must say. Along with this, no, little behind on the left side. No, it's a big building at Blue Area, very popular place. This one, that wide block, that has been a Met Office. You should be avoiding these shots outside the off stump. You're too valuable for this, Saim Ayub. Yes, exactly. Pretty wide. Don't need to play such kind of shot at this stage, because already Ilyas is there, who has got 5 wickets. Lots of confidence is there in his bowling. But this man in screen can score bundle of runs. Full face of the bat. A maiden to start off Ilyas' spell. It's 77 for 1.
had a lot to ask from Ijaz, but at the moment it's a break as players take drinks. एक विकेट का नुकसान हुआ सिंध की टीम को पहले घंटे के खेल में। खुर्रम मंजूर 19 रन बनाकर आउट हुए। जहन अब्बास ने कैच किया अब्बास की गेंद पर, लेकिन साइम अयूब अभी भी नॉट आउट हैं। पहले घंटे में सिर्फ 12 ओवर्स का खेल हुआ। और 20 ही रन बने। साइम अयूब की निस सेंचुरी हस्बे मामूल बहुत ही खूबसूरत और दिलकश स्ट्रोक से सजी हुई इनिंग्स थी। विकेट के दोनों जानिब अच्छे स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। का बैलेंस कमाल का, टाइमिंग लाजवाब। कहीं कहीं खतरा मोल लिया, शायद ये एक अकलौता खतरा ही मोल लिया था उन्होंने। शाम सलमान अली आगा की गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और आज सुबह अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। ऐसा लग रहा है कि अपने कैरियर में 3 ही मैचों में काफी कुछ सीख गए हैं ये फॉर्मेट खेलकर। 304 रन की जरूरत है मजीद सिंध की टीम को और 78 ओवर्स का खेल बाकी है आज के खेल में। जो तवक्को थी स्पिन से अटैक करने की, वो अब दूसरे घंटे के खेल के आगाज में ही अली उस्मान को ले आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सलमान अली आगा पवेलियन एंड से बॉल करेंगे। तो बाएं हाथ के खिलाड़ी उनके सामने हैं। सुबह जब विकेट देखी तो जो रफ ऑफ स्टंप के बाहर था बाएं हाथ के खिलाड़ियों के लिए, वो पवेलियन एंड की जानिब था अगर बॉलिंग सामने के एंड से हो। लेकिन दिलचस्पी यह है कि अली उस्मान को उसी एंड से बॉल दी गई है जहां से अबरार ने 11 विकेटें हासिल की इस मैच में। कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद कहते हैं तारिक सईद को।
बहुत शुक्रिया शाह फैसल। और ये दो लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं और उनके सामने ये अब ओवर द विकेट आकर बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपने वजह कहा कि आम ख्याल यही है कि जो ज़्यादा रफ है लेफ्ट हैंडर के सामने, अगर उसे एक्सप्लॉइट करना है तो आपको मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग करना चाहिए। एक और लेफ्ट हैंडर हैं, 5 लेफ्ट हैंडर हैं इस सिंध की टीम में। अभी साद खान को भी आना है खेलने के लिए। फिर मीर हमज़ा जो हैं ये भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। फवाद आलम की तरह सिर्फ आने वाले खिलाड़ियों में सरफराज और उमैर बिन यूसुफ जो हैं ये स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में ये दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ये मिथ ज़रूर होती है कि जिस एंड से स्पिनर ने आउट किए उसी एंड से दोबारा स्पिनर को बॉल दी जाए, और अबरार ने 11 आउट किए सामने के एंड से ही। तमाम की तमाम विकेट्स उनकी पवेलियन एंड से बॉलिंग करते हुए आई। जिम्मेदारी से खेल रहे हैं साइम अयूब। विकेट गिरने के बाद उनने सर बिल्कुल झुका दिया है और एक मुख्तलिफ अंदाज उनने अपना लिया। ये जो लेफ्ट हैंडर के सामने ये पवेलियन एंड पर वो जो रफ है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं कि अगर मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग होगी तो फिर आप मुश्किल में ला सकते हैं। इस तरफ इतनी ज़्यादा रफ नहीं है क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है। मीर हमज़ा ने बॉल किए, गुलाम मुदस्सिर ने किए। वो राइट हैंडर के ऑफ स्टंप से बाहर यहाँ पे रफ है, लेकिन जैसा आपने कहा कि टॉप 7 में अब 2 ही दाएं हाथ से खेलने वाले खिलाड़ी बचे हैं सिंध के। यहाँ तो फिर जब दाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन आएंगे तो उनके खिलाफ सलमान अली आगा खुद आ सकते हैं पवेलियन एंड से, क्योंकि शायद एक वक्त ऐसा है जब इन दोनों को दोनों तरफ से बॉलिंग करना पड़े। लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, ऑफ स्पिनर हैं। कल जो ओवर किया उन्होंने खेल ख़त्म होने से पहले, थोड़ा सा वो थ्रू द एयर क्विक बॉल कर रहे थे तो अच्छा खासा टर्न उन्हें मिल रहा था। साइम अयूब को भी हमने देखा है टर्न हासिल करते हुए, अगर वो थ्रू द एयर थोड़ा सा तेज बॉल करें। 79 पर 1। एक बॉल कम रह गई थी पिछले ओवर में और अंपायर्स ने फैसला किया कि वो बॉल दोबारा कराई जाएगी, तो अभी ओवर का इख्तिताम नहीं हुआ। अब ओवर का इख्तिताम हो जाएगा। अंपायर खालिद महमूद चूक गए गिनती में, लेकिन स्कोरर्स ने बर वक्त तवज्जो दिला दी। सिंध 79 पर 1। ये जो काउंटर इनके हाथ में नजर आ रहा है, ये आजकल के दौर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ ये मियाँ तो और जो खिजर हयात थे उनके हाथ में ये ऐसा हम देखते थे कभी कभार। ये अच्छा कवर ड्राइव, ऑफ साइड के फील्डर इस वक्त प्ले में आएंगे। दूसरा रन साइम अयूब ने हासिल किया। उनकी कोशिश ये है कि फास्ट बॉलर्स के खिलाफ रन बनाने का सिलसिला जारी रखा जाए। दोनों एंड जो हैं वो शट डाउन नहीं करना चाहते। साइम अयूब
स्ट्राइक रेट निस्बतन कम हुआ है। 50 रन मुकम्मल करने के बाद फ्रेश गार्ड लिया है। यही सीखने का अमल भी है, क्योंकि अगर ये इस फर्स्ट क्लास सीज़न में यहाँ रन्स बना जाते हैं तो T20 में इनने जितना मुतासिर किया था यकीनी तौर पर इसका इनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर सीज़न के अख्ताम पर अगर 2-3 सेंचुरियाँ बना लेते हैं, बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं, तो इनकी ज़िंदगी जो और बदल सकती है। लेकिन यहाँ ये शायद फवाद आलम का जो स्टांस है, ये इस पर पॉल निक्सन और उनके दरमियान बात हो रही है। इसमें फवाद आलम उनको समझा रहे हैं कि उनके स्टांस ऐसा रखने की वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। जी हाँ, क्योंकि फवाद अब चेंज करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन वो अपना मेथड बता रहे हैं। गहरी डिस्कशन जारी है। इस दौरान बादल भी गहरे हो गए आसमान पर। मोहम्मद इलियास ने ऐसी ही आबो हवा में ओवरहेड कंडीशंस का खासा फ़ायदा उठाया था पहली इनिंग्स में, जब उनको जल्दी गेंद मिली थी। उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। कल से हमने देखा है मौसम बड़ा मेहरबान हो गया है। यहाँ हवाएं अब तेज़ हो गई हैं, दर्जा हरारत कम हो रहा है, और क्रिकेट के लिए इससे मौजूद हालात हो नहीं सकते, ख़ास तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। गेंद हवा में थी, लेकिन पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं था। जी, मौसम में जो तब्दीली आई है तो बड़ी खुशगवार है, और तमाम ही प्लेयर्स भी शायद उसका खैर मकदम करेंगे, क्योंकि लंबे दौरानिए की क्रिकेट है। इसमें बहुत ज़्यादा मुसलसल गर्मी जो है, प्लेयर्स की काफ़ी एनर्जी सैपिंग हो जाता है प्लेयर्स के लिए। लेकिन ये आइडियल वेदर है क्रिकेट के लिए। मुनासिब टेम्परेचर है, 27 डिग्री इस वक्त, और हवा भी अच्छी चल रही है, और एक बहुत अच्छा मुकाबला भी। और अगर ये दोनों लेफ्ट हैंडर कुछ वक्त क्रीज पर गुजार गए तो आपको बहुत ही आला पाए के स्ट्रोक प्ले देखने को मिलेगा। दूर से खेलने गए, इस बार खतरा मोल लिया सऊद ने। गेंद से दूर जब आप शॉट अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं इस तर्ज की क्रिकेट में, तो ज़्यादा इम्कान यही होता है कि आप अपनी विकेट से हाथ धो बैठेंगे। ज़्यादा स्विंग देखी नहीं गई आज, लेकिन ये बॉल स्विंग हुआ। शायद उसी क्लाउड कवर का असर है जो आप कह रहे थे। इलियास ने भी बॉल को मौका दिया, आगे गिराया, और अच्छा स्विंग मिला। अच्छा मुकाबला है ये। एक और ख़राब शॉट, कमज़ोर स्क्वायर ड्राइव करने के लिए गए सऊद। मुसलसल टेम्प्ट हो रहे हैं। यहाँ पर यही बेहतर अंदाज है, गेंद को छोड़ दिया जाए। फिर स्विंग देखने में नजर आई, लेकिन सऊद का जो बैट है बॉल से काफ़ी दूर था, और जिस्म से भी काफ़ी दूर था। टेम्प्ट हुए, आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किए, थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। 31 के बाद 82 पर 1। यहाँ पर मिस फील्डिंग कर बैठे। 1 रन का यहाँ पर मौका था, लेकिन ये रन लिया नहीं है। स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत ज़रूरी होगा। पिछला ओवर सऊद ने तनहा ही तकरीबन खेला। ये ज़्यादा बेहतर अंदाज़ है। अगर आप स्ट्राइक को शेयर करते रहेंगे तो फिर बॉलर जो है ये भी सोचने पे मजबूर रहेगा, वो आप पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकेगा। जी, और एक प्लान भी बिल्ड नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हैं, इसलिए डिफरेंट प्लान्स होंगे दोनों के लिए। तो स्ट्राइक रोटेशन होती रहेगी तो बॉलर को सेट होने का मौका नहीं मिलेगा।
ये विकेट कीपर सादरन पंजाब में आज तब्दील कर लिया है। मुमकिन है इसकी वजह ये हो कि मकबूल अहमद जो हैं ये स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं, आखिरी दिन की पिच है और स्पिनर्स जो हैं इन पर उमर सिद्दीक जो है सही तरह झुक नहीं रहे थे। आखिरी दिन आपको पावर पोजीशन में आना पड़ता है विकेट कीपर को और आपको झुकना पड़ता है, बहुत अहम किरदार हो जाता है। ये अच्छे विकेट कीपर हैं मकबूल अहमद, पहला मैच खेले थे फैसलाबाद में जी, और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की तो जाहिर है उनका कोई नेमोल बदल हो नहीं सकता, खासतौर पर चौथे दिन की पिच पर। ये अच्छा शॉट, क्रीज के बाहर आए और उसके बाद टाइम किया, बिल्कुल भी जोर सर्फ नहीं किया। साइम अयूब का यही खासा है कि वो बैटिंग को आसान बना देते हैं, खा पहले दिन की पिच हो या चौथे दिन की। अगेंस्ट द टर्न खेले लेकिन फुटवर्क बहुत ही लाजवाब था, गेंद की पिच के बहुत करीब पहुंच गए और अच्छा हाथों का इस्तेमाल किया। उसके बाद अच्छा यूज कर रहे हैं बॉक्स को भी, यहाँ पॉजिटिव रनिंग की कोशिश है लेकिन एक ही रन मिलेगा। ये अच्छा फुटवर्क है जब आप बिल्कुल गेंद की पिच पर जा पहुंचते हैं और उसके बाद अगले बॉल के लिए आप बिल्कुल क्रीज की डेप्थ को यूज करते हैं और बॉलर के लिए मुश्किल बना देते हैं जिंदगी। अच्छी बैटिंग टेक्निक यही होती है स्पिन के खिलाफ। 89 पर 1। पाँच ओवर 15 रन्स, 2 मेडन किए हैं मोहम्मद इलियास ने, अपनी पहली विकेट की मुतलाशी हैं, फार रन से ही अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। आज जो तीनों पेस बॉलर्स को हमने देखा, तीनों को ही मदद मिली है हालात से, वो कि विकेट सिर्फ अब्बास को मिली, अहमद बशीर ने अच्छा स्पेल किया खुर्रम मंजूर के सामने। ये मेंटोर का भी काम कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास जो हैं, न सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए बल्कि स्पिनर्स के लिए भी। और अहम बात यह है कि इनकी बात सुनी जाती है संजीदगी के साथ। जी बिल्कुल, और कल सुबह जब इनसे बात हो भी रही थी, अभी इंग्लैंड से पूरा सीजन खेल कर आए हैं और एज एन ओवरसीज प्रो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वहां पर। तो वो बात जब हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि वो आसानी से ये मैच छोड़ सकते थे, लेकिन उनका सिर्फ यही नहीं कि अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र है बल्कि जो एक्सपीरियंस वो दुनिया भर से वो गेन करके आते हैं। कहते हैं ये हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि नौजवानों में वो मुंतकिल करें। और हैम्पशायर से खेल के आए हैं, वहाँ पर उनकी टीम में लियम डॉसन है वो जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं, शायद वही कुछ इस तरह के टिप्स जो हैं वो अली उस्मान को भी दे रहे थे तो किस लाइन और लेंथ पे किस पेस से आखिरी दिन की विकेट पे बॉल करना चाहिए उन्हें। इंग्लैंड एक ऐसा मकाम है क्योंकि एक तो उनका सीज़न बहुत लंबा होता है, अप्रैल से शुरू होकर अब तो ये सितंबर के आखिर तक जाने लगा है, अक्टूबर की तरफ अब वहाँ पर क्रिकेट आ रही है। और फिर वहाँ जो सीखने सिखाने का अमल है क्रिकेट पर, बारीकियों पे बहुत ज़्यादा बात होती है, सीखने को मिलता है। हसन अली भी काउंटी क्रिकेट खेले थे इस साल इंग्लैंड जाकर, लंकाशायर के लिए इन्होंने चंद हफ्ते गुजारे थे श्रीलंका के दौरे से पहले। तो ये अच्छा है, अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। मोहम्मद उमर आ गए हैं इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। उम्दा शॉट, बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं। साउद पिछले ओवर में कनेक्ट नहीं कर सके थे, इलियास ने दोबारा उन्हें न्योता दिया और हाथों हाथ लिया इस वाइड हाफ वॉली को साउद ने। दूर से खेले, इलियास बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन सऊद पिछले मैच में 158 रन करके आए हैं
बॉलर्स पर वापस प्रेशर डालना चाह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं बॉलर्स को कि मैं भी यहाँ पर मुकाबला करने आया हूँ, तो आप दावत दीजिए और मैं उसको कबूल करूँगा। रिस्क रिवॉर्ड वाली हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि यहाँ अगर रन तेज़ी से बनना शुरू हो गए तो सिंध की टीम के पास भी एक आउटसाइड चांस ज़रूर है मैच जीतने का। एंगल चेंज किया है इलियास ने, ओवर द विकेट आ गए हैं। कुछ यही बैट्समैन और बॉलर की जो जंग होती है, इसमें ये कामयाबी सऊद ने हासिल की। हालांकि एक ही चौका लगा, शायद मैं समझ रहा था इलियास मायूस नहीं होंगे क्योंकि दूर से खेल रहे हैं, बॉल स्विंग भी हो रहा है, लेकिन फौरन ही एंगल चेंज करके उन्हें बिल्कुल रूम ना देने का फैसला किया इलियास ने। इन दोनों को एक साथ बैटिंग पसंद भी है, क्योंकि ये बचपन से एक साथ खेले हैं पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में कराची में, जहां आज़म खान इनके कोच थे, क्लब कोच। खासा वक्त ये गुजार चुके हैं एक दूसरे के साथ भी। सऊद और साइम क्लब मेट्स के दरमियान जो है ये पार्टनरशिप है मुतवक्किल। 33 ओवर्स के बाद 95 पर 1। मैनुअल बदल जाना। पॉल निक्सन भी एक कैरेक्टर हैं, विकेट कीपर होने के नाते ज्यादा बोलना इनके लिए कोई नया नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन में तो लगता है फवाद आलम सुन रहे हैं। पॉल निक्सन काफी मुतहर्रिक हैं, और मुतहर्रिक हैं सलमान अली आगा भी, क्योंकि वो खुद आ गए हैं और उसी एंड से आए हैं जहां से वो राइट हैंडर्स के लिए ट्रबल कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त उन्हें बाएं हाथ से खेलने वाले खिलाड़ियों को का चैलेंज दरपेश है पवेलियन एंड से। उमर सिद्दीक के बारे में अभी जो ऑफिशियल वर्ड यहाँ तक पहुँचा है कि वो भी ग्रोइन इंजरी का शिकार हैं और विकेट कीपिंग नहीं कर सकेंगे, इसलिए यहाँ बुलाया गया मकबूल अहमद को। और ये शानदार शॉट, और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, ये छक्का है। साइम अयूब ने आड़े हाथों लिया ऑफ स्पिनर को। ये मुश्किल शॉट था, अगेंस्ट द टर्न खेलना, लेकिन मुश्किल को आसान दिखाना, यही तो खास बात है साइम की। जी बिल्कुल, और बिल्कुल एफर्टलेस लगा स्लॉग स्वीप। रन भी मुकम्मल हुए। दिफा और जारियत का अच्छा इंतजाज है इस दूसरे घंटे में। इस पार्टनरशिप में दावत जरूर दी थी सलमान अली आगा ने, लेकिन पीछे रहने वाले नहीं साइम भी। ये एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप हो सकती है अगर ये मजीद कुछ देर खेल गए, तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। ये अपनी रफ्तार जो है इसको कम रखना होगा सलमान अली आगा को, क्योंकि जो तेज़ रफ्तार बॉलिंग है इसका तो बुरे मनाने वाले नहीं है। ख़ासतौर पर साइम अयूब वो अभी तक ज़्यादा कंफर्टेबल लगे हैं स्पिन के सामने सऊद की निस्बत। क्या ये इस चीज़ का इशारा है कि एंड तब्दील किया जाएगा अली उस्मान का? देखना होगा। ये आखिरी गेंद अच्छा था, अच्छी फ्लाइट और लूप के साथ बॉल किया और टर्न और बाउंस भी मिला। 34 के बाद 103 पर 1। पिछले ओवर में साइम अयूब का ये छक्का, देखिए जल्दी लाइन और लेंथ को पिक कर लेते हैं, फिर एरिया भी उनके जहन में होता है। ऐसा लगता है काफी वक्त है उनके पास।
अभी पॉल निक्सन और मोहम्मद अब्बास की बात हो रही थी, इनके काउंटी के ताल्लुक की। पॉल निक्सन ही वो कोच थे जो मोहम्मद अब्बास को पहली बार काउंटी क्रिकेट में लाए थे लेस्टरशायर में, और इन दोनों का वहाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। इस वक्त पॉल निक्सन जो बाहर सिंध के ड्रेसिंग रूम में काम कर रहे हैं, वही मोहम्मद अब्बास जो हैं मैदान पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब नौजवान बॉलर्स की रहनुमाई कर रहे हैं। काउंटी क्रिकेट में जो पहले पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे जिनसे बहुत फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को भी वहाँ उनके खेलने से, वो खान मोहम्मद थे। वो समरसेट से वाबस्ता हुए थे 50 की दहाई में, और उस ज़माने में उन्हें कई टेस्ट सीरीज़ जो थी उनसे भी दस्तबरदार होना पड़ा पाकिस्तान की। लेकिन बाद अज़ां जब वो कोचिंग के लिए आते रहे, उनके यहाँ सेशंस होते थे, जब वो कैंप्स लगते थे, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स को। काउंटी क्रिकेट का बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप है, और जैसे आपने कहा कि वहाँ क्रिकेट की बारीकियों पर बात होती है, एक मुकालमा होता है। अगर आप कोचिंग सेशंस में भी इन्वॉल्व हैं तो वहाँ भी एक मुकालमा होता है, उससे आप मज़ीद उस टॉपिक की गहराई तक जा पहुँचते हैं। अपने खान मोहम्मद की बात की, मोहम्मद अकरम जो कि इस दौर के फास्ट बॉलर रहे हैं, ज़्यादा लंबा कैरियर उनका पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ के सेटअप में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ उसको लेके वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी बने। अज़हर महमूद की मिसाल भी दी जा सकती है, और यही वो इल्म है जो वो वहाँ से हासिल करते हैं और फिर आगे वो उसको स्प्रेड करते हैं। भी कुछ देर पहले हसन अली को देखा, वो हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करते हैं अज़हर महमूद को, उनके कैरियर पे अच्छा इम्पैक्ट डाला उन्होंने। स्क्वायर ड्राइव सऊद का पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन गेंद खाली जगह पर गई और 4 रन पा गए। बाउंड्रीज अब आने लगी हैं। दोनों जो बैट्समैन हैं ये एक पैगाम भी दे रहे हैं इन स्ट्रोक्स के ज़रिए कि वो दबने वाले नहीं हैं और वो मुकाबले पर उठने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, खास तौर पर सऊद ने तो बिल्कुल भी बाहर के बॉलों को जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनका फ़ायदा उठाएं और रन्स बनाएं। ये क्लियर मैसेज है ऑपोजिशन के लिए कि हम अटैक करेंगे, और कप्तान सऊद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रिस्की स्ट्रैटेजी ज़रूर है, लेकिन उनकी पॉजिटिव इंटेंट की दाद देनी होगी। अब तक अच्छी पार्टनरशिप रही, 42 रन की ये दूसरी विकेट की पार्टनरशिप है साइम और सऊद की, और इससे पहले 68 रन की पार्टनरशिप पहली विकेट के लिए खुरम के साथ साइम अयूब ने की थी। और यही चाहिए सिंध को, अगर उनने ये लंबा सफ़र तय करना है, मंजिल के आसपास पहुंचना है, तो जो इब्तिदा है ये अच्छी होनी चाहिए। मुश्किल हालात में अभी तक ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, ये तीनों जो खिलाड़ी अब तक खेले हैं सिंध के, ये अच्छे लगे। जो अटैक किया है पिछले चंद ओवर्स में, आपने देखा एक स्लिप और एक गली रह गई है। यहाँ पे सदर्न पंजाब को ज़रूर नज़र रखनी होगी। बात करेंगे इस पर ओवर के बाद। 110 पर 1। पॉल निक्सन को किसी दिन कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहिए तारिक, कि जिस तरह वो मुसलसल फवाद आलम सामने अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, अच्छा इजाफा हो सकते हैं यहाँ। उनकी मालूमात से हम भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हेड कोचेस जो हैं ये आजकल ड्यूरिंग द प्ले ये ड्रेसिंग रूम छोड़ते नहीं हैं। दो 271 रन सिंध को दरकार हैं, और अभी आज 18 ओवर्स का ही खेल हुआ है, 72 ओवर्स बाकी हैं। ये मुमकिन है ये रन्स बनाना, क्योंकि इस विकेट पर रन्स बनते हैं जब बैट्समैन सेट हो जाते हैं, और जब गेंद नर्म हो जाती है तो फिर खिलाड़ियों को जुदा करना आसान नहीं होता। ये अच्छा रन है जिस तरीके से
तेज से दौड़े। जी बिल्कुल, पॉजिटिव इंटेंट बहुत साफ नजर आ रही है और आपने बात सही की कि यहाँ पे रन्स रुक नहीं सकते। फिर अच्छी इस्तेमाल किया पेस का, दूसरा रन नहीं बन पाएगा। जब आप कैचर हटा लेते हैं इस पिच पर तो फिर बैट्समैन के आउट होने के इम्कान कम से कम हो जाते हैं। और अभी भी 5वें दिन की पिच के हिसाब से इतना ट्रू बाउंस है कि यहाँ पे 4 का रन रेट हासिल करना अगर बैट्समैन की इंटेंट हो तो कोई मुश्किल नहीं है। खासतौर पर अगर दूसरी टीम भी बिल्कुल दिफाई मोड पर उतर आए। लग रहा है कि सदर्न पंजाब थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। अभी बहुत रन है इनके पास, विकेटों के लिए जाना चाहिए। कैचिंग पोजीशंस में फील्डर रखने होंगे। साइम अयूब का ये बेहतरीन स्कोर है उनके फर्स्ट क्लास करियर का। इससे पहले 71 था जो उन्होंने यहीं पर बनाया था सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। अच्छा टैलेंट मिला है पाकिस्तान क्रिकेट को और ये आगे चलकर जो पाकिस्तान का ओपनिंग का शोबा है इसमें भी मुकाबला सख्त होने वाला है। जिस तरह के शॉट्स खेलते जा रहे हैं और जिस तरह हावी हो रहे हैं, आज के दिन का ये दूसरा छक्का लगाया साइम अयूब ने और ये बहुत बड़ा छक्का था। गेंद जो है वो स्टैंड्स के पास जाकर गिरी है और इनकी जो ऑफ स्पिन है ये तरने वाला साबित हो रही है। बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, अपनी रेंज भी बता रहे हैं स्लॉग स्वीप की। पिछला छक्का मिड विकेट की तरफ गया था और ये बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ गया। अच्छा बॉल देख रहे हैं, इससे यही लगता है क्योंकि अपने एरियाज पिक कर रहे हैं। इस तरह के बैट्समैन को रोकना मुश्किल होता है इस तरह के मूड में। 118 पर 1। और जब पहले बात कर रहे थे तारिक, आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर को मीडिया सेंटर एंड से बॉल करना चाहिए बाएं हाथ के बैटर्स के लिए। अब वो हिकमत अमली अपना ली है ATF सदर्न पंजाब ने और ये मुकाबले को एक नया रंग देगा। कॉट बिहाइंड की अपील करते रहे लेकिन नहीं टकराव हुआ था बल्ले का। सऊ शकील जो हैं अपने स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मोहतात रहना होगा। ये जो यहाँ पर इनके सामने रफ है, यहाँ गेंद मिस बिहेव कर सकती है। आज मुश्किल गेंद भी जो मुस्तनद विकेट कीपर हैं उनने हासिल कर ली। ले लो। ये बॉल उसी रफ के आसपास गिरी, पहली भी और दूसरी भी। एक नया चैलेंज होगा इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए। अली उस्मान पे काफ़ी दारोमदार होगा ATF सदर्न पंजाब का। जब आप स्पिनर के हैसियत से पिक होते हैं मैच की चौथी इनिंग्स में आपसे तवक्को होती है कि आप फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। ले लो। ये काफ़ी दलेर विकेट कीपर लग रहे हैं कि आज आखिरी दिन की पिच पे भी ये हेलमेट के बगैर जो हैं ये उठ रहे हैं बाउंस के साथ। लेकिन जो साइम अयूब हैं इन्होंने अपनी धाक बिठा दी है। फास्ट बॉलर के बाद स्पिनर पर भी बहुत बड़े बड़े छक्के इन्होंने लगाए। ये बहुत बार है, इसलिए अंपायर जो है बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। सऊद अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर उन्होंने स्वीप खेलनी है तो उन्हें अपना फ्रंट पैड ऑफ स्टंप से बाहर करना होगा ताकि LBW का खतरा जाता रहे और बिल्कुल ऐसा ही किया इस मौके पर भी उन्होंने। और रफ में गिरी और तमाम पैडिंग से होती हुई वहां पे जा लगी सऊद को जहां पे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। आप सोचते होंगे कि शायद स्पिनर थे तो बॉल इतनी ज्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होगी। यहाँ ये पैड करने के लिए गए थे लेकिन गेंद जो है उस रफ में गिरने के बाद थोड़ी ज़्यादा उछल गई और स्पिन भी हुई। तकलीफ दे
सूरत हाल है सिंध के कप्तान के लिए, लेकिन ये क्रिकेटर्स का ये चोटें हैं, ये जेवर कहलाती हैं। तो 120 पर एक खिलाड़ी आउट हैं। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में अब आवाज़ों की तब्दीली होगी। अली यूनुस आएंगे एजाज अहमद के हमरा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक सईद. So we'll have to reply. This is a weird match summary of ATF Southern Punjab 278. The first inning, 5 for 50 runs, Mohammad Ilyas. Then in reply, they would not been up to the mark at 181, Sindh. And then again, ATF proven best at 283. And it's still going on, 120 for 1. And let's see how much time they will take for 261 more required. Saud Shakil. Really love to see his batting here, though that he's been hit with a ball bit down. But it should be a positive intent there in the centre. So with this dot delivery over ball, 37 gone. Send 120 for 1. All eyes on Saim Ayub. He's played fantastically well for his 80 runs. And he holds the key. Perfect weather to do it. It's been lovely here in Islamabad from a couple of days. It's gone chillier. It's gone cold. We don't see you after the game in this weather. What are you up to these days, Ijaz? What should I say? Well, resting at night. Poor you, resting in such weather. Because we are witnessing a fantastic game in our hands. Sindh needing 261 runs to win. This partnership, 52 at the moment. Saim Ayub and young Saud Shakil. They're worried. This Southern Punjab camp. When you see these senior players come together, it means there's something bothering them. And it's this boy on your screen, Saim Ayub. Huge appeal by the wicketkeeper. He thinks he's got a nick. No, says umpire. Wish we had snakeometer, we could tell, but we didn't hear anything. That's what he's suggesting. He didn't hear anything. Did you? No, neither me. But that ball was trying to cut it. But look at the reaction of the wicketkeeper. He was just tipping down in front of him. Took it and straight away he was appealing there. You got to give it to the umpire. Definitely. Good decision. Without all these snakeometers and all those accessories, you can't really say, because nobody heard anything. Cuts handsomely well, but there is protection. Every time he hits the ball through covers, he looks so pleasing on eyes. Yes, exactly. No doubt. That's why he's there. 81 runs, 107, and that's the way. That's the real time. See, we can't hear anything. Only that man, the wicketkeeper, he heard something, and he was so sure that he did. And that is what he's suggesting, that at least appeal with some fire. He's a very good, very experienced umpire. Well, sometimes it happens. You need some luck. And the way Saim Ayub has played, he deserved some luck. You want to see him play all day long today. Because as long as he stays, it's entertaining, it's exciting. And Sindh will definitely be in chase. They will be hoping that if he stays, they will chase down those remaining 260 runs. Yes, sessions would be important, because here, almost half an hour, beg your pardon, to the lunch. And after that, they might be looking to
might be shifting some sort of gears. Don't need to, but might be somewhere. They will have to plan out the sessions. If they plan out this session at 150, if they close down there, then come back, they should play an hourly cricket. That at the end of this first hour after lunch, how much the score should be. Then by the end of the session, how much score should be, without losing many wickets. I think if they finish this session after just losing 1 wicket, they'll be a very happier side, Sindh. And with Saim Ayub on the crease, they'll definitely fancy chasing down this total. Paul Nixon, we all know that he's an aggressor. The way he has played cricket for England, he will definitely go after this target. I'm pretty sure about it. But for that to happen, Saim Ayub has to stay. And if he continues playing these shots outside the off stump, it will probably be difficult. Yeah, had to check the height. But I think so. These are the rare deliveries. They are keeping height. Look at that. It was above the blade when he was trying to cut it. But he's just giving some sort of hope to the fielders that might be, there would be an edge. A bit seam movement after pitching. We saw that from Imran Randhawa, but not much pace behind him. He's getting a little itchy. That's all right. You've got plenty of overs. You'll get all those bad deliveries. Stay there. 38 gone, 122 for 1. Sindh. Animated is always involved. That's the best thing about Paul Nixon. You've seen him in the last 3 days. Had a word with him also. Very animated, very progressive man he is. Ali Usman in search of a wicket. Saud Shakil is an ideal man to have alongside Saim Ayub at this time, because we know that he will always take singles. He will always rotate the strike. That's his quality. Lelo. And we've seen that from last 4 or 5 overs that they're getting a boundary each over alongside 3 singles. So they're getting 6, 7 last few overs. That's the right approach. Outside the off stump. The impact, definitely. Yes, exactly. Offside was the impact there. As Ali described you, he was just going forward. Yes, you're right. Without taking any more chances, any risk, if you're getting 5, 6 runs per over, a satisfactory go. Good cricket. This is what he's doing very good. Saud Shakil is covering that line because there's a rough patch right underneath his eyes. He has to cover it. You see, right under the eyes, where the front foot usually comes. Oh! Spun. Yes, you're right, exactly, because there are some rough patches. So the batter will have to be more careful playing against spin like this. But Ali's been pitching. Should only stick to 1. So yes, Sindh must believe there will be good times when the bowlers will be on top. You have to get over that time. You have to keep believing that few good overs won't harm much. You have to stay there. That's the most important part. Wickets in hand, last session, anything can happen. At the moment, spinners are bowling good. Ali Usman especially. It's 124 for 1. Is it that much cold? Tariq Saab is in jacket.
the buffer jacket. Always finds it very cold. And he's not that old yet. Not at all. He's very young. He's very young. He believes in wearing jackets. He likes it, actually. It looks him very smart in those jackets. Alongside Yasser Hamid there. He just moved away. So this is what Southern Punjab bowlers are doing. They're just bowling Saim Ayub outside the off stump. Earlier when Ahmed Bashir was bowling, they were targeting his stumps with that angle around the wickets. But now Imran Adawa is making him play outside the off stump. He's waiting for him to make a mistake outside the off stump, just a flashy drive maybe. But this is where the learning comes for Saim Ayub. He's got the start. He should value his wicket and stay there till the end. And if he stays till the end, it will be Sindh. Look at that. Gorgeous drive. Wonderful. Saim Ayub at its very best. Amazing shot through covers for 4. Yeah, beautiful. Treat to watch. Beautiful shift of balance. Excellent. Look at the beauty. You're just in front of him and have a picture of that pose. The margin of error outside this off stump is so minimum, so less. That anything pitched in that area, he will punish you all day long. He's that good in those areas. His balance, everything is good about him. Although no sides, but I would really want him to win the game for Sindh. It would be such a huge thing for Pakistan batting and the batters to come, that a young batter comes, scores run, win the game. Although long way to go. It's too early to predict. 253 runs. But that's a wish. Yes, exactly. From the hard times, if you're taking your ship to the destination. Classical. Although for 1 run, but it makes me excited every time he plays that shot on offside. So pleasing on eyes. Such a wonderful player he is. Something definitely special about him. And I'm pretty sure that if he plays this season, the complete 10 games, he'll be a different player altogether after this season. Because he's got a wonderful start into his 3rd game, already 200, almost nearing his first 100. That is superb. Yes, exactly. Along with the test cricketers and against the test cricketers, this is, you're right, will be a huge call for him this season. And every time he's hitting the shots right from the middle of the stick towards offside, onside, he has answered well in his 87 in 115 deliveries. Yeah, that's the point. Just 115 deliveries. That's the modern day approach we talk about. That's the intent we all been waiting to see from young batters of Pakistan. And he's that ray of hope. This one kept low. 40 gone, 130 for 1, Sindh. Shahid Anwar. Will he be worried? Or he'll be relaxed at the moment, looking at the score and the way Saim Ayub is playing? Well, to me, looking since last 3 days, he is with a similar face. Well, this is patrolling here in the ears of Rawalpindi. And always giving lots of trainings to the new pilots. You ever sat on it? Had a ride ever on this plane? Very bumpy. Lelo! Where did you go? Well done, coach. Yes, exactly. To the Waziristan agency. Couple of times. Had a chance to sit. What was that? This is what Saud Shakili is doing. He's covering that line with his body.
Not going to get Bowling. extravagant spin, but the ball might keep low. That's the concern that he's covering. Yep. This is, he'll keep on doing this outside the off stump because he's not going to get LBW from that angle. I think there is some sort of doubts in his mind when the ball is pitching in those rough areas. He's just judging there. But it's quite dangerous to judge like this. Ali's a finger spinner, doesn't get much spin. Had he been leg spinner, then there would have been different story altogether. But since Ali is not a big spinner of the ball, one might think this is a good ploy outside the off stump. He's covering that rough area. Yourself. This is better, this is easier. When the ball is bowled within the stumps, it's easier. That's the rough we talk about, right in front of the eyes. And that is what he's covering outside the off stump, beyond the off stump also. And it's a maiden. From Ali Usman, it's 130 for 1. Almost 11 minutes to go for lunch, and Sindh would want to go to lunch at just 1 wicket down. That will definitely boost their confidence, and then they can plan for the remaining 2 sessions. There's no panic at the moment in both camps. They're playing normal regular cricket. As long as this boy stays in, I think there will be jitters, there will be problems for Southern Punjab alongside South Shakil. There's plenty of batters still to come. Very talented side this side. Salman Ali Agha, we all thought that he might be handy against the left-handers, but he's just not involved enough. It's just a feeling. He's not into that bowling zone. Bowled a very average over. A lot better was expected of him, being the international cricketer. Handsomely driven, but straight to the man. This is what they've done now. They've just packed this offside field for against Sam Ayub. They've got a fielder at extra cover, point, gully. So everything they're gonna bowl at this zone, these areas. But we know that what he's capable of. He's just waiting for this session to get over, and then when he comes back after lunch, he'll be a changed man. You'll see. That's it. They've got that deep point in place. Point, cover, extra cover. They're bowling at 1 areas. That's the plan. But at the moment they're fine. They're happy because they're playing for lunch also. Yes, you're right. Almost since last 10 to 15 minutes, they are not taking any chances here, even though they've been having some maiden overs, dot deliveries, just to keep themselves around here, keeping their heads cool and calm, trying to make a partnership. A bit more clouds coming on. But I think I will again be resting tonight. Won't go with you? You're so boring. You're gonna rest. Who rests in such weather? Look at, you should go to Lahore. There was rain yesterday. Everyone is out on streets, on the roads. There's traffic everywhere. Yeah, yesterday we went out in Islamabad. I hardly saw anyone there. It was so lonely there. It was raining. It was just lovely. Islamabad is on another level when it's rained. And we probably 3 of us, me, Shah Faisal and Adnan, by the director, we went there for ice cream. Edged and taken. Yes, the wicket they've been searching for. South Shakil poking it outside the off stump, edging one to the wicketkeeper. A much needed wicket at the right time for Southern Punjab. Well, crucial times. Couldn't survive here. Faces are telling you the story. That was not a good shot. You were just chasing that,
making it go into the hands. Have a look. What have you done here? Into the wicketkeeper's hands. Soft. Yeah, the plan was set, bowling outside the off stump. Saud Shakil will be very disappointed. Yes, sir. The expression says it all. 24 he scored. Caught by Maqbool, the substitute wicketkeeper of Randhawa. It's 131 for 2 Sindh. पिछले 2-3 ओवर से ना रन नहीं हुए थे मेरे ख्याल में वो भी प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था Another very talented batter, Umair bin Yusuf. He's got a job to do. The first one will be just play out the remaining maybe 2 overs to go to lunch. There's a huge wicket in the context of the game. Saud Shakil just poking it outside the off stump, losing his wicket. In search of some runs maybe, he wanted to guide it towards third area. All those things playing on his mind. There were a couple of good overs before that. Runs were not coming. 1,789 runs, 550s, 500s, good conversion rate also. 174 his best. Well, a big task in front of him. There is a slip and a gully. So there is some sort of energy we may see in the fielding department after taking that big prize wicket before lunch. It's still 250 required. In swinger, first up, high. Going down also, maybe. No, says umpire, good decision. I'll have to have a look at it again. Digital line. Yeah, that's what I thought it is, high and going down a touch maybe. Or maybe touching the leg stump, but high. Height was the issue. Good decision by the umpire. It's 131 for 2. One more wicket, boys. Come on, Shabash. There's a different energy in the team now, in the fielding team, I tell you. You can hear some voices. They're all over the Saim Ayub. This is going to be a test for Saim Ayub. Losing wickets, on the other hand, how he applies himself. There you go. Big prize wicket at a big time. Big time, big wicket. And look at the celebration. He knew that. One. He knew the value of the wicket and the time that has come at. Yeah, Simran bowled a beautiful over. He was just keeping on a testing line. Was rewarded against his all effort. What he has done there. Crucial time, crucial wicket. Well done. He has made his captain proud at this stage. But after this, after lunch, a lot more job to do. And also what this wicket has done is it brought Umair bin Yusuf, the right-hander, on crease, and now Ali Usman will come into play. Lelo. There are rough patches all over the pitch. He will definitely be using those. It's not going to be an easy task to survive even. So what do you think? For how many wickets will Sindh take chance of going after the target rather than going for a draw? That's the question now. Well, to me, still, they can chase it because they should be making an effort. Because it's a media era and everyone is watching you. The efforts
everyone will know that you are putting some efforts there. Oh, Chasing my it, just God. defending it, because lots of dot deliveries will surely give you a picture and impact that you're on to the back foot, you're trying to save this inning, save this match. But if there is some sort of pressure and just making it, lots of things to happen. Oh! Clapping कर दो पिक्चर के लिए। It's 132 for 2. Get the benefit of having a proper wicketkeeper. A, he'll be good behind the stumps. B, he'll keep on chirping. He'll keep on talking. Because that's the only job he has. He doesn't have any other thing on his mind, his batting or his fitness issues. That's not there. So he'll be fully concentrated on his own job. That is one job, wicket keeping. That's it. He's been very consistent outside the off stump. Imran Randhawa has already got the wicket of South Shakil at the same line and length. Yes, exactly. He was nowhere near to leave, to play. That's why he just did that. Made it. And he was thinking, what I have done here. He could have easily let it go to the wicketkeeper. It was wide enough. Why did he have to poke at it? The pressure of the scoreboard, maybe. Once the player have played too much white ball cricket, it just becomes their habit just to poke at anything outside the off stump, guide it towards that third area for one. That probably might be the thing in his mind. Couple of good overs from spinners, and Imran Randhawa put the pressure on them. Boundaries were not coming, so he wanted to rotate the strike. Maybe all those things led to the wicket of South Shakil. But still, I believe as long as this boy is there, there is hope for Sindh. Kept low. The bounce. It's so important. Two things are very difficult for batters. A, it's a seam movement. B, when the ball starts keeping low. You can negotiate with the swing, with bounce also. But if the ball starts seaming and it starts keeping low, that uneven bounce, it's definitely very difficult for batters to negotiate. Lots of chats. Advice is good for the players again. Close call. Again, they are chasing it. And he's keeping that good line, Randhawa. Same sort of delivery. Wanted to go hard at it. Look at that line. Look at that, the length. Seemed a little bit. That is why I say this Southern Punjab bowling side is such an ideal bowling side for this sort of pitches. They got their natural length just bowling up to the batters. They will be hoping to put extra effort on the very last day. That's the job. Not there. That is beautifully timed. Through that mid-wicket region. Abbas has got work to do. They'll stay with 2. Yeah, good shot that was all along the carpet. That what we've been witnessing here after that offside delivery, chasing that down. But this time he is going behind the ball, getting runs, and Abbas, he had a good chase. And had a company of his teammate, passed the ball to him. Have a look. Beauty. Going all along the way. End of the over. We'll have to keep an eye on umpires. Is it lunchtime? Time for lunch. Yes, it is. 12 o'clock. Saim Ayub has played well for his 91 runs. But I would still say that this session will be shared because Southern Punjab have taken 2 very important wickets. But still to get the wicket of Saim Ayub, though, that is why Sindh will be hoping that they will chase down this score. 77 runs coming at a good rate. 2.85 is the run rate. Southern Punjab on the other side will also be happier side.
especially after the wicket of Saud Shakil, right at the brink of the lunch break. They've got that big wicket. We've got a very interesting 2 sessions coming up. Yes, exactly. That wicket column, 2 wickets, really important call here. That will be the key factor because run 77 and these 2, you can check the gate, how they've been going back. Been welcomed, but you're right, that wicket just made bit of the things alive here. What are you doing with Saim Ayub has been magnificent. Look at that. One man stands out. That is Saim Ayub, not out on 91, where others have struggled. Khurram Manzoor was the first one to go this morning, 19 runs, and Saud Shakil just at the time of lunch lost his wicket to Imran Randhawa on 24. Umar bin Yusuf has now joined Saim Ayub. It's 134 for 2. Bowlers, 2 wickets only yet. That is Mohammad Abbas and Imran Randhawa sharing it here, but he will have a big job to do after lunch. The session will be shared by both sides. Saim Ayub is magnificent. This was the first wicket to go. Khurram Manzoor was undone by some good planning by Mohammad Abbas. Saud Shakil joined him, but nothing has stopped this youngster, the young dynamite from Sindh, Saim Ayub. He's played spinners equally well, a very brave inning. Every time the ball is pitched up to him, he's punished it. And Ilyas, even the best bowler of Southern Punjab, was punished. Salman Ali Agha had an average over. He was dealt with some force by Saim Ayub. Every time he plays that extra cover shot, he looks like a world class. And this was the biggest wicket. Saud Shakil, right at lunch, lost his wicket to Imran Randhawa. Very good catch by the substitute wicketkeeper Maqbool. Southern Punjab, they'll have work to do for the last 2 sessions. And that's how the match stands at the moment. So the ATF Southern Punjab in their first inning, 278. Ilyas getting 5. Sindh in first inning, 181. Ebrar getting 5. And ATF Southern Punjab in their second inning, 283. Ebrar again getting 6 wicket, 10 for in the game. 134 is now. And Sindh needing 247 runs to win in their 2 sessions. We're going to take a break. We'll see you on the other side.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज आखिरी कहकहा कौन लगाएगा, इस सब का फैसला होना है अगले 2 सेशंस में। एटीएफ सदर्न पंजाब और सिंध मध्य मुकाबिल हैं इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मुकाबले में, जहां सिंध ने 134 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी मजीद उसे 247 रन बनाना है और बहुत ही एक लंबी मिसाफत उनको तय करना है। आज पहले सेशन में साइम अयूब ने बड़ी खूबसूरत बैटिंग की, सिर्फ 9 रन के फासले पर हैं वो अपनी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी से। उनके ड्राइव्स जो हैं वो बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करते रहे। ख़राब बॉलिंग उनके लिए फ़ायदेमंद रही और कोई मौका रन बनाने को उन्होंने जाने नहीं दिया। स्पिनर को तो ख़ास तौर पर उन्होंने आड़े हाथों लिया, ख़ास तौर पर ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा को 2 छक्के लगाए। मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। उन्होंने कल और आज 2 स्पेल किए और इमरान रंधावा को आज बॉलिंग करने के लिए लाया गया पवेलियन एंड से और ऑफ स्टंप के बाहर बार वो गेंद गिराते रहे और उसी में उनको विकेट मिल गई। ये खुर्रम मंजूर सबसे पहले गए, 19 रन बना सके, अच्छा कैच लिया जैन अब्बास ने और उसके बाद विकेट कीपर मकबूल ने ये बड़ा उम्दा कैच लिया, मुतबादिल विकेट कीपर ने, स्पेशलिस्ट हैं। और इमरान रंधावा ने इस मैच में अपनी पहली कामयाबी मुमकिन बनाई। 278 रन पहली इनिंग्स में बनाए। एटीएफ सदर्न पंजाब ने दूसरी इनिंग्स में उनने कल 283 रन बनाए और सिंध जिसने 181 रन पहली इनिंग्स में बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, इजाला किया है अपनी इब्तदाई नाकामी का। उमर यूसुफ और साइम 2 नौजवान बैट्समैन जो हैं खाने के वक्त के बाद खेल शुरू करेंगे और मेरे साथ कमेंट्री यासिर हमीद। शुक्रिया तारिक भाई। अली उस्मान अपनी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। साइम अयूब है, उमर बिन यूसुफ है उनके सामने बैट्समैन। जी आसान नहीं होगा, एक लंबा टारगेट है जिसे चेज करना है। 381 रन करने हैं मैच जीतने के लिए, 247 रन चाहिए। और अली उस्मान से बॉलिंग का आगाज़ करवाया है साउदर्न पंजाब ने। 63 ओवर्स का खेल बाकी है आज के दिन में और 247 रन। अगर देखा जाए तो अगर खेल गए ये लोग 63 ओवर्स तो फिर तो मैच सिंध के हाथ में। लेकिन 4 डे क्रिकेट है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव अभी आना बाकी है, प्रेशर गेम है। यहाँ 63 ओवर्स में ये जो दरकार औसत है 4 से कम है और ये अच्छी फील्डिंग थी सलमान अली आगा की। गिरे ज़रूर लेकिन उनने ये बाउंड्री बचाई और इसके लिए ज़रूरी है, शर्त ये है कि ये बैट्समैन खेलते रहें। अगर ये बैट्समैन 63 ओवर्स खेल जाते हैं तो फिर सिंध की टीम के लिए मुमकिन होगा। और साइम से तवक्को की जा रही है कि वो बड़ी इनिंग्स यहाँ पर खेलेंगे, डैडी 100 वो स्कोर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अगले 9 रन हैं इनकी बड़ी अहमियत है इस सीज़न में भी, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पंजाब के खिलाफ आए थे तो सेंचुरी का मौका इन्होंने ज़ाया कर दिया था बहुत करीब आकर। मेडन ओवर रहा अली उस्मान का, अच्छी इब्तिदा की उन्होंने वक्फे के बाद 134 पर 2। यह पॉल निक्सन प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बिजी कोच हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं प्लेयर्स के साथ। और अभी मेरी बात भी हो रही थी जाहिद से, तो ये कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करते हैं ये अपने काम में, बड़े सिंसियर हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें। ये ख़ास तौर पर वो खिलाड़ी जो नहीं खेल रहे होते
कई बार जो कोचेज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी तवज्जो जो है प्लेइंग 11 पर रहती है। और ये फराज अली के साथ काम इस वक्त कर रहे हैं, उन्हें बैटिंग के गुर बता रहे हैं। जिस वक्त खाने का वक्फा था, मोहम्मद जो आसिफ महमूद हैं, ये उनके बॉलिंग एक्शन पर, रनअप पर ये वर्किंग कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे आसार हैं। एक प्रोफेशनल कोच की ये निशानी है कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी उतनी अहमियत देता है जितनी कि अपनी प्लेइंग 11 को या जो मुस्तकिल खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उन पर नज़र रखता है। उनके बैलेंस पे काम कर रहे हैं। देखिए उनकी हेड पोजीशन और ये उनका वेट जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो शॉट पे, ये बता रहे हैं उन्हें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब आप, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की विकेट्स हैं इसमें ज़्यादातर ये फ्रंट फुट की विकेट्स होती हैं, तो इस पर आपका वेट जो है वो आगे की तरफ होना चाहिए। और ये शानदार शॉट, और ये नो लुक शॉट था, बिल्कुल नहीं देखा उस जानिब जहां गेंद जा रही थी उड़ती हुई। और ये नर्वस 90s का बिल्कुल एहसास नहीं कर रहे साइम अयूब। जी हाँ, ये इनका शॉट है, नो लुक शॉट, जो इनका ट्रेडमार्क शॉट है, सिग्नेचर शॉट जिसे कह सकते हैं। हमने T20 में भी देखा इनको इस शॉट्स के साथ, और ये अच्छी बात ये है कि बहुत कम खेलते हैं शॉट, लेकिन जब खेलते हैं तो पूरी तरह एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत अच्छा शॉट, 4 रन्स। सिग्नेचर स्टाइल है ये साइम अयूब का। और हवा में और गिरा दिए गए, ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। वहां पर शारून थे फील्डर। हाँ, ये इसी मकसद के लिए इनको खड़ा किया गया था। ये अच्छे फील्डर हैं शारून, लेकिन ये संगीन गलती की, गेंद सीधी आई हाथों में और सीधी निकल गई। क्या ये मैच गिरा दिया इन्होंने? ये एक सवाल है, बहुत दूर है मैच, लेकिन साइम अयूब जैसे प्लेयर को 95 पे चांस मिला है। मैं समझता हूँ कि लकी होंगे ये, और अनलकी होंगे अगर यहाँ से 100 नहीं करते। इतना इजी चांस, अगर हम फिर देखें तो जो जंप की टाइमिंग थी वो ठीक नहीं थी इस कैच में, बहुत इजी कैच था। रंधावा जो है दानिस्ता तौर पर ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंदें फीड कर रहे हैं, और ये यहीं से गलती इन्होंने इससे पहले कराई कप्तान सऊद शकील से, जो कॉट बिहाइंड हुए, और ये भी तकरीबन उसी अंदाज में ये कैच दे बैठे थे दूर से खेलते हुए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ही ऊपर था, और ये तो कैचेबल हाइट थी, इसमें इन्होंने जंप भी नहीं किया, सिर्फ आर्म्स की एक्सटेंशन थी। बहुत लकी रहे साइम अयूब, 95 रन पे का कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वी होप कि यहाँ से वो 100 करें, और जो गलती अभी की है इससे गुरेज करना चाहिए इन्हें। स्लो बॉल था, हैंग हो गए थे इस डिलीवरी पे। ये दोनों ही बड़े अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, स्ट्राइक को रोटेट भी करते हैं। उमैर बिन यूसुफ इन दिनों मिडिल ऑर्डर में ये अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। ये पहले ओपनिंग किया करते थे, पूरा मंजूर की ओपनिंग पार्टनर रहे। साइम अयूब क्या ये छक्का लगाकर संग मील उबूर करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ छक्का लगाकर सेंचुरी करते हुए तैयब ताहिर को देखा था, यासिर शाह को सामने उनने छक्का लगा दिया था इसी एंड पर जहाँ हमारा कमेंट्री बॉक्स है।
इसी तरफ से यासिर शाह बॉलिंग कर रहे थे उस रोज। ले लो। और अभी जो वकार अहमद ने सेंचुरी की थी एबटाबाद में, उन्होंने चौका लगा दिया था। वकार अहमद सीनियर जो केपी के खिलाड़ी हैं, और रैंप शॉट खेलकर उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। ये भी खासा निराला अंदाज था। ये काफ़ी अच्छी बारी की अभी तक साइम ने। 134 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 8 से 10 बॉल्स और खेलें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी सेंचुरी करें। आइए मोहतात रहें। ये अली उस्मान वाहिद बॉलर हैं जिनको पूरी रिस्पेक्ट पे की है साइम अयूब ने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो उनके सामने नज़रों के लाइन के बाहर रफ बनी हुई है, मिसबिहेव कर सकती है, और वही हुआ है। गेंद टर्न हुई, पैच में गिरी, और ये ख़राब शॉट खेलने के लिए गए अगेंस्ट द स्पिन, अगेंस्ट द लाइन, और अपनी स्टंप से हाथ धो बैठे। और ये वो लम्हा हो सकता है, ये उन्हीं लम्हात में से एक है जहां हार जीत के फैसले होते हैं मैचेस में। जी हाँ, बड़ा क्रूशियल मोमेंट है ये इस मैच का। की विकेट हासिल कर ली है अली उस्मान ने। आगे का बॉल था, पीछे कट करने गए थे। ये वही पैच है जहां से बॉल स्पिन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। 95 रन्स किए, आला 95 रन्स किए साइम अयूब ने, सिर्फ 5 रन्स की दूरी से अपनी पहली सेंचुरी से 193 पे 3। यहाँ ये बोझल कदमों के साथ वापस जाना पड़ा, और दूसरी बार हुआ है ये पिछले 2.5 हफ्तों में जब इन्होंने सेंचुरी का मौका ज़ाया कर दिया। बाएं हाथ खेलने वाले ही खिलाड़ी मैदान में उतरे। बहुतात है लेफ्ट हैंडर्स की सिंध की इस लाइनअप में। फवाद आलम इस टीम के सबसे माने हुए और सबसे देरीना बैट्समैन। जी हाँ, फवाद आलम आए हैं। 194 मैचेस में 14,064 रन किए हैं, 42 हंड्रेड्स और 66 50 296 बेस्ट, 55 की एवरेज। सारा दारोमदार इन पे है। ये लेग साइड में खेलकर ये दूसरा रन भी हासिल कर पाएंगे उमर बिन यूसुफ। तो फवाद आलम की जो बैटिंग औसत है ये कम हुई है इस साल, ये तकरीबन 57 के आसपास ही, और अब ये 56 से भी कम हो गई है, क्योंकि पहले टेस्ट मैचेस में रन नहीं बने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होम सीरीज थी। और क्योंकि अगर आपने अपने लिए इतना बड़ा म्यार कायम किया हुआ है तो फिर उसको बरकरार रखना पड़ता है, अगर क्योंकि ये औसतों को बाहर रखना इतना आसान नहीं होता बैट्समैनों के लिए, बड़ी औसत को। और ये दिलकश ऑफ द बैक फुट खेला, 4 रन्स। ये वो उमर बिन यूसुफ हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये अच्छा शॉट, वेट ट्रांसफर किया बैक फुट पे और पंच किया इसे पॉइंट और कवर के बीच में से। 4 रन हासिल किए उमर बिन यूसुफ ने। यकीनन कॉन्फिडेंस मिलेगा इस शॉट से उमर को। इस ओवर की पहली गेंद 2 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं। ये रन देने पर जो रंधावा हैं ये आमादा हैं, अभी तक तकरीबन 4 के औसत से रन दे रहे हैं, लेकिन ये विकेटें जो हैं ये कोई ख़रीदना चाहते हैं। साइम अयूब का पिछले ओवर में गिरा था और
गेंद रफ में गिरी और वहीं से ये कट करने चले गए। इन्होंने बिल्कुल वही किया जो कि अली उस्मान चाहते थे, बॉलर के हाथों में खेल गए। जी बिल्कुल ट्रैप में आए। एक और शानदार शॉट, एक और चौका, सिर्फ बल्ला गेंद तक लेकर गए उमर बिन यूसुफ और इनकी टाइमिंग निराली है। ऑफ साइड में अपने ये ज्यादातर रन्स हासिल करते हैं। यह दो इंतहाई दिलकश स्ट्रोक हमने देखे इस ओवर में, एक बैक फुट पे और एक फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव। दो फील्डरों के बीच में से ये गैप हासिल किया उमर बिन यूसुफ ने, 4 रन्स। विकेट गिरने के बाद जो एक बैटिंग टीम की एनर्जी होती है वो गिर जाती है। ये अली उस्मान को आज पहले गलती की गई थी पवेलियन एंड से बॉलिंग कराने की, क्योंकि सुबह से ही यही एक ख्याल था कि इनको फार एंड से बॉलिंग करानी चाहिए, मीडिया सेंटर एंड से। वहीं से वो फाल साबित हुए और आखिरी कहका जो है ये साइम अयूब के खिलाफ इनको लगाने का मौका मिला 149 पर 3। ठीक है। जिस रफ की बात की आपने तारिक भाई, कल से हम इसकी बात कर रहे हैं, कल सुबह से। और इब्रार अगर इधर बॉल करते तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते क्योंकि वो भी तेज़ करते हैं, लेकिन ये ट्रिक मिस की सऊद शकील ने। एक बहुत बड़ा ट्रैप है। यहाँ उस वक्त जो बॉलर का ख्याल था, एक तो पहली इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी पवेलियन एंड से, और दूसरा यहाँ रावलपिंडी में ज़्यादातर हवा चलती है तो उनको क्योंकि ड्रिफ्ट मिल रही थी उस एंड से, उसी वजह से वो छोड़ा नहीं उन्होंने छोड़। और एक और अच्छी गेंद। ये जो डीप पॉइंट का फील्डर है ये किसी हद तक नाकाबिले फ़हम है, नए बैट्समैन आए हैं और आसानी के साथ उनको रन दे दिया गया। देखिए प्लान बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये इनको बैक फुट पे लेके जाएंगे, इसी जो ये जो स्पॉट है या बहुत आला और रन्सों को भी ऑब्वियसली उनके कप्तान के माइंड में होगा कि हमने रन्स को भी सेव करना है। 4 की जगह अगर 1 हो तो नॉट अ बैड थिंग। और दूसरी बात ये कि जो अभी हमने देखा साइम बैक फुट पे खेलें तो उनके बैट्समैनों को इज्तिनाब करना पड़ेगा। अली उस्मान को बैक फुट पे खेलने से तेज़ी से 1 रन लिया उमर बिन यूसुफ ने। अली उस्मान जो हैं ये इनके खिलाफ बैकफुट पर बैटिंग इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है कि ये गेंद को बहुत ज़्यादा फ्लाइट नहीं देते, ये तेज़ करते हैं, हवा में ये तेज़ हैं, इतना मौका नहीं देते आपको संभलने का बैटिंग पिच पे। इसलिए जो फिंगर स्पिनर है जिस वक्त विकेट से मदद मिलना शुरू होती है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बहुत अच्छा बॉल, एक बार फिर अच्छा खेले फवाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फिंगर स्पिनर हैं और ये वाकई जब पिच से उनको हेल्प मिलती है तो इट कुड बी वेरी डेंजरस। इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे अगर फवाद उनको ड्राइव खेलें, कट खेलें
और इख्तिताम पजीर एक्सेस 51 पे 3। अभी साद खान और सरफराज अहमद बाकी हैं और फिर 4 बॉलर्स को खेलने के लिए आना है। लंबी टेल है सिंध की, इसलिए दिलचस्पी रहेगी सदर्न पंजाब की। और अभी तक मोहम्मद इमरान रंधावा जो हैं, ये बेहतर होगा कि अपने जो इनके सरकर्दा 3 बॉलर्स हैं उनमें से किसी को आजमाया जाए। अहमद बशीर या मोहम्मद अब्बास में से किसी को स्पेल कराया जा सकता है इसी एंड से। देखिए इमरान रंधावा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और ये इनकी जो पेस है वो बड़ी ट्रिकी है। बैट्समैन को ये लगता है कि यार ये स्लो हैं, और जिस तरह सऊद बिन शकील ट्रैप हुए, मेरे ख्याल से ये इस वक्त जो है अपने कप्तान की लाइकिंग में है। इस सिचुएशन में बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन होती है, जब ऐसा बॉलर लगा हो तो बैट्समैन का दिल करता है शॉट्स मारूं, जिस तरह हमने आखिरी ओवर में भी 2 चौके देखे। अब ये वो बॉल था जिस पे वो अटेम्प्ट हो गए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने फैसला किया ना खेलने का। लेकिन आपकी बात सही है, इधर अब्बास बहुत ही अच्छी ऑप्शन होंगे। एक एंड से तो स्पिनर कर रहे हैं बहुत अच्छा बॉल, दूसरे एंड से देखते हैं इमरान रंधावा कितनी बॉलिंग करते हैं। क्योंकि जो इमरान रंधावा हैं ये इस तरह के बॉलर हैं जो बैट्समैन को मजबूर करके आउट नहीं कर सकते, कि बैट्समैन जो है वो दिफा करते हुए अपनी विकेट गंवा बैठे। शॉट खेलते हुए ज़रूर बैट्समैन विकेट गंवा सकता है इनकी बॉलिंग पर। लेकिन यहाँ ये वो वक्त आ गया है, ये 50 ओवर गेंद पुरानी हो चुकी है, जहाँ आपने जो है आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो कि यहाँ इन्फोर्सर का किरदार अदा करे। ये देखिए सऊद शकील ने आज इतना अच्छा शॉट खेला नहीं, रन्स वो तेज़ से बनाना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा लूज नज़र आए। लेकिन ये अच्छा शॉट है, ये जोरावर बैट्समैन का शॉट है। उमर बिन यूसुफ को जो ही विड्थ मिली उनकी आंखें चमक उठी और बड़ा उम्दा कट शॉट खेला उन्होंने। जी अच्छा शॉट, अंदर की तरफ खेले क्योंकि थर्डमैन का फील्डर थोड़ा सा वाइड है। डीप बैक फुट पॉइंट पे 4 रन हासिल किए। सिंध की टीम में जो ये नई पीढ़ी आई है इनकी बैटिंग की, जिसमें साइम अयूब या सऊद शकील और ये उमर बिन यूसुफ हैं, ये बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश हैं। ख़ास बात ये है कि उमर बिन यूसुफ जो हैं आजकल के बैट्समैनों के बरक्स ऑफ साइड में अपने रन्स बनाते हैं। इससे इनके टैलेंट का पता चलता है। ये साइड ऑन होकर खेलते हैं तो आसान हो जाता है ऑफ साइड में शॉट खेलना। जी हाँ, ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 155 पे 3। याद है मुझे, भूला तो नहीं, सीने दा जुल्म हर याद मैं क्या लाता हूं। जबा गुजरी बच्चे भाई मोह है नंबर 4 है। लुकिंग गुड बॉय, शाबाश।
एक बार फिर पॉइंट पे आराम से रख के सिंगल लिया फवाद ने। समझ नहीं आ रही इन्होंने डीप पॉइंट क्यों लिया हुआ है फवाद पे। शायद वो अपनी बाउंड्री को सेव कर रहे हैं। यहाँ भी 225 रन सिंध को बनाना है। तो नए बैट्समैन से आपको बाउंड्री का खतरा होना नहीं चाहिए। और अगर फील्डर जो है ये ज़्यादा करीब होगा तो वहाँ से इंटाइस होंगे फवाद आलम, और वहाँ से वो ज़्यादा ज़ोर से खेलने के लिए जाएंगे जिस तरह साइम अयूब गए थे। क्योंकि अभी भी बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच है और यहाँ पर आपको गलतियाँ करने पर मजबूर करना है बैट्समैन को। जी बिल्कुल। ये अच्छा बॉल था, टांग से किया। यहाँ से ये बैट्समैन के माइंड में डाउट क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद हैं और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर भी हैं। आज स्वीप शॉट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया सिंध ने। साइम अयूब ने 2 स्लॉग स्वीप शुरू में किए थे, उसके बाद से जो रिवायती एक स्वीप शॉट होता है या हार्ड स्वीप पैडल वो देखने को नहीं मिला। सिंध के खिलाड़ियों को आदत है उस पर बड़े रन्स बनाने की। हाँ, क्योंकि लाइन जो थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी थ्रू आउट स्पिनर्स की, और इख्तिताम पजीर हुआ 157 पे 3। ना तजुर्बेकार कप्तान है ये सलमान अली आगा, क्योंकि हसन अली ज़ख्मी हो गए थे इसलिए इनको कप्तानी का मौका मिला। और लगता है ये कि ज़रूरत से ज़्यादा ये रंधावा से बॉलिंग करा रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के बॉलर्स को आप पार्टनरशिप तोड़ने के लिए लाते हैं, जो इन्होंने काम कर दिया था अपना जब सऊ शकील को इन नॉकआउट में हैंड कराया। और यहाँ अगर ये दोनों बैट्समैन जो हैं ये पूरी तरह सेट हो जाएंगे तो फिर जो हैं अगर आप अपने सरकर्दा बॉलर को भी लाएंगे तो फिर वो इतना फाल नहीं होगा जितना कि इस वक्त हो सकता है। यही समझने की ज़रूरत है आगा को। मोहम्मद अब्बास ने ये 2-3 बार उनको बावर कराने की कोशिश की है कसरतें करके कि वो बॉलिंग करना चाहते हैं, जो एक हिंट देते हैं आप अपने कप्तान को। उनको उनके इशारे की समझ नहीं आ रही। और वाकई बाज़ बातों की नहीं समझ आती, जिस तरह सेंट्रल पंजाब ने जो है अली शान से ओपनिंग करा दी है अब्दुल्ला शफीक की जगह पर फैसलाबाद में। अब्दुल्ला शफीक में भी वो इंजर हो या कुछ और प्रॉब्लम हो। वो वन डाउन आए बैटिंग करने के लिए, 60 रन बना गए। और अली शान ने या उनने ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन यहाँ विकेटें चाहिए और आपको मोहलत देना नहीं है मुखालिफ को। जी हाँ, टैक्टिकल साइड्स पे थोड़ी सी कमी नज़र आई। कप्तानी में अच्छा शॉट फवाद आलम का बैक फुट पे, बहुत जगह मिला, वही जगह मिली
वही बात, बैट बॉल थी और 4 रन हासिल किए फवाद ने। ये बाउंड्रीज जो हैं ये आसानी के साथ ये लीक करते जा रहे हैं रंधावा, क्योंकि इनकी कोशिश रही है कि बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर गलतियां करें, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लेंथ मिली, बहुत ज़्यादा जगह मिली, रफ्तार बिल्कुल नहीं थी। इतना टाइम मिला कि एक कट शॉट उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेला। पेस टैक्टिकल बात कर रहे थे हम, जिस तरह हम बात कर रहे थे, अगर सऊद शकील कल इब्रार को इस एंड से बॉल करवाते, इस रफ को यूज़ करवाते, तो शायद साउदर्न पंजाब इतना लंबा टारगेट भी ना दे सकता। बहुत अच्छी रनिंग फवाद की। इस मैच की जो चाबी है वो फवाद के हाथ में है। उमर बिन यूसुफ ने इसे इत्मीनान के साथ जाने दिया। रंधावा का ये 9वां ओवर मुकम्मल हुआ, जो एक बार फिर महंगा रहा, 163 पर 3। Matters, not the picture. Ali Usman got the all-important wicket of Saim Ayub in the first half an hour after lunch. For Quaid-e-Azam, got off to a good start, 7 of 11. The equation, 218 runs required for Sindh. Yeah, that rough was going to cause problems. That was quite evident when we first saw that pitch in the morning. But now they got the right bowler at the right end. There you go, outside the off stump of the left-hander. That's where Saim lost his wicket. Good afternoon, Ali Yunus. Good afternoon to you too, Shah Faisal. You've got to give the credit to Ali Usman also, who's used that rough very smartly. Got the wicket of Saim Ayub. I thought Saud Shakil was playing him nicely. He was covering the line very nicely, but after when he left, you know, it's trouble for these right-handers especially, and now it's up to Quaid-e-Azam. Credit to Ali Usman, he's right up there. Every ball may not misbehave, but you got to watch out for that, for the one that does as a batter. He's spinning the ball also. That's a good sign. But what do you make of this tactics? Having T-point in place, saving runs? I don't agree with it. It has to be a stroke against the spin, out of the rough maybe. You would want the batters to play that stroke. Show him that gap. Bring him in. Save that single. Keep the same batter on strike. Build a plan. Are they still on the back foot that this runs will be chased down? Are they thinking about that, Southern Punjab camp? 164 for 3. There's been a few tactics that made a lot of people to
raise their eyes because Salman Ali Agha really, after that brief attack from Simon Saud, he was looking at the defensive, and that is not on for a 4-day target. I mean, you've got still plenty of runs on the board. And if the batters were going for their strokes, you encourage them to do that because that's your best chance of getting wickets here. Those two are now gone. The game has a complete different equation to it now. And I think they've found the right combination for the right ends. Abbas from the pavilion end and spin of Ali Osman from the media center end. "30 runs in his 10 overs with a wicket." This is going to get very interesting. The battle between Fawad and Abbas, the two very experienced campaigners, have been into these situations so many times. One thing that Sindh has done good is that is just not blocking every delivery. Anything outside and any bad delivery, they're punishing it. They're still in the hunt. That is why the pressure is definitely a little pressure on Southern Punjab still. That way, what we were saying, that there is a T point in place, that is because they're not shying away from hitting runs, from hitting boundaries. 53 overs remaining after this over, so there's plenty of time. Run rate is just around that 4 per over at this stage. A good partnership can really get things close. Won't be easy against the guile of Abbas though. Yeah, like we were talking about the tactics of Salman Ali Agha. He seems that he's on the defensive. Let me tell you one thing, like I was saying, if a partnership builds here on this pitch, you cannot stop the flow of runs if the two batters are set and they have intent. Your best chance is to remove them as soon as they come. So many games within games, you could argue that when Randhawa got the breakthrough, should have brought your main bowlers in. Yeah, but Randhawa did a good job right before lunch. He was keeping it tight at 1 line and length. Got the wicket of Saud Shakil, courtesy to a very good delivery. So probably he was making the ball talk a little. The ball was doing a little bit. He maybe have thought that just carry on a couple of more overs, get a chance. Call is for 2, but just the 1. But it's good to see Fawad. He's looking busy here, like you just mentioned, Ali. They're not just block, block, block. You feel like they still have one eye on that target. 216 runs, and as you said, one good partnership of 100 here at a good time will definitely bring them back in the side. Having 100 runs or 120 even for the last session, they will fancy chasing it down. They've got that firepower in them, this Sindh side. Remember in National T20, every time Saud Shakil wins the toss, he would ball first. He likes chasing. That is why I still believe that one good partnership, as you said, will definitely make things interesting for the last session. I'm going to throw this very interesting question at you. Would you have sent Sarfaraz ahead of Fawad Alam? Glorious. This is Umar bin Yusuf. He just leant into it. The timing and placement was superb. Absolutely, just nailed it through that extra cover region. Beautiful head position, that elbow also coming right in place. Placement also. There are a couple of fielders ready for that, but he just placed it beautifully between those 3 fielders, I would say, not just 2. That is top-class batting by Umar bin Yusuf. Coming back to your point, since Umar bin Yusuf was there, who's naturally a stroke maker, I think you needed a sane head, somebody who can stay with him.
for long. Nothing taking away from abilities of Sarfraz, but we know what Quaid-e-Azam can do. He can hold on one end. He's got a good head on his shoulders, so probably that's the reason. If this partnership carries on, you might see Sarfraz and Saad Khan, both stroke makers, come and go for the runs. It's 169 for 3 at the moment. Yeah, the reason I was making this point is that at this stage, required run rate, if you look at it, is still hovering around that 4. Sarfraz is a busy cricketer. Can push the ball into the gaps, run hard, and show a little bit more intent than Fawad, because this is Fawad's natural style. You don't want him to change that, because he's important, just in case if Sindh wants to shut up shop. They want Fawad there because he's the best man for that job, even with the tail. But yep, you're right. For now, they think Umar bin Yusuf is there, so Fawad can just give him company. Also, having a left-hander is always useful against a left-arm spinner. Although it's not easy because there's a rough patched wide in front of him. Still having left-hander on crease, it's handy against left-arm spinner. He's never happy with the screen. Why? I don't think it's the side screen, it's the balcony in front of us. Yeah, he's so right on top of this, it's a side screen. Too close, but he managed very nicely. Yeah, that fielder is there. It's just a nothing fielder for me, really. Yeah, you got to be cutting down on these singles. You don't want to be giving them that opportunity to rotate the strike easily. Got to make the life tougher for these batters. But he won't mind it. Umar bin Yusuf against Ali Usman. It's going to be a good battle. There's a rough onto his leg side. There's a short leg in place. There's a slip in place. And Umar bin Yusuf likes driving. It's going to get interesting. Yeah, that fielder at 45 is quite important as well. If he decides to sweep out of the rough. But for now, just easy enough with the straight bat. Would you like that tactic, bowling into the rough outside the batter's leg stump at this stage? Well, occasionally, yes. Just keep the batter guessing. Just have it in mind that there is a patch. There's a deep square leg in place. There's a deep point. That's the delivery you're talking about, I guess. Yeah, that's more like it for the left-hander. Yeah, to the right-hander, bowling into the rough so early. For me, it seems like a bit defensive. It looks like Salman Ali Agha is just a little under pressure. His captaincy skills will be tested. Because this game is far from over. Talking about his captaincy skills being tested, I would really want to see the approach that Sindh side have. Having those foreign coaches, what difference do they create in their approach, in their intent? Still not happy. I think there's a guy eating food. That's Yasir Hamid right on the balcony. On the right, there's somebody sitting on the right. And having this stance, you need to have all these front screens clear, because Quaid-e-Azam stays way outside leg side. It's 171 for 3. You can see, enjoying his barbecue, loves it. Yeah, don't go by his physique. Bless his heart, he loves his food. I'm not the only one. Please don't make this mistake. Everybody here loves their food. Poor chicken.
Umar bin Yusuf still going hard at it, finding the middle of the bat. One would think he's underperformed in this season, Umar bin Yusuf. A lot is expected of him. He had a very good National T20 Cup, which was a surprise because he'd made the transition from red ball to white ball cricket. But you would think this is his best format. And so far this season, he's performed below par. Still early days, enough time to prove his mettle for this man also. He's short of runs. Salman Ali Aga had a very average, below average I would say, National T20 Cup, and he's struggling here with the red ball also. Needs to step up. Because being the captain, you need to lead from the front, get runs at crucial times. Hasn't done yet. Because once you play for Pakistan side, you need to be different from these guys. You must stand out. Change in field, look at that slip gully, short cover catching. Fine leg is pretty wide. Full face of the bat, looking good. Such a huge opportunity for somebody like Umar bin Yusuf to make a mark. We all know that players who perform in these crunch moments, in crucial games, pressure situations, they're definitely more valued than the others. Here's an opportunity. Saim Ayub did his part, 95 of 137. Gave them the great start. He should have carried on though, in my liking. But still he played really well. Got that start. And now it's up to Umair and Saad Khan, the three youngsters in the side. If they three play around Sarfaraz and Fawad, it is possible that they might chase it down. He will have to play a big inning. 100 is needed from him if Sindh has to chase it down. Fourth inning runs are very, very valuable, and most of the times they're match-winning contributions or match-saving contributions. A lot at stake. Yeah, that is what I asked Zain Abbas in his interview in the morning. And he said fourth inning is always special. Because it's always handy for the team whenever you score runs in the second inning. And he rated this inning very high, right up there. He played beautifully. Right there in the background, Zain Abbas. Magnificent knock. Remember that time in National T20 when he was out, he was struggling to get runs and he was out of a no ball of Wahab Riaz. And that over here, same ground, Rawalpindi. And since then he hasn't seen back. He's scoring runs after that. He's piling runs. Yeah, he had a magnificent National T20 Cup. And right after that moment, you're absolutely right. There's little things in the life of a professional sportsman that can change things around for you. Funny. Very funny. 171 for 3. Northeasterly, you said? The breeze? Any changes today? Easterly, westerly, southerly? Today is westerly. Change in wind. And in speed as well. 278 plays, 181, 283, ATF Southern Punjab. Second time around gave target to Sindh to chase down 381. That single once again lets Fawad off the hook. Ali Usman would love to bowl to the left-hander from the rough. That's not happening because of that backward point fielder. Keep an eye on Salman Ali Aga, because earlier I noticed that Muhammad Abbas was calling most of the shots in terms of the plans for the fast bowlers. That fielder needs to come up for Fawad. Now this change of angle, I like that. Traditional bowling, left arm around the wicket, trying to bring the ball in and then turn it away from the right-hander.
There's very little turn off the straight on this pitch. Soft hands, good run. His cover fielder is deep and Salman was wide. It's good cricket. Now this is what these two have done really nice. Keep on rotating the strike. That's what they've done. Look at that placement right between those two fielders, and a good call by Quaid-e-Azam. That is experience for you. The point fielder remains on the boundary line. Is he inviting him to play there? Just take that risk for one run. Play it outside the off stump. Fawad is too intelligent to do that. He will only do it if he can really get to the pitch of the ball, and then he only needs to put bat to ball to get that run. Someone like Saim Ayub, who is not that experienced, he might fall for that trap. And he did, because he went for that hard cut shot out of the rough and lost his wicket. Fawad is too canny. Yeah, the pressure of situation getting to Saim Ayub. Just before lunch, a couple of overs, he was getting itchy, flashing outside the off stump. And you could tell that there is something wrong. And it was. He missed out on 100 in his nervous 90s. It's 173 for 3, Sindh. Yes, हो गया? Good. ये वायरल करो, मेरी तस्वीरें भेज देते हो हमसे खाना खाते हुए करना कढ़ाई का इंग्लैंड से फोन है आज. How was your lunch, sir? Paul Nixon very animated, very active. But one thing, yes, all eyes on his strategy here. What is his plan gonna be? So far, so good. That is what we have seen. The intent has been positive. They're at least looking to rotate the strike. They're just not completely blocking the deliveries. So one thing is a tick for Paul Nixon. And remember, 381 in fourth innings, not an easy task at all. But they're giving it a go. They're not going reckless, but they're trying to take the game deep and see if they have wickets in hand in the last session. Poor chicken is into his hands. अच्छा लग रहा था. It's died down. A slower one attempted by Abbas. Just rolled his fingers over it. He just making the batter keep guessing. Abbas will bowl there all day. That's the strength of the man. He's got great fitness. He's got patience of a saint. He would wait for you to make a mistake. If there's nothing happening from the pitch, you just prey on your patience. Very, very skillful. Nicely played. The sweeper will come around, looking for 2 on the arm. Easily done. Yeah, placed it wide of that fielder. Always on the count, these 2 runs. Umar bin Yusuf is looking good for his 24 runs. He holds the key. Look at that, good running. He knew it that there is 2 available the moment he hit it, the moment he placed it. Good technique as well. Look at how he shifts the bat from hand to hand as he gets to the non-striker end. The other one was a better view, but look how Usman had to come around. He's a left-hander. It's good cricket from Umar bin Yusuf. Looking very solid at the moment, Umar bin Yusuf. As I said in the last delivery, that he holds the key from now on, because he's the one who is always looking to hit boundaries. And Quaid-e-Azam, on the other hand, just has to stay there.
It's that running between the wicket. Look how he shifts the bat from right to the left hand, keeping an eye on the fielder at all times. This is exactly the right way you should be doing it. You don't want to turn your back to where the ball went. That is called a blind turn. Also, he ran in the first run really hard. That is what you're told when you're a schoolboy. You would know. They'd run the first run really hard. The second one gets easier then. South Shakil, a tense South Shakil at the moment. He doesn't give away a lot with his expressions. Pretty much similar all the time. He's playing well, shaping well, looking positive. He's really upset at himself when he lost his wicket. Slow delivery. Abbas trying everything. 175 for 3. Last pine. Sindh needing 206 runs to win in the remaining 49 overs. Oh, that's gonna be a good run chase. If you're watching some T20 cricket in the morning, New Zealand scored 208 in 20 overs. Not for a second I'm saying that this is going to be exactly the same, but just saying. Yeah, you just said it. A, it's not a New Zealand side. B, it's a fourth day pitch. C, it's not a Bangladesh. Woo! Although bowling may be similar to Bangladesh. Or maybe they're better. The southern Punjab side. According to the situation, I said. Yeah, seam bowling certainly is better. Stop that single. Even 2 on that occasion. Abbas just bowled his over. Probably he wasn't ready for that. A little bit of a sprint and then he doesn't have a strong. Must be watchful because they're giving away easy runs. Bit lazy effort in the field. That's what he's suggesting. Just adjusting that fielder. Getting a bit squarer. So if you're a Sindh side, how many runs would you want to chase in the last session? Let's say you have 22 overs. How many runs would you ideally be looking? Nicely punched. Won't go to the fence, but good running. Excellent running. 3 runs. Quaid-e-Azam keeping the scoreboard busy. And they're putting the pressure on the fielders. That's what they're doing. They're keeping on taking those runs. 2s, 3s, occasional boundary here or there. Look at that. Just lean into it. Placement was excellent. That missed that edge of the rough, so Fawad can get closer to the ball. 180 for 3. I'll answer your question in the next end, Ali. Because I think it's just about time for drinks, or we're going to have another one. Well, that will give me a chance. So the last hour, 15 overs will have to be bowled, the mandatory 15 overs. And before that, well, I would really like to take the game deep into the third session first. Just bat normally and see where we are at the end of this session.
So it looks like 37 overs or 36 overs will be remaining in the last session. Light permitting. Make it 35, 34. So anything around 150 in the last session. Probably should, if wickets in hand, you can give it a go. But you can't go chasing for runs right now because there's too much time left in the game. You don't want to open the door for Southern Punjab. Another 150 in 1 hour till tea. No, 50. No, 50. So you say 150 in the last session. For that to happen, they will have to score 50 runs in the next 1 hour. That is doable. Let's say 14 overs, 50 runs. With 2 set batters. Fawad has got 16 of 33. And Omer is a natural stroke maker. But these two need to be intact. The minute a wicket falls, all that equation will change. And the approach also. You might see that. But that's what I want to see. See, that's why I want to see where Paul Nixon makes a difference. If a wicket falls here, do they still continue this intent and approach? Or they just go block? This is where my eyes would be. See, here's the difference. We're talking about run rates and a potential target, just as if we were talking about an ODI game or a limited overs game. But like you just said, you want to see what Paul Nixon's strategy would be. If a wicket falls, will they just block? Well, I think what should happen, or I don't know if it will happen or not, but if a wicket falls, you start to build another partnership. And you see, if you build another partnership, then at the end of that, you just see if you can give it a go. There's so many permutations and combinations. You cannot just bat in one flow on the 4th day of a first-class game. It will have to keep changing according to how the innings is progressing, the rhythm of the innings, the partnerships. That's why it's more intriguing. It has more to it than a limited overs game. Yeah, I agree with you on that. The need to build another partnership if a wicket falls. Ideally, they don't want a wicket to fall for this session. Having 7 wickets in the hand for the last session, it's going to get interesting. Good run. Very good call by Omer bin Yusuf. Yeah, that's the intent. When we talk about intent, generally we're not talking about 4s and 6s. Pick up every run that becomes available. See how far Omer was backing up? And Fawad was ready to respond. Just the eye contact. The target is now exactly 200. Time permitting, if we get in the 47 overs that are remaining, so the target is 200 runs in 47 overs after these 2 balls. This is some game, Ali. See, we've been craving for a result here. They've been craving for such game where they just don't block. In the previous 2 games, we witnessed Balochistan, the last game against Central Punjab, they just had to play out the time. Sindh in their first game didn't have enough time to score runs. But here is an ideal situation where the team can go for runs. They should go for runs. They must go for runs. As simple as that. Hassan Ali has been very active all 4 days. He's been talking to players from his side, from the opposition, sharing his knowledge and experience.
even talking to us as well. Kind of him. 60 gone, 181 for 3. Time for some drinks here at the Pindi Cricket Stadium. ये अब तक का खुलासा है 278 के जवाब में 181 रन बनाए सिंध ने, उसके बाद 283 रन की इनिंग हुई ATF सदर्न पंजाब की तरफ से, फिर सिंध ने रिप्लाई किया 181 पे हैं आप 3 विकेटों के नुकसान पे। एग्जैक्टली 200 का हिस्सा चाहिए यहाँ पर जीत का मजा चखने के लिए सिंध को। काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि फवाद आलम सीनियर प्रो हैं। बहुत सारी इस वक्त डिस्कशंस चल रही हैं डग आउट में, तजुर्बात शेयर किए जा रहे हैं। बारहा ये प्लेयर जो हैं इन सिचुएशन से होकर गुजरे हैं तो बेहतर अंदाज में रिप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ बैटर, बीइंग अ बॉलर। मुझे ज्वाइन किया है कॉम बॉक्स में तारिक सईद ने, वेलकम करते हैं आपको सर। शुक्रिया एजाज। और अच्छा स्पेल अली की जानिब से, खाने के वक्फे के दोनों जानिब उन्होंने बहुत देर से ये एंड संभाला हुआ है और अभी भी जो पॉइंट के फील्डर हैं वो पीछे हैं। ये एक मुसलसल सवाल रहा है। फवाद आलम को 12 स्ट्राइक से हटने का मौका मिल गया और जब राइट हैंडर आ जाता है तो बैटिंग आसान हो जाती है अली के सामने।
पॉल निक्सन बड़े मुतहर्रिक कोच हैं। अच्छा देख कर ये लगा है कि जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले ही मैच से वो तमाम खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए हैं, छोटों और बड़ों सब के साथ। जी हाँ, और जो तजर्बात हैं उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं उन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब कोई तजर्बाकार इंटरनेशनल प्लेयर आपके टीम की कोचिंग कर रहा हो, तेज़ी से रन मुकम्मल किया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता था डायरेक्ट हिट पे। ये जो 182 रन हासिल किए हैं ATF सदर्न पंजाब ने, इसमें बड़ा अमल दखल जो है ये फील्डर्स जो हैं आसानी के साथ ये रन देते रहे। स्ट्राइक रोटेशन रही है जिसकी वजह से बॉलर्स को तजुर्बात का मौका नहीं मिलता एक ही बैट्समैन पर। जी, अब तक की जैसे आपने बात की पारी की, तो 182 रन कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। कहीं ना कहीं ऐसा वक्त ज़रूर आया कि थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन ज़्यादातर जो आपने बात की कि जो रन्स थे आसानी के साथ ओपन अप गैप्स में मिलते रहे, तो वो तमाम तर प्रेशर जो है वो हट जाता है जिस वक्त आपको रन्स आसानी के साथ 3-4 रन इस लॉन्गर फॉर्मेट में मिल रहे हो हर ओवर में। शॉर्ट लेग से सीधी पॉइंट पर लाया गया इस वक्त यूसुफ बाबर। और ये आम बॉल थी और इस बार गलती कर गए थे तकरीबन उमर बिन यूसुफ। तवक्को नहीं कर रहे थे कि गेंद गिरने के बाद सीधी चली आएगी उनके स्टंप्स की तरफ। अच्छा आम बॉल करते हैं अली उस्मान। 182 पर 3। तारिक साहब, आपने कोचेस की बात की अभी कुछ देर पहले, तो यकीनी तौर पर जो ओवरऑल इफेक्ट है रिजल्ट्स हैं प्लानिंग के ज़रिए वो भी काफ़ी तब्दील होता है ओवर द ईयर्स। हमने देखा कि बसा औकात जो कैप्टन्स हैं वो ज़्यादातर इस तरह का जो आखिरी दिन होता है रोकने की कोशिश में होते हैं कि दिन बचा सकें, ड्रॉ की तरफ जाएं। तो जो इम्पैक्ट है ओवर द ईयर्स वो नज़र आया कि प्लेयर्स जो हैं वो शायद इस कोशिश में हैं कि कहीं यस या नो आइदर साइड ये गेम जाए। अभी तक सिंध की सोच अच्छी रही है। वो ये मैच जो है वो अगर बचाना भी चाह रहे हैं तो रन्स बनाकर बचाना चाह रहे हैं, और विकेटें गिरने के बावजूद खिलाड़ियों ने अपने रन्स नहीं रोके, अपनी बाउंड्रीज नहीं रोकी। आज जब साइम अयूब भी खाने के वक्फे के बाद आउट हुए तो अगले ही ओवर में उमर बिन यूसुफ ने 2 चौके लगा दिए। तो एक सोच है कि अगर विकेटें हाथ में रहती हैं आखिरी सेशन में तो ये इस स्कोर के पीछे जाएं जो कि बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा है। ये मारगला की पहाड़ियों से भी बड़ा हदफ है ये जो 199 का है सिंध के सामने। तो और फवाद आलम जैसे खिलाड़ियों को आगाही भी है कि इस तरह की सूरत हाल में कैसे बैटिंग की जाती है। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ एक ऐसा ही मैच उन्होंने जीता था आज से 24 माह पहले नेशनल स्टेडियम कराची में, जब इनको आखिरी दिन हदफ दिया गया था और इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। उसमें फवाद आलम ने उस रोज़ हाथ खड़ा किया था। जी हाँ, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आए वहाँ पर भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि एक पाई का जो प्लेयर होता है वो ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल हर सतह पे अपना जो चार्म है वो दिखाता है कि जो स्किलफुल उसके पास हैं वो तमाम नज़र आती हैं। और आज भी इनके पास ये अच्छा मौका है कि अपने नाम को एक बार फिर हाईलाइट करवाएं। ये पहली इनिंग्स में 181 रन सिंध की टीम ने बनाए और उससे ये पहले ही आगे जा चुके हैं। अभी 7 विकेटें बाकी हैं और एक फ़र्क ये है इन दोनों इनिंग्स में कि
उस रोज़ ये बहुत दब गए थे और रन्स बनाने की इतनी तमन्ना नज़र आती नहीं थी अहमद बशीर, मोहम्मद अब्बास और इलियास के सामने। लेकिन आज वो इंटेंट नज़र आई है। बड़ी उम्दा बैटिंग की अपना पहला सीज़न खेलने वाले साइम अयूब ने। ये अच्छा शॉट टाइम किया इसे सामने की जानिब फवाद आलम ने, और क्या उनने बाउंड्री पाली ये देखना पड़ेगा। ये दिलचस्प होगा, अंपायर क्या जो हैं ये फील्डर के फैसले पर इन्हिसार करेंगे, क्योंकि टीवी अंपायर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो पूछा जाएगा, यहाँ फील्डर की बात पर यकीन कर लिया जाता है आम हालात में, वही किया खालिद महमूद ने। जी हाँ, लेकिन शॉट अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त फवाद आलम का। देखिए बिल्कुल ऑल अलोंग द कारपेट, तीर की तरह सीधा। ताक़ुब में थे यहाँ पर फील्डर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जा पहुंचे, स्लाइड किया। यहाँ ये खासा ये 19-20 किस्म का मामला था, इसको बार बार देखा जाता अगर यहाँ टीवी अंपायर की खिदमत होती। जी हाँ, नी जो था वो जिस वक्त रोल हुए तो उनका बाउंड्री को टच हुआ, शायद उनका ध्यान जो आर्म की तरफ था, मे बी उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये बच गया। फील्डर को अक्सर ये होता है कि उसको टाइमिंग का इतना अंदाज़ा कई बार नहीं हो पाता, इसलिए आप दोष नहीं दे सकते यहाँ पर इमरान रंधावा को। ये देखिए आप स्लो मोशन में जब देखेंगे ऐसा लगता है कि इनका जो पाँव है ये यहाँ ये टकरा गया था, क्योंकि जो गेंद है वो भी शायद लग गई थी यहाँ रोप को। यहाँ पर 62 ओवर हुए, 185 पे 3। बहुत आला गुजर। ले ले। ये दोनों की बैटिंग करने का अंदाज जो है इसमें 180 डिग्री का फ़र्क है। उमर बिन यूसुफ अपने रन्स बड़ी आसानी के साथ बनाते हैं और साइड ऑन रहते हैं। स्टांस जो है फवाद आलम का खासा मुख्तलिफ है। फवाद आलम जो है इनका एक अपना अंदाज है खेलने का हर दौर में, लेकिन आखिर में आपके रन्स देखे जाते हैं और उसमें ये किसी से कम नहीं है। इसे पुल करने के लिए गए लेकिन ठीक तरीके से सर अंजाम दे नहीं सके शॉट को। एग्रीड, क्योंकि एट द एंड जिस तक आप फतवात समेट रहे हैं, आपकी एवरेज बेहतर है, आप सैकड़े जड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी टेक्निक हो वो चलती है। पीछे हटकर इस बॉल को हवा में खेला। वैसे इससे पिछली इनिंग जो थी तारिक साहब, उसमें भी मैंने फवाद को देखा कि बड़ा अनरियल था जो शॉट उन्होंने लगाया जिस पे एज होकर आउट हुए थे। लेकिन इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं, इंतज़ार कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी लेकर। Well done, well done, well done. अच्छा फुटवर्क दिखा रहे हैं उमर बिन यूसुफ। 186 3 विकेट पे।
एक एक विकेट हासिल की मोहम्मद अब्बास, इमरान रंधावा और अली उस्मान ने। पहली इनिंग्स में मोहम्मद इलियास ने सबसे ज़्यादा 5 खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन आज उनसे ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई गई। अहमद बशीर जारी रहेंगे। एक बार फिर इनसाइड एज लगा, ये अराउंड द विकेट आकर ये इनके बल्ले का बाहरी किनारा चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुश्किल होगा। जितना ये वाइड चले जाते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज अहमद, तो इनके लिए गेंद को बाहर निकालना लेफ्ट हैंडर के लिए जो है इस जाविये से ये मुश्किल काम है। जी हाँ, जिस वक्त डिलीवरी का इम्पैक्ट है वो पढ़ के भी इवन फवाद का जो है मिडल स्टंप पे अगर हम देखें तो वहाँ पर बॉल को जो एंगल है वो बढ़ रहा है। और बोल्ड कर दिया इस बार। ये स्लो विकेट पर इस तरह के शॉट्स जो हैं कई बार ख़तरे से खाली नहीं होते। और फवाद आलम इनसाइड एज पर ये आउट हुए और अहमद को ये कीमती विकेट मिल गई। इसकी तलाश थी खाने के वक्फे के बाद सदर्न पंजाब को, उनके लिए ये एक बड़ी खिड़की खुल गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा लम्हा है इस वक्त। ये देखिए वाइड ऑफ द क्रीज इस बॉल को काफ़ी दूर अपने जिस्म से खेलने गए, इनसाइड एज हुआ और यहाँ पर खुशी जो है वो अपोनेंट साइड को मिली। जुबिलेशन, बहुत बड़ा विकेट फवाद आलम। दीवार या चट्टान कह सकते हैं उन्होंने हटाई। 22 रन 50 बॉलों पे बनाए, तो यूं सिंध 186 पे 4। मोहम्मद साद खान है और छठे नंबर पर खेलने को आए हैं। टीम दबाव से 2-4 है। पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करके गए थे। पहली इनिंग्स में दरअसल यही सबसे अच्छा खेले भी थे। साद खान 3 सेंचुरियां इनके क्रेडिट पर हैं, अच्छी औसत है, लेकिन इन्हें यहाँ पर खासी मेहनत करना होगी अब भी ये मैच बचाने के लिए। जी और अहमद बशीर इस वक्त फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि फवाद जैसे प्लेयर की विकेट लेने के बाद यकीनी तौर पर जो एनर्जी है वो बूस्ट अप हुई होगी। काफी मोहतात अंदाज इख्तियार करना होगा कर्टसी इस विकेट की, क्योंकि इसके बाद अब दबाव है सिंध पे। यहाँ ये पाँव उनको बिल्कुल हरकत नहीं दी और हाथ जो हैं दूर चले गए थे बॉडी से, इसलिए बहुत बाहर की गेंद को ये अपनी स्टंप्स पर खेल बैठे फवाद आलम। ये गेंद जो है ये भी किसी हद तक ये रुक कर आई थी। वेल अब तक अहमद ने अच्छे बॉल करवाए और काफ़ी जिसको कहते हैं दिमागी विकेट ली उन्होंने। पहले सेटअप किया बैटर को, अगर बॉल जो है वो बाहर पड़ रहे हैं
तो ये बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर को आया और वही जो एंगल का इस्तेमाल है उसके साथ कुछ गलती फवाद ने की जो कि अपने जिस्म से दूर खेल गए। नहीं, यहाँ किसी हद तक ये मात भी दी अहमद ने फवाद आलम को, उन्हें सोच के मामले में, क्योंकि पहले ये गेंदें जो हैं वो इन स्विंग कर रहे थे वहीं से एंगल के साथ, और उसके बाद ये गेंद जो है उनने सीधी की। देखिए फवाद आलम का यही ख्याल था कि गेंद पड़कर उनकी जानिब आएगी, लेकिन आखिर में दूर खेलना पड़ा। अच्छी बॉलिंग, अच्छी सोच अपनाई अहमद ने। ये बेहतर होते जा रहे हैं हर सीज़न के साथ। अहमद 187 पे 4। जी यहाँ पर इसी तरीके से रिलैक्स होकर खेलना पड़ेगा, अदरवाइज जो जिम्मेदारी इस वक्त इनके कंधों पर है वो बहुत ज़्यादा है। अली उस्मान ने अब तक एक कामयाबी समेटी अपने 31 रन्स के एवज। 17 ओवर करवा चुके हैं। तो रफ पैचेस को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने का प्लान है। हेलमेट मंगवाया है सिली के फील्डर ने। अटैक होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ ही लम्हात पहले एक विकेट समेटी थी। उस प्रेशर को बरकरार रखना। तब देखना यह कि जो स्पेल उस्मान का है वो कितना कारगर रहेगा या कामयाब रहेगा। वो रफ पैचेस हैं जिनका इस्तेमाल करके विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ब्लॉक करना होगा इन रन्स को क्योंकि आसानी के साथ हुए। बॉल पीछे नहीं करो सर, ऑलवेज राइट। अली एक बॉल तो दे दे मुझे यहाँ से। साद खान सुबह से कह रहा हूँ एक बॉल अब चाहिए लोअर मुझे। मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। ये भी हैरानी की बात है। नौजवान बैट्समैन है, एक इनको बॉल पिछले चाहिए मुझे यहाँ से। सीजन में जब लाया गया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो ये वन डाउन खेल रहे थे। तो एक आध इनिंग्स इन्होंने नंबर 4 पोजीशन पर खेली और वहीं पर इन्होंने ये जो 3 सेंचुरियां हैं ये शुरू के नंबर्स पे ही बनाई, लेकिन यहाँ जो है इनको खिलाया जा रहा है नंबर 6 पोजीशन पर। ये अच्छा टैलेंट है साद खान। वो करियर के इब्तदाई अयाम में एडजस्ट करना टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ, ये भी इनके लिए एक नया तजुर्बा होगा। तारिक भाई वक्त बहुत बड़े बड़े सबक सिखाता है और इस वक्त इन्हें जो सबक है वो ये है कि इस विकेट पे ना सिर्फ सरवाइव करना बल्कि जीत की जानिब भी बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन जो नौजवान जो बैट्समैन होते हैं इनकी डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा सा खबरदार रहने की ज़रूरत होती है कि इब्तिदा में आप उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। जो उनकी जो जिस पोजीशन पर वो अपनी इब्तिदाई क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, बात होगी आगे चलकर मजीद भी इस पे 189 पर 4।
वेल अब तक तकरीबन तमाम प्लेयर्स जो हैं वो चिप इन किया, लेकिन सिर्फ 95 साइम अयूब की इनिंग है जो कि हाईलाइट है। अदरवाइज हार्ड एफर्ट करने के बाद अपनी विकेट गंवाते गए प्लेयर्स। बाकाया अब सरफराज अहमद बाकी हैं, उनसे उम्मीद लगा सकती है सिंध की टीम। सेल कट किया, बहुत ही जोरदार शॉट था उमैर बिन यूसुफ का ऑफ स्टंप के बाहर। उन्होंने खूब हिट लगाई 4 रन्स के लिए। बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं, रन्स बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जब भी गेंद इनकी आई लाइन के बाहर गिरती है ये पिल पड़ते हैं। एग्जैक्टली, बैट स्पीड अच्छी थी और कट इतना ज़बरदस्त था और टाइमिंग देखिए, बॉल गोली की तरह पार कर गई थर्ड मैन के एरिया को। वेकेंट स्पेस था क्योंकि फील्डर मौजूद था। अगर थोड़ी आहिस्ता होती तो मे बी कवरेबल होता, लेकिन अच्छा टाइम। और अब शायद ये वो जो एक मुश्किल जोन होता है नौजवान खिलाड़ियों के लिए, अब ये उसमें दाखिल हो रहे हैं। ये जो अब 30-31 रन्स आपके बन गए हैं, इसके बाद अपने अपनी इनिंग्स को इसकी उठान कैसे करनी है। और ख़ास तौर पर जब दूसरे एंड पर भी एक नौजवान बैट्समैन मौजूद हो तो फिर आपको और भी ख़ुद को ज़्यादा समझाने और रोकने की ज़रूरत होती है। ये ऊपर लगी, इसी अंदाज से एलबीडब्ल्यू हुए थे पहली इनिंग्स में उमर बिन यूसुफ, लेकिन ये गेंद निस्बतन पीछे गिर गई और ये स्टंप्स को मिस करती हुई निकल जाती। यार शायद ये लेग स्टंप को भी मिस कर रही थी। विकेट कीपर का बायां पांव हम देख सकते हैं पहले लाइन से बाहर जा चुका था। खालिद महमूद ने ही पहली इनिंग में एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था उमैर बिन यूसुफ को। इस बार उनकी खामोशी बिल्कुल हक पे जानिब थे। अहमद बशीर जो हैं ये फास्ट बॉलिंग ये दरअसल इनको विरसे में ही मिली है। इनके जो दादा थे वो एक बहुत ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी किसी टीम ने हासिल की वो इनके दादा की क़यादत में मिली थी पाकिस्तान रेलवेज़ को। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब भी इनिंग्स और 851 रन से पाकिस्तान रेलवेज़ ने डेरा इस्माइल ख़ान की टीम को शिकस्त दी थी 1964 में। वो फास्ट बॉलर थे बशीर हैदर। उम्दा शॉट खेला बैकफुट से, 4 रन्स। दिलकश नज़ारा देखने में आता है जब जब ये ऑफ साइड में खेलते हैं पिछले कदम पर उमैर बिन यूसुफ। ये मुख्तलिफ हैं दूसरों से। एग्जैक्टली, वंडरफुल शॉट। ये देखिए डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट, बहुत ज़बरदस्त पंच खड़े खड़े। और जो सबसे अच्छी चीज़, बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ गैप निकाला, 4 रन्स हासिल किए। बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है एक प्लेयर को जब बॉल बिल्कुल बल्ले के नीचे लगता है, दरमियान में एक सॉलिड नॉइस निकलता है तो उससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो मज़ीद इंक्रीज़ होता है। तो अहमद बशीर के जीन्स में जो पेस है या फिर जो पेस बॉलिंग है वो मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब जो उमैर हैं वो अपनी पेस पर खेले जा रहे हैं। ये अच्छी गेंद नहीं थी और उमैर ने फिर से हिट लगा दी ऑफ साइड में। तीसरा चौका इस ओवर का उन्होंने हासिल किया। ये शॉट ये इनकी पहली पसंद है। एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और जो इंटेंट है यंगस्टर्स की, अगर हम बैटिंग की बात करें तो इसमें झलक नज़र आ रही है इस ताक़ुब की। 200 रन मुकम्मल हुए, 201 पे 4 इस वक्त पहुंच चुकी है टीम और 180 रन मजीद अब दरकार हैं।
ऑफ साइड में बहुत से फील्डर हैं, सो लेग साइड में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं। अब पॉइंट के फील्डर को वाइड थर्ड मैन पर लाया गया, अली उस्मान को। यह आहिस्ता गेंद आई और रिस्पेक्ट पे की, फुल फेस से डिफेंड किया। इस पिच पे ही अच्छा ओवर रहा उमर के लिए, 201 पर 4। Come on, boys. नहीं वो उधर ही रहेगा। ले उसने पैर नहीं पहने, वो उधर ही रहेगा। आप इधर कर भी लो, अंपायरों ने करवा दे। आप इधर कर भी लो, अंपायर ने करवा दे। One wicket from you, one wicket from you. Come on, boy, come on. One nation, one passion. That is cricket. Oh! Kept low. 201 for 4. Sindh needing 180 runs to win. See that ball missed that rough. And Saad Khan checking with his partner if it was way outside. Well bowled, Ali. Or happening out of that danger area. Saad is all at sea. Yeah, just wanted to push at it. I'm not sure if the right idea to play. And that back foot, you see, always going away towards leg side. The balance also not quite there. The pressure definitely on young Saad Khan. He's dealing with a couple of things there. The patch, the bowling, and the pressure of runs. Definitely, when you're playing off of that rough, you don't want to be playing with a horizontal bat. Look at that, he went too far back and then not looking to play it with the straight bat. The last delivery though, where he rotated the strike, probably that's what he should look to do more. Also, won't be a bad idea to just shorten that back lift, because out of that at rough, it won't give him much time. If it misbehaves from that close, it's not really back of a length, it's just quite full. With a shorter back lift, you can just adjust real quick. Little things that you need to change according to the conditions. Umair bin Yusuf has looked solid. Whenever provided with opportunity, he's gone for runs also. And that is the intent. You must be able to put away the bad deliveries. That is what you want to see from these young batters. Still in pursuit of 179 runs. Still searching for runs. That wicket, that gone down for Quaid-e-Azam's wicket, has that dented the chances to chase down this total? Yes, Sindh hasn't changed their gears. They've just batted normally. And they're looking to do exactly that. But Umair has found his rhythm in the last half an hour or so, so he's kept the scoreboard busy. So it feels like Sindh are still in it, although it's getting harder and harder with every wicket that falls. Saad Khan, another stroke maker. It'll be interesting to see if he gets settled in, gets through that nervous phase that he's in right now. And if he does that, like I said, there will be a different dimension to this match. But if Sindh continue to keep losing wickets at regular intervals, then eventually they would have to look to bat out the game, and that will be even harder. Yeah, when they decide, that's the question. After losing how many wickets? They decide that, okay, fine, that's it. No more trying. No more going after the target. Wickets as well, and also the time. How much time is left? Like I said, if they build another partnership, get closer to that target with fewer overs remaining. At the moment, another 40 overs remaining in today's play. 25 overs before we can get to that mandatory 15 overs in the last hour. So 40 overs is a long, long time. And that average hasn't
gone much higher than 4 runs and over. So just in the game, all the results possible at this stage, just half an hour before the tea break. Yeah, that's the beauty of this format and this new system. Two very good sides up against each other. Quality cricket for 3.5 days, still not done yet. It's all down to Saad Khan. That was how he went. That was Umair bin Yusuf. Lias was the bowler, hit him on the back leg. Hasn't seen him much today, Elias. In fact, he got both these batters in the crease. Saad Khan on your screen. Ilyas got him as well. Saad likes to come across his stumps and whip those balls from middle and off towards the onside. Ilyas was the one who trapped him in front whilst he was doing that in the first innings. He played quite beautifully up until that point. Yeah, sometimes he has that habit of falling over. This was an example. Shuffled too much. It was a very good decision by the umpire. It's never easy when the batter is moving inside the crease. Yeah, maybe a burst from him, or are they waiting for the new ball to come, which is what, 12 overs away? Maybe they're just waiting for that new ball to come and then give a burst to Ilyas, because he will be needed in that last session. We've been discussing a lot of scenarios that what could possibly happen in this game. Completely forgot about that new ball, because that will give Southern Punjab, and especially Mohammad Abbas, a real good chance to go. And if they open the door, get into that tail, wow. All to play for in this game. What a game of cricket we've had. Fantastic cricket from both sides. Southern Punjab dominating for the most of the time in this game. This morning was a time when we all thought that when Saim Ayub started off things brilliantly, that Sindh might be in that chase, but they pulled back things nicely courtesy to these 4 wickets that they've taken without their ace bowler bowling many overs. 7 overs for Ilyas. Edge, falling short. Soft hands. Just kept low also. Yeah, we've noticed this now. The ball has been keeping low from time to time, especially from that end. Look at that. Saad pushing hard at it. But lack of bounce, really. Good wicket keeping. Maqbool just put a strong glove on it. Well, this man has made a difference, you have to say, behind the stumps, because it hasn't been easy on this 4-day pitch. 202 for 4. Yeah, he's replaced Umar Siddiq. He's done well. He's a proper wicketkeeper, not a makeshift one. And he's made the difference, there's no doubt. Especially to our balls who are keeping low. Good run. Very good run. It's never easy as a wicketkeeper also, you being yourself, on a pitch that is keeping low, turning a bit. You really earn your money as a wicketkeeper on a pitch like this. And like I said, he has made the difference. Umar Siddiq, as good as he is, he's not full-time wicketkeeper. Really helped Southern Punjab with their fielding effort. That pitched in that rough. That could have easily gone to hit the stumps. That was all that oohs and ahs was about around that batters. Look at that. Look at that flight and drift into the rough and turn. Expensive from Saad. He's not settled against Ali Usman. That's forcefully hit through the gap. That is pure talent from Saad Khan.
There was no intentions of stopping it, just forced it towards that extra cover boundary for 4. Yeah, that's one way of dealing with it. Just get to the pitch of the ball. Another invitation. And Saad was very brave. Got down quickly. He's very quick on his feet. Ali Usman's challenge was accepted. Ali wouldn't mind that. This is a fascinating contest building up here. Bowling Ali bhai. Yeah, 2 very young batters, very talented batters. Umair bin Yusuf, Saad Khan. Can they do the unthinkable? Can they chase this down? Point fielder stays on the boundary line for just easy 1 run. Yeah, inexplicable, I should say, up until that point. But yeah, I was just talking about how a batter, you need to just change your backlift to a slightly smaller one. When you're playing into the rough, watch Umair bin Yusuf quickly off. I like this intent. I've got a story to tell you about this small backlift and how it helps the good batters to tackle quality spinners. On this very field, Pakistan was playing Sri Lanka in 2001. Good run again. That is an excellent over under this situation. 8 runs coming off it. It's 209 for 4. Yeah, that test match between Pakistan and Sri Lanka was the first test match that Yunus Khan ever played. I was at the ground and I saw Inzamam ul Haq, great Inzamam ul Haq. He saw Javed Miandad come in and he asked him, I'm having a lot of problem facing Murali because if I go on the front foot, I get inside edge onto the pad, and if I go on the back foot, I get bowled because he got that big off spinner. The great Javed Miandad, who wasn't involved in any coaching role officially, he took a bucket of balls and told Inzamam, I'll bowl a few quick throwdowns at you of a length. All you need to do, shorten your back lift. And you would see how quickly you manage that ball turning out of the rough, not from a proper surface, just the outfield. And with that short back lift, he's able to block those deliveries without even going on to the front foot. Staying on that back foot, he was able to block those balls. And I saw it for 15 minutes. And what happened after that in that series, Inzamam was the leading run scorer for Pakistan. And after that, he scored a lot of runs against Murali in the years after that. Great, great technician Javed Miandad was. Another good run. Excellent piece of running. This is what these fresh legs would do. They'll put the pressure on the fielders inside the circle. They're doing it brilliantly. Good call. Good response. Nice soft hands. I like the intent from Sindh. Keep saying this. At the moment, they haven't shut up shop, and that will keep Southern Punjab under pressure. He said what a great technician Javed Miandad was. What a great student and learner the great Inzamam was, who put into practice whatever was told to him so quickly. And Muralidharan, one of the greats, all-time greats, and Inzamam conquered him after that. Great story. Absolutely. It's just amazing how these little things make huge difference. You're talking about the great Javed Miandad, a great mind. Just figured it out, the problem. Probably he knew it before he wanted to tell Inzi bhai. But just magnificent. These little things making this huge difference. As this one, he wanted to guide it towards third area. There's a gap available. He's always searching for runs. Sindh needing 170 runs to win this game. 37 overs to get them after this one. All eyes would be on this boy, Umair bin Yusuf, who's played a brilliant knock, 41 at the moment. Sindh would want him to play till the end if they have to chase this one down.
Nice solid push. Looks good, Umair. He does. You asked for Ilyas. You got your wish. He was the one who was able to swing the ball in the air when he bowled his first spell in the morning from the media center end. We had a slight cloud cover at that time. Then all of a sudden he changed and came over the wicket to the left-handers, providing them with plenty of room, and lost that swing. Now that's what he will do. He will keep on attacking your legs and the stumps all day long. That is the quality. That is the control he has. But he was under bowled, do you think, just 8th over of the morning? Whereas if you look at Abbas, he's bowled 14 overs. Ahmed Bashir has bowled 16. Usman, well, you expected him to bowl more. 20 overs for him. Just 8th one for him. Yeah, I think he has the role of that workhorse in the bowling attack. Ilyas does. So give the two seamers who are more handy with the new ball. Nice stroke for no run. But Ilyas has that advantage when the ball gets old and soft like it is now. He has that little bit of extra pace than the other two. So probably he was saved for this part of the innings. Yeah, that's probably the reason. Full day of bowling. Almost a session yesterday. Salman Ali Agha had to keep his bowlers fresh because it was always going to be a difficult task. Swing for him. It's good areas that he's bowling. Sarun? 211 for 4. A 170 more runs for Sindh to win this game. 6 wickets for ATF Southern Punjab. It's been hard work for them today. Credit to Sindh. They batted with intent. They batted with purpose. Still everything to play for. 7 minutes shy of tea break. That's hit down the track with some force again. Saad Khan is dealing in boundaries. He's playing Ali brilliantly. Another boundary to him. Attack is the best form of defense. This is what Saad Khan has decided. Once again, quickly down the wicket and muscled it down the ground. He does pack a punch. He's not a very big lad, but he does have some power. Couple of bounces over. He's very skillful. Saad Khan, 14 runs of 18. Another one, nicely driven. There is protection. Yeah, that's what one way of doing it. There's no point hanging in there. You got to keep on attacking, getting to the pitch of the deliveries, because that rough is right in front of them. If you let the ball pitch on that rough area, you never know which side it's going to go, where it is going. So that's one way of doing it. Just come down the track, play it straight. That was another impressive part of that shot. Yeah, he's decided he's not going to allow Ali Usman to bowl. Even that drive, next ball after the boundary, out of rough, he just is brave batting. Singles are easier. They've taken them with some comfort. One odd boundary here or there. They're keeping up the run rate in check. 31, this partnership that has come at a good time. Just 44 deliveries. Looking at the situation of the game. That is what I wanted to see. The approach, the intent. They've done well. Oh, that spun. That expensive drive, he wanted to go. Very lucky that he did not drag it down to the stumps. That is clever piece of bowling from Ali Usman.
He hasn't been perturbed by Saad attacking him. That went into the rough and nothing short. Remember, it's a very fine line between being aggressive and being reckless. And Saad Khan will have to watch out. Good bit of fielding, good bit of fielding. Yusuf Babar, strong hand, and almost caused a run out. This contest is absolutely riveting. You can't just take your eyes off of it. Have a look. Nice firm push off the middle of the bat. Solid hand, Yusuf Babar. Magnificent cricket. 218 for 4. 36 overs to go. 163 runs to get. For Sindh, for Southern Punjab, it's simple. Just get 6 wickets. And if they go down 150 for the last session, God, that will be a good one. Another single towards that point area. Remember earlier, Ali, in our earlier spell, we were discussing that at T, where you want this game to be. And we said, if Sindh could get up there with 3 wickets down and requiring another 150 runs, they would still continue to go for it. Well, slightly different, 162 runs with 1 extra wicket gone down. But the partnership has built. So it's just going right down to the wire. Yeah, I'm fine with the score rate, 162 to get, but that extra wicket that they've lost, that was of Quaid-e-Azam, I think that will dent the chances. Had Fawad been here with 7 wickets in hand, the last session 160 might be possible. South Shakil, he would be disappointed. The shot he attempted is not a smart one. Excellent fielding. That is top cricket by Shahrul Siraj. Oh, they needed a direct throw too. Good cricket all round. Nicely driven, good fielding, and equally well run too. These two are on the lookout for any run that becomes available. Just excellent bit of work from Shahrul Siraj. Wasn't able to completely stop the ball, just knock it away from Salman Ali Agha, and these two were quick. Off they go. Direct hit. Intent from both sides is terrific. He's making some changes in the field. Salman Ali Agha. It just needs to stop this run flow, these singles that they're taking on regular occasion. That's where I think they're lacking behind the southern side. They've given away too many easy runs, easy singles, especially that point area. They've kept that point fielder back since morning. And Sindh batters have been milking the runs towards that area. And now Sindh needing 161 runs to win this one. Most likely will be the last over before tea interval. Again a push and run. Push and run. Good running. It's a direct throw, but that slide, the dive saving him. I was going to say he picked out the right man. Muhammad Abbas is not one of the quickest movers. But look at him, he produced a direct hit. With Saad valuing his wicket. Look at that dive. Alar Muhammad Rizwan, he just slid across and got home. This has been electric cricket in this session. It's amazing how quickly he identified that there is a run available. Just the moment he hit it, he knew that there is one. And as you said, there was Abbas, the slowest one probably. But still, that he gets that direct hit. It's a good run in the end.
A risky but good run. That looks a bit ungainly when he's playing towards that mid-wicket. Looks like to play it with the straight bat, and at times he's not in control of that stroke. Look, he's trying to practice to play it straight. Just falls over a little bit. Yeah, something what Saim Ayub was doing beautifully well. Playing it with straight bat, even if he was looking to play towards onside. Don't ball him there. He will punish you all day. Another one. Oh, good fielding. Ali Usman there. Could not prevent couple of runs though. Wow. Both the teams have given it their all. Tea on day 4. And like I said just a while ago, all the results are possible and both the teams are giving it a fair go. That is so good to see. And we've had a magnificent game. Still plenty left. At tea, 223 for 4. Another 158 runs required in a minimum of 35 overs. Another great session. 28 overs, 89 runs, 2 wickets. Intense. The over rates has been good today. Credit goes to both the teams and the umpires for that. Well, since been batting, so credit goes to Southern Punjab rather for keeping up a good over rate. Yeah, the session will be shared around 2 wickets and some handy runs for Sindh side. It's been a great effort from both sides. We're witnessing an exciting game of cricket, and I'm pretty sure with 158 runs to win, the last one will also be a very exciting one. Saim Ayub stands out, 95. 45, Umair bin Yusuf and remaining all got starts, but nobody looked to play a big one. Saad Khan has an opportunity, still there on 18. Sarfaraz Ahmed still to come, 223 for 4. ATF Southern Punjab has toiled hard. They've given it their all. 4 wickets shared around Abbas Ahmed Bashir, Imran Randhawa and Ali Usman. Ali Usman with 1 for 49 of 21 still holds the key. Ilyas just the 9 overs. Things going into the last session, we can expect a lot of exciting cricket still. It was not an ideal way for Sindh to start off the session. We lost the wicket off Saim Ayub, courtesy to a wonderful bowling by Ali Usman. And then came Umair bin Yusuf. Looked positive from the word go. The intent was clear that he is going after the shots. Anything pitched outside the off stump, he's punished it. Fawad Alam, well, he was there for a bit, but it was a brief stay. Sindh needed him to go big, but was undone by that inside edge, dragged it on to his stumps. But there was no stopping Umair bin Yusuf. He's looked majestic at points, especially when playing towards cover area. Another one outside the off stump, flashy. Saad Khan has joined him with the same intent, looking to be positive and score some runs. That has been the quality of this Sindh side, that they're searching for runs, they're looking to get to the target. That's how the match stands. Sindh need 158 runs to win this one in about 1 session to go. It's time for some tea here at Rawalpindi Cricket Stadium. We'll see you shortly.
warm welcome to the Rawalpindi Cricket Stadium for this final session of this round 3 game of Quaid-e-Azam Trophy, ATF Southern Punjab versus Sindh. That's the batting card. Sindh in the second innings, 223 for 4, needing another 158 runs to have an improbable victory. 72 overs bowled. Saim Ayub stood out with 95. Umair bin Yusuf still holding fort with 45 unbeaten runs. Wickets shared around 4 ATF Southern Punjab, 1 each for Abbas, Ahmed Bashir, Imran Randhawa and Ali Usman. 72 overs bowled. A couple of wickets fell in the afternoon session. Ali Usman got the wicket at Saim for 95, unlucky not to get to his maiden first class 100. And Fawad Alam chops on to Ahmed Bashir. And this is the story of these first 4 days here. The equation, Sindh needing another 158 runs in 35 overs, with Southern Punjab needing 4 wickets to wrap up the victory. It's a beautiful afternoon here. The sun is out. Nice pleasant breeze blowing. Saad Khan is in the middle, and in the comm box, Ijaz has joined me. A very good afternoon, Ijaz. Yes, good afternoon. Yes, Saad is on 18. Important call, important session. Well, the body language, Faisal, will surely tell us that which way this match is going to be. Sindh has really played with intent, but really, if you look at the equation, Southern Punjab are the favourites here. Probably draw being the second favourite. Although all 4 results are possible going into that last session. And another very important equation is that new ball will come in 7.5 overs. If Southern Punjab can break through here before the arrival of that new ball. One. Could really open the floodgates. Safraz is in next and quite a long tail after that. Yes, exactly. But to me, the shot which has been played on the previous delivery, those will be the key. All along the ground, keep the ball there. In the middle. Umair bin Yusuf is on 45, 50 the strike rate, 7 boundaries so far, so he has hit and spent a good time. Hard work has been done. It's only the way that you need to carry on the same momentum. So let's see this partnership, how much they will be doing here. So these are the things, advice has been exchanged. And I think so that he has learned lots of things, the way he has played. Chases on, nice firm back foot punch, and it will race away to the fence. Umair bin Yusuf starts off the session with the boundary. Yes, good shot. This is where play down, keep the ball down and into the safer zone. You will surely earn respect, runs, the confidence. See the timing, though he has been chasing, but the ball has gone, crossing the fence. He's on 49. That's 54, Umair bin Yusuf. A very, very well played knock under difficult circumstances on a 4th-day pitch. This youngster has really battled hard and played with fluency and flair. Raise your bat to the gallery, young man. Well played. Yes, he will surely be feeling some more strong shoulders now. The way he has batted here, you're right. He has spent a good time under tough sorts of conditions. 53 the strike rate. Exactly what has been a first-class cricket claims from your side to play. Saim Ayub. A little chat with Ian Fisher and Paul Nixon. He played quite beautifully. Carried on from his overnight score. Lucky not to get to 100. Ilyas, who's bowled the fewer amount of overs of all the 3 seamers from ATF Southern Punjab.
full face of the bat. Nice sound of the bat as well. He's looking good. Yes, exactly. It's been a good music. Being a cricketer, being a sports lover. Yes, different people love different sorts of music, but this is really wonderful to hear. The solid noise comes from the stick. Slip is there, the gully. And we're covering the offside. Short and wide, he went for it. Well, Ijaz, you're talking about the body language. You see the approach from Sindh. They're going after it, and this is Umar bin Yusuf is 50. Look at those strokes. Mostly through the offside. Nice stride. Good footwork once again. Straight bat, just solid back foot punch. Good hands through the ball. Very well bowled. All of a sudden he didn't play left-handed. That was Saad. But that is Umar bin Yusuf. That sound of the bat is so sweet. He's found the middle of the bat regularly with attacking and defensive strokes as well. Yeah, it looks so good. When a youngster, they are chasing down the targets like this, 152. And one say it's not been a massive call now, but I think so. The thoughts will surely be displayed from the faces of the players. This Ilyas, who has got Pfeiffer, I think so that he's just going with the same momentum, but so far it's not helpful for him. Like we were discussing with Ali Yunus before the tea break, Ilyas is the quickest of all the seamers of ATF Southern Punjab. So he's been given the thankless job of bowling with the old ball, keeping the pressure up. That's why he didn't bowl a lot of overs. Just giving a little breather. And that firm push burst through the hands of the fielder. Such was the timing on that. I was just saying that Ilyas is giving a breather to Ahmed Bashir and Abbas probably before the arrival of that second new ball. That's also an important role that he's playing right now. Look at that, Umar, as soon as he hit it, he was off and running. Well, they are middling the ball well. Been hearing all the time the solid noise from the stick. So this means that they are playing well, they are enjoying their cricket. It's only the way to find the gaps from those offside packed field. We did see that chase was there towards offside deliveries. So the intentions are pretty clear. They want business here. Well, he's done that quite a few times in this game. Once again, a flick of the wrist, walking right across his stumps and taking that ball off stump. Saad Khan looking positive here. Well, excellent. This has been a beautiful shot. He has gone through towards onside. Look at that. Perfection wrist. And the ball has gone down. There are lots of balls, cricket balls in the net. So he will have to be careful that what exactly the ball that should be bringing back into the play. And that's where the Sindh team was doing some practice during the break. Coach Paul Nixon. Quite a few practice balls were there. Yeah. I think Sindh would know that ATF Southern Punjab would know which ball to pick up because they must have worked hard on it. They recognize Ali Usman. What can he do? Had a long ball. Nice solid punch, just with soft hands. He knew exactly how hard he'd hit that ball, so called Saad immediately. But this is a bigger challenge. Saad took Ali Usman on just before tea. See what will be his approach now. The long off is back. Long on is back. So is mid wicket. Catch it. Into that rough. It's a good challenge between these two. Yes, as you are describing, long off, long on is there.
patrolling at the boundary line. So they are happy to give them the singles into V. So that's why, see that, they have just been going and taking runs. I think this has been a risk-free cricket. Very well done. They have got the boundary and after that taking 3, and there are lots of balls, the cricket balls, and I think so they have fetched that proper one. There's a few more, look at them. Some good batting practice for the Sindh batters. Very well bowled, Ali. Very well bowled. We've seen Paul Nixon work with individuals during the breaks. Bahut ala, Ali. Bahut ala. Couple of batters to the side and just work with them. So he's working with Asif Mahmood earlier as well, making use of every little bit of time available. In the air, just a nothing shot really that has got stuck in the pitch and just poked at it. Lucky it fell away from Usman. Yeah, these are the moments. These are the moments. I think so that batter was on the way. Otherwise, a Superman dive would have been there. 237 for 4, but have another look of this. Superman dive? No, too far. You will have to fly. Just check the stroke at the last minute. If he'd gone through with the stroke, that might have carried. So another 32 overs left now. 144 needed. What's the average if you work out the average? Well, still less than 5 runs per over. 4.5 runs per over, close to that. 5 overs to go before that second new ball. Keep an eye on Abbas and Ahmed Bashir. What will be the first sign when they start to loosen up? It'll be a clue as to what the skipper wants to do. Nicely played. Beautifully timed. And the ball wins the race. Another boundary for Umar bin Yusuf. He's playing beautifully. Yeah, good at wrist. Beautiful. And what a way to earn runs. Tremendous. Risk-free. Have a look. Beauty. And you were just watching it carefully. Has it got enough legs to cross the fence? Yes, it does. Earning 4 runs. Good balance in that. He's been trying that stroke for quite a while. On that occasion, his balance was good. Saw the ball right onto the middle of his bat and that flick of the wrist. As unlikely as it may seem, but the contest is on, the chase is on. Sindh is giving it a fair go. Credit to them. Fourth day, page 241 for 4 is a real good effort. That onside field has been strengthened now. Square leg is in place. Mid wicket rather straight. So is the mid on. Just plugging that gap where that last ball went. Little bit of sea movement. Running is good. This is brewing into something special, Ijaz. Yes, exactly. Love these moments when bat and ball battle really on the peak. Really a wonderful cricket. You have to give credit to the players, to the coaching staff. The selectors, they have done a good job. They've been pushing them. That the young lot has been working hard to win the game. Salman Ali Agha a bit frustrated. Showing his frustration. One of the fielder wasn't listening to his call. Just now moved into mid-wicket. Left-hand, right-hand combination can give you headaches. Fast hands through the ball. Save your legs. Just little bit of width on offer and he threw the kitchen sink at that. Motoring along Sindh after tea. Yeah, the guys from the Sindh, they have been happy, laughing. You can see such kind of shots. The cricket at best.
Yeah, just making it so superbly. Timing and really a wonderful enough pace. 28 of 29, putting the pressure right back on ATF Southern Punjab. Third man rather wide, just to slip in a gully. Just back of a length into the pitch from Ilyas. Saad is making sure he makes use of every ball. This has been a magnificent partnership. Just 61 of 74 at a very, very good rate. Yes, really intelligent cricket from the both batters. They have earning runs, boundary, then a single. And almost since last 10 to 15 minutes, they've been playing tremendously well. After the boundary, they are looking for the singles. They've not been giving any sort of thing, which has been a big mistake for them. Through the gap. Once again, not where he intended, but the result is the same. This has been a big over for Sindh. 14 of the over already. Good one. Intentionally played. All along the carpet, getting into the boundary. 4 runs. Frustration, irritation. 250 up. 251 for 4. Umair is on 60, 205 deliveries. Saad giving a good company on 29. Looking around at the field, you see some anxiety there in the ATF Southern Punjab camp. Abbas, I think, is having a little word with Ilyas. He's leaked runs. He's been bowling wide, allowing the batsmen to free their arms. They've capitalized. Free-flowing drive. Runs are flowing for Sindh. 252 for 4. Healthy one. Still looking more healthier. If Umair bin Yusuf and Saad Khan will continue the way they are playing here. They've got a good partnership as Faisal was just grabbing 66 in 76 deliveries. 129 in a minimum of 31 overs. Just little more than 4 runs an over. That run rate was touching 4.5. Chance, another fumble. Pressure is on. ATF Southern Punjab is feeling the heat, and look at this dugout. Look at the excitement there. Imran Randhawa was the culprit on that occasion. Yes, they are feeling some sort of pressure there. The ball's been not properly picked. And I think so that dugout of Sindh, they're also feeling a bit of confidence among these two. They're batting in the centre. Extremely well played. Picked up the runs. That should be frustrating for Ali Usman. The fielders inside on one, they can't save the single. Must build frustration. This is what Ali Usman must be feeling. He just cannot string a few deliveries at the same batsman. Left hand, right hand combination. Well bowled. There you go. He had to flatten the trajectory. Very well done, Ali. You want to challenge that batter, throw the ball a little higher, but those rotation of strike hasn't allowed him to build a plan into any one of these batters. Well bowled, well bowled, well bowled. Batter now, I think the fielders, you could see them walking in with purpose now. Everybody knows in that Southern Punjab team that they're into a fight. Their opponents are not giving up. Well bowled, bache. Just lowered the arm, just flatter on that occasion from Ali Usman. Well, Umair bin Yusuf, what he has played here, well, looking on to the 50 highlight, he has played most of the shots towards offside.
So he's strong towards offside, that's why they are packing it. Easy single on that occasion. Good one from Ali Usman though, just 2 runs off the over. 255 for 4. Saad Khan 30 of 31, excellent strike rate. Once that wicket fell in the afternoon session for Quaid-e-Azam, I thought Sindh would just go into their shell and look to play out the remainder of the day. That hasn't been the case. 69 has been added in 82 deliveries. Randhawa, is he going to bowl from the far end? 77 overs bowled to Jazz, 3 overs to go for that new ball. Yeah, watching it eagerly. About the results, lots of things going on into the minds. How we can get a couple of wickets. Maybe we're getting some boundaries. Opponent way. That is magnificent. Cracking stroke there. Just with on offer once again. Got on top of it nicely. Umar bin Yusuf is playing a gem of a knock here. Yeah, this is extremely well played. Look at the beauty, just going behind the line and improvising it through the covers, empty spaces. He's earning more runs, more points there. And the confidence has gone high. The way he has played that shot. It's not just the runs, the quality of these strokes has been superb. Once again the boundary, followed by a single. ATF Southern Punjab desperately needs a wicket. They just can't wait for that new ball to come. Because then Abbas will have that new ball, and he is such a skillful bowler. You would fancy his chances, especially if these two are batting aggressively. He will offer some chances against that new ball. But ideally, ATF Southern Punjab wants a breakthrough before that new ball arrives with the new man at the crease. The target has reduced so quickly after tea. 121 now needed. Had a slice of luck, Saad Khan, along the way. You have to give him credit for his brave approach. Fearless. And he's reaped the rewards of that boldness so far. Yes, exactly. That ball was in favor of, I must say that luck has been in favor of the batter. And you're right. Already 6 runs in 3 deliveries. So the pressure is there on the bowler. Randhawa might be trying to save his next 3 deliveries, because it's now more about the deliveries left. Because sometimes that you might be looking toward boundaries, but here singles are most importantly done here in a beautiful way, like they are just stealing those runs. Either the fielders are in 30 yards nearby, they still are looking for singles, easily taking. So that's why the pressure is almost doubled. Salman Ali Agha must rue the fact that Umar bin Yusuf, flashing blade, will collect another run. Yeah, I was talking Salman Ali Agha must rue the fact that when these two were new at the crease, he allowed them those easy singles, especially to the left-hander against Ali Usman. That back point fielder had been kept back all the time. And we've seen this. This is the 3rd round of Quaid-e-Azam Trophy games here at Pindi. On this pitch, even the 4th day pitch, when the batters settle in, they're very hard to dislodge because of generally even bounce. They enjoy their stroke play. They can trust the bounce. They're most vulnerable when they come in new. It looks like ATF Southern Punjab are just on the defensive at the moment. 78 gone.
262 for 4. Just you can see the tension in ATF Southern Punjab team. There's a big conference going on in the middle. They've dispersed now. Senior pros got together. Just looking to see what options they can use. That silly midfielder has been sent back now. More on the defensive. There's only a slip catching. The rest of the fielders are saving one or on the boundary. Well, at this stage, when the confidence is high, hadn't seen those patches. Even those are not helping to the spinners. The patches, we did see that earlier on, the bowlers, the spinners in fact. They're trying to bowl in those areas. Well, it's the sort of thing that when things are not favoring you, not working for you, at that time the patches are not helpful. They will be if they keep one batter on strike, and that's the left-hander. If he's not allowed to rotate strike, keep him for the remaining of the 5 deliveries. Ali Usman is well capable of finding that rough and troubling Saad. But singles have continued to come. Single. You cannot build a plan against any batter if they keep rotating the strike. This is excellent from this pair of Sindh. Yes, you're right. They are not allowing the ball to spin. They are approaching to the pitch of the ball, playing it more early after pitching. So they've been more confident and productive. Oi, well bowled, yaar. Very well bowled. So sometimes you see that in the longer format, the spinner's importance. So let's see if they can break through over here at this stage. Well bowled, well Hassan. But credit should be given to the batters. They are not giving any sort of thing here, like the leakage of the wickets. They are playing on merit, shown respect to the bowlers sometimes, but they are playing their normal cricket. That's good run. Excellent run. This is superb cricket. Umar bin Yusuf couldn't rotate the strike on the previous 2 deliveries. He just went soft hands, nudged the ball into the gap. And look at the communication. Saad was ready. This is superb. Magnificent. Yes, exactly. Good contribution of these 2 batters. Good calling, positive one. Slightly wider on that occasion. That's the fielder that's been ever present for Saad Khan ever since he walked in. He was able to rotate quite comfortably. Just 3 of the over. 79 gone, 266 for 4. Shahzad, I was saying this to Ali earlier on as well. We're looking at this equation of 28 overs, 115. If you look at a one-day game, it seems quite simple. But this is 4-day game. It's not as simple as it looks. I can tell you that the minute a wicket falls and a new man is in the middle, this equation changes completely. We haven't seen the bowling side go on the defensive tactics just yet. Remember, there's no field restrictions. There's no circle. So defending becomes easier if the bowling team wants to. At the moment, the contest is very much on. And Sindh, you would think, have given themselves a magnificent chance of achieving an improbable victory. Yes, whenever the fielding is nearby like this, the covering nearby, the sticks, they're going through the boundaries. So whenever I was talking that the field is nearby, they are going through the boundaries, and as the field has been spread, they are taking singles.
This is really intelligent cricket. They are not in panic. Equation is favouring the batters. But, yes, left and right hand combination is also hammering a bit to the bowlers, to the fielders as well. Good call. Saad Khan is off the blocks in a flash. He was the one who called, and Umair bin Yusuf responded. This is brilliant from the youngsters from Sindh. Fresh blood, fresh legs. Wonderful cricket. Wow, this is wonderful. Look at that, soft call for the hard results for the opponent team. Well run between the wickets. Ball was not that far away, but confidence was high in the batting. But he's now thinking how we can take wicket, how we can break the partnership. He likes that shot. By now we know that even though he lost his wicket doing that in the first innings, but it hasn't perturbed him. Prepared to flick that ball off of the middle stump or even off stump sometimes. Mid-wicket gap has been plugged. There's no one in the deep on the onside, just the two fielders. He's bowling to a 7-2 field. Pretty predictable. His line has to be outside the off stump. They haven't been able to frustrate Saad Khan because the flow of the runs hasn't been stopped. If they can do it, they can induce an error from him. Yes, and there is nothing for the bowler like no seam moment, no swing. It's really easy for the batter to go through his shot. Onside, pretty open space. It looks easy, Jaz. I'm telling you, it's not easy. It is a very easy game to talk, very difficult game to play. Flashing blade once again, but the sweeper is there. Oh, little fumble. No damage done though. "80 overs bowled." We'll have to see if the new ball will be taken. Sindh 269 for 4, needing another 112 runs. सत्ताईस ओवर्स में 112 रन्स दरकार हैं। सिंध की टीम इस वक्त बिल्कुल ट्रैक पर है। साद ने उमैर का भरपूर साथ दिया है और दूसरी जानिब जो हिकमत अमली थी वो भी फील्ड पर सदर्न पंजाब के कप्तान की, उसने भी मदद की। इन दोनों बैट्समैनों की और इससे पहले फवाद आलम की भी फील्ड जिस तरह से खोल दी गई, आसानी के साथ रन्स मिलते रहे। लेकिन अब जो दूसरी नई गेंद है वो भी आने को है। सही मानों में जो सदर्न पंजाब का मौका है वापसी का इस मैच में, वो उसी पर मुनहसिर है। या और कोई चांस नज़र नहीं आ रहा इस वक्त सदर्न पंजाब का इस मैच में वापस आने का, सिवाय इसके कि और नए बॉल लें और उससे भी प्रेशर क्रिएट करें, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 70 रन पे खेल रहे हैं, 74 रन पे, और साद उनको बहुत अच्छा उनका साथ दे रहे हैं। दोनों की पार्टनरशिप जो है उनको मैच विनिंग पोजीशन में ले आई है। अच्छा खेले स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों को, और ये पंच कर दिया बैकफुट पर। एक और चौका। एक बार फिर जो टाइमिंग थी वो जाज़बे नज़र उमैर बिन यूसुफ की, उन्होंने 12वां चौका लगाया।
यह बहुत अच्छा शॉट, मिड ऑन का फील्डर ऊपर था और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गैप में खेले, बहुत अच्छी तरह टाइम किया और 4 रन हासिल किए। हर रन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से। 107 रन की दूरी में सिंध की टीम। ये मां सिवाय कट शॉट के ये बाकी ठीक है गुजर। जब भी ये विकेट के सामने खेलते हैं हमेशा गेंद को टाइम करते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ भी इस आखिरी दिन की निस्बतन सुस्त पिच पर दाग दिया इसे 1 रन के लिए उमैर बिन यूसुफ ने। तो अब 26 ओवर्स बाकी रह गए। नई गेंद लेने में अब ज्यादा करनी नहीं चाहिए। 276 पर 4। पूरे 4 की एवरेज है और मेरे ख्याल से जिस तरह खेल रहे हैं उस तरह मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन नया बॉल जो है शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है साउदर्न पंजाब की टीम और मशवरा भी हो रहा होगा और डेफिनेटली उनको लेना चाहिए नया बॉल इस वक्त। यहाँ ये नई गेंद का ही शायद इंतज़ार किया जा रहा है और इस पर मोहम्मद अब्बास यकीनी तौर पर वो कार्रवाई का हिस्सा बनेगी। और दूसरी जानिब सऊद शकील जो हैं ये बाहर एक तख्ती रख के बैठे हुए हैं अपने सामने, शायद उस पर वो टीम को जो दिए जाने वाले पैगामात हैं और जो आज के दिन की मंसूबाबंदी है वो की गई है कि मरहलावार किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी तक तो ये पुरानी गेंद ही है कप्तान के हाथ में, लेकिन मोहम्मद अब्बास जो है अपने रन अप पे जा रहे हैं और लगता है कि अब पहुंच गई है जो दूसरी नई गेंद है। शायद एक आध गेंद का इंतज़ार किया जाएगा कि अब्बास वार्म अप हो जाएं और उसके बाद ये नई गेंद से बॉलिंग करते हुए नजर आए। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी देर बाद अब्बास वापस आ रहे हैं बॉलिंग के लिए और ये जो है एक डिफाइनिंग मोमेंट है मेरे ख्याल से इस मैच का। अब्बास का जो स्पेल है बड़ा क्रूशियल है, या गेम इस तरफ जाएगी या गेम उस तरफ जाएगी। यहाँ से तारिक भाई आपको क्या लगता है ड्रॉ होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ड्रॉ होगा। या अगर रोशनी जो है ये मुख्तिल नहीं होती तो फिर तो मैच का नतीजा आना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये दोनों बैट्समैन खेलते जा रहे हैं, क्योंकि नई गेंद पर एक बात यकीनी है कि अगर विकेटें नहीं मिलती तो फिर रन्स तेज़ से बनेंगे और आज पुरानी गेंद पर भी रन्स जो है वो दरिया दिली दिखाई कप्तान ने देने में। विकेट के दोनों जानिब रन्स जो हैं कंसीड वो करते रहे। इमरान रंधावा से भी ज़रूरत से ज़्यादा बॉलिंग कराई गई। शायद समझने की ज़रूरत थी कि वो सपोर्ट कास्ट वाले बॉलर हैं, आप बहुत ज़्यादा उन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। 11 ओवर्स में 49 रन उन्होंने दे दिए। जब उन्होंने ब्रेक थ्रू दे दिया था तो उसके बाद आपको अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी तरफ ही देखना चाहिए था। मोहम्मद साद ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है आज। आजा मुझे दे। और ये रन आउट होने का खतरा है और लगता है पहुंच गए थे। अब बॉल पहले स्टंप्स को हाथ लग गया था। यहाँ मकबूल हैं, ये बड़ी अच्छी कोशिश की उन्होंने, थ्रो फेंकी जो तकरीबन लगता था कि हदफ पे आ रही है। देखिए ऐसा से जा रहे थे, रन का कोई इरादा नहीं था उमैर बिन यूसुफ का, और अचानक ये मूड बड़े इन्हें देखे बगैर ही अपने पार्टनर को ये आगे आ गए और गेंद हाथ लगी नहीं मोहम्मद अब्बास के।
जो एक चांस क्रिएट हुआ, इस तरह की गलती से इज्तनाब करना पड़ेगा सिंध के बैट्समैनों को। इस वक्त सिचुएशन इनके कंट्रोल में है, नए बॉल को अच्छा खेल जाएं अगर तो मैच को बआसानी जीत सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई गलती इनको फिर मैच जीतने से दूर ले जा सकती है। देखिए ये वो तख्ती सामने रखी हुई कप्तान ने, जिस पर उन्होंने अपने पैगाम दर्ज किए हुए हैं। और ये टीम जिस तरह आज पॉजिटिव नज़र आई है नेशनल T20 कप, इससे पहले इन्होंने इसी अंदाज से खेलते हुए जीता था, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। वरना बआसानी वो ड्रॉ के लिए जा सकते थे आज सुबह जिस वक्त साइम अयूब आउट हुए। जी हाँ बिल्कुल, और साइम अयूब का इसमें बहुत बड़ा मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया और जो इनिंग्स वो खेल के गए, जो फाउंडेशन उन्होंने सेट की, नया बॉल ले लिया गया है और पहला बॉल बहुत बाहर किया, तो वहाँ से इनका एक मोमेंटम जो है बिल्ड अप हुआ। और जो ड्रेसिंग रूम में जितने भी बैट्समैन बैठे थे उनको ये बिलीव हुआ कि हम ये मैच जीत सकते हैं। सिर्फ एक अच्छी इनिंग, एक पॉजिटिव इंटेंट से इतना फ़र्क पड़ता है टीम की परफॉर्मेंस पे। मैं समझता हूँ कि साइम अयूब को क्रेडिट देना होगा यहाँ पे। और इसके बाद उमैर बिन यूसुफ, दोनों यंगस्टर्स हैं और दोनों ने T20 में बहुत अच्छी बैटिंग की, सिंध के लिए उनकी जीत में एक अहम किरदार अदा किया। साइड में खेला, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं वापस और ये पहुंच भी गए। साथ विकेटों के दरमियान अपनी फुर्ती दिखा रहे हैं। सिंध की टीम ने फुर्ती दिखाई है इस मैच में। हमने देखा पहले तीनों दिन वो शदीद दबाव में रहे, लेकिन आज चौथे दिन जब वार करने का मौका था तो पीछे बिल्कुल नहीं हटे, सीना तान कर उनने मुकाबला किया। एक अग्रेशन नज़र आया विकेटों के दरमियान, दौड़ में भी, बैटिंग के साथ साथ। और ये भी जो बैटिंग अग्रेशन होता है उसी का हिस्सा होता है। जी हाँ बिल्कुल, और ये पूरी इनकी इंटेंट है। जब आपके जहन में ये हो कि हमने जीतना है, अच्छा शॉट, तो फिर आपकी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। और इख्तिताम पजीर हुआ 280 पे 4। सिंध ने इससे पहले ये बनाए हुए हैं 429 रन बनाकर उन्होंने मैच जीता हुआ है PIA के खिलाफ न्याज स्टेडियम हैदराबाद में 1973 में। ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त तो इनमें से कोई खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुआ होगा। ये साद और उमैर में से अहमद बशीर अब वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस वक्त मीडिया सेंटर एंड से। आज जिनने अपना जो स्पेल खाने के वक्फे के बाद किया वो अच्छा था पवेलियन एंड से। जी हाँ बिल्कुल, अहमद बशीर को लाया गया। जो सबसे हाईएस्ट जो चेज़ हुआ है वो 441 चेज़ हुआ है। फैसलाबाद वुल्व्स ने किया सियालकोट स्टैलियंस के अगेंस्ट 2014-15 में। और अगर आज सिंध की टीम 381 रन करती है तो 4th हाईएस्ट हो जाएंगे। या 374 का जो हदफ है ये पेशावर की टीम ने भी हासिल किया हुआ है 2018 में इस्लामाबाद के खिलाफ। और ये आप देख सकते हैं कि 350 से ज़्यादा का जो हदफ है ये कम ही ये रन चेज़ हुए हैं
आसान नहीं होता पाकिस्तानी पिचेस पर चौथी इनिंग्स में आकर रन्स बनाना। लेकिन जब से ये नए निज़ाम का आगाज़ हुआ है ये सबसे बड़ा रन चेज़ होगा। जी हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी इलामत है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है जब 4 डे मैच में भी इस तरह का जब आपको सनसनी मिलती है तो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है गेम में, वरना ड्रॉ के लिए जब खेलते हैं तो वो एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच लगती है। या जब आपकी सोच बुलंद होती है तो आप शहंशाह होते हैं, और हो सकता है कि सिंध की टीम जो है ये मैच ये यहाँ से भी ये हार जाए या ड्रॉ हो जाए, लेकिन जो सोच उन्होंने दिखाई है स्पेशलिस्ट बैट्समैनों ने, उसकी दाद मिलनी चाहिए इनके ड्रेसिंग रूम को और इनके कप्तान को। ये देखिए 400 जो 41 का हदफ फैसलाबाद वुल्व्स ने हासिल किया था और 429 दूसरा बड़ा स्कोर है। सिंध की वो टीम थी जिसमें जाहिर है कि उस ज़माने में आफ्ताब बलोच भी खेला करते थे, ये बहुत बड़े बैट्समैन थे, बाद में PIA के लिए भी खेलते रहे। उन्होंने 428 रन की इनिंग्स भी खेली थी और अच्छी डिलीवरी, ये नई गेंद की अलामत है, इसमें बॉलर को भी मौका मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, जूं जूं मैच आगे बढ़ रहा है तो सिंध के लिए जो जीतने के चांसेस ज़्यादा है और ड्रॉ होने के चांसेस कम है और हारने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। तो ये जो उनकी मेहनत है, जूं जूं ये गेम फिनिश की तरफ जाएगी तो वो और भी रिलैक्स फील करेंगे। ये सारी उनकी मेहनत है जो जिस मेहनत से उन्होंने बैटिंग की शुरू में। यहाँ से जो टीम इंतज़ामिया ये भी खुश है। सुहेल मज़हर नकवी ये टीम मैनेजर हैं सिंध के, मीर हमजा ने अभी तक बैट नहीं की हुए। ये बहुत ज़्यादा फाइन निकल जाएगी, 4 रन और मिलेंगे लेग बाई के। नई गेंद पर जो है ये बैट से गेंद टकराई थी, विकेट कीपर ने कोशिश ज़रूर की लेकिन गेंद उनसे आखिर में दूर निकल गई, वाइड ऑफ द क्रीज। बहुत ज़्यादा चले गए थे। जी इनकी बैटिंग में है ये चीज़, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं एट टाइम्स, इनको पता नहीं होता कि ये बॉल बीच में है या लेग स्टंप पे है, तो बीच के बॉल को ये जिस तरह हमने पहली इनिंग्स में देखा लेग बिफोर हुए, तो ये एक चांस है बॉलर के पास, अगर यहाँ से अच्छा बॉल इन्हें करें तो विकेट भी मिल सकती है। और शानदार बॉलिंग, आज लेफ्ट हैंडर को मुसलसल परेशान रखा है अहमद ने। अच्छी इब्तिदा की उन्होंने इस नई कुकाबरा के साथ, 285 पर 4। यकीनन मोहम्मद उमर जो है वो मीर हमजा से पहले आज आएंगे अगर उनकी बैटिंग आती है तो। मोहम्मद उमर ने जिस तरह की बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में, तो डेफिनेटली वो क्रेडिट है उनको इस चीज़ का। ये साउथ पंजाब का ड्रेसिंग रूम, शाहिद अनवर और बाकी मैनेजमेंट जो इस वक्त सोचने पे मजबूर हो गई है कि किस तरह इस मैच में दोबारा वापसी की जाए। उमर बिन यूसुफ के करियर में ये एक नया मोड़ साबित हो सकता है अगर आज वो अपनी टीम को ये लकीर से आगे ले जाने में कामयाब हुए। सरफराज अहमद ने पैड किए हुए हैं, ये आप पस मंजर में देख सकते हैं, लेकिन मोहम्मद उमर जो हैं इन्होंने भी अभी पैड नहीं किए हुए। इससे जाहिर होता है कितना एतमाद है उन्हें उमर साथ पे, क्योंकि कई बैट्समैन जो हैं ये पसंद नहीं करते, ख़ास तौर पर जो ओपनर्स होते हैं, बाज़ ओपनर्स को ये पसंद नहीं होता कि अगर वो अंदर खेल रहे हैं और नंबर 4 ने पहले ही पैड कर लिए हैं। तो उससे नफसियाती तौर पर कई बार उससे लगता है कि शायद ये मेरे पे अदम एतमाद है।
भागूंगा ही नहीं। बड़ी आपने अंदर की बात की है तारिक भाई। और जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन आजकल की क्रिकेट में ज़्यादा यही है कि आप अंदर से बाहर की तरफ मैसेज भिजवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि इसके कि आप बाहर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखें। आप अंदर हैं, आपके हाथ में सारा कुछ है, आपने गेम को फिनिश करना है, आपने यहाँ से कंट्रोल करनी है गेम। जिस तरह साद और उमैर खेल रहे हैं और बोल्ड हो गए मोहम्मद अब्बास। उन्होंने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और दूसरी नई गेंद पर उन्होंने इस पार्टनरशिप का खात्मा कर दिया। 100 रन्स की ये शराकत थी जो सिंध की टीम को ये करीब ले आई थी इस हदफ के। 44 रन बनाए। साथ में रूम के लिए क्रैम्प हो गए, कट करने के लिए गए, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा करीब थी उनके। जी हाँ बिल्कुल, ये शॉट बिल्कुल ऑन नहीं था इस बॉल पे, इनको आगे ही खेलना चाहिए था। अगले बॉल पे थोड़ा सा हमने पिछले ओवर में देखा परेशान हो रहे थे, इनको बिल्कुल अपनी ऑफ स्टंप का आइडिया नहीं था। तो एक अच्छी इनिंग खेली इन्होंने, इफेक्टिव इनिंग खेली अपने मैच अपनी टीम के लिए। 44 रन किए, 286 पे 5। आ जाओ बैट्समैन। ये सिंध के और पाकिस्तान के ये फॉर्मर कैप्टन हैं सरफराज अहमद। जल्दी आ जाओ। ये अब पहुंचे हैं यहाँ महाज पे, जो कि खासा गर्म है। 5 विकेटें बाकी हैं, 95 रन की ज़रूरत है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है। 213 इनका बेहतरीन स्कोर है, लेकिन इनसे टीम को ज़रूरत होगी कि ये जो इनकी औसत है ये बरकरार रहे। 40.43 की अगर ये बरकरार रही तो फिर सिंध की टीम जीत जाएगी। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और सही बात की आपने। सिर्फ यही रन्स करने हैं इस मैच को जीतने के लिए सिंध के लिए। और जब टीमें मुश्किल में होती हैं तो अपने बड़े खिलाड़ियों की तरफ देखती हैं। मोहम्मद अब्बास की जानिब सदर्न पंजाब ने देखा विकेट के लिए, उनने कर दिखाया। वो लेफ्ट हैंडर के लिए ये वबाल बन जाते हैं, खासतौर पर नई गेंद पे। जी हाँ अब्बास, बहुत अच्छी बॉलिंग इनकी, और अब यकीनी तौर पर साउदर्न पंजाब इनकी तरफ देख रही होगी। अगर साउदर्न पंजाब ने मैच जीतना है तो इन्हीं को विकेट्स लेनी है। अहमद बशीर भी अच्छे बॉलर हैं, वो भी विकेट टेकर हैं, लेकिन जो अब्बास के पास तजर्बा है और जो महारत है वो शायद उनके पास नहीं। हेलमेट मैदान में मंगवा लिया गया है। विकेट कीपर जो हैं ये सरफराज के सर पर अब आ खड़े होंगे, क्योंकि उनको कदमों का इस्तेमाल करना आता है सरफराज अहमद को। तो इनकी जो कदमों की जो इस वक्त मूवमेंट है उसको महदूद रखना चाहते हैं मोहम्मद अब्बास। लॉन्ग लेग पर फील्डर को लाया गया फाइन लेग से। और ये किनारा लगा था, लेकिन विकेट कीपर के पैड से लगी गेंद। यहाँ बीट हुए सरफराज। आगे का बॉल था, थोड़ा लेट आए, थोड़ी सी फुर्ती दिखानी पड़ेगी सरफराज को। लेकिन ये अगर पीछे होते तो देखना है कि जो है क्या इनका कैरी होती। लेकिन हो सकता है कि उस सूरत में सरफराज से आगे बढ़कर एतमाद से खेल लेते इस गेंद को। स्लिप में एक और इजाफा किया गया है।
बस ओपन अप हुए सरफराज अहमद। मोहम्मद अब्बास का एक और बड़ा ही उम्दा ओवर कामयाब रहा, अहम विकेट उन्होंने गिराई 286 पे 5। अहमद बशीर बॉलर उमर बिन यूसुफ ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये देखिए कितनी एक एनर्जी आ गई है। वो जो शाने गिरते जा रहे थे, आवाज़ें कम पड़ गई थी मैदान पर, सिर्फ बैट्समैनों के दौड़ने की जो आवाज़ें थी वो सुनाई दे रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद ये दोबारा से जोर लगने लगा। जी हाँ बिल्कुल, ये मैच किसी तरफ भी जा सकता है। अब साउदर्न पंजाब ने जो विकेट लिए तो इनमें बाकी एनर्जी आ गई है और बिलीव, ये भी बिलीव करना शुरू कर दिया इन्होंने कि हम भी ये मैच जीत सकते हैं। काफ़ी नीचे रह रहा है इस एंड से बॉल, प्रीवियसली भी हमने देखा। ये कोई इतना अच्छा बॉल नहीं था, इनको जगह पे बॉल करने पड़ेंगे अगर यहाँ से इन्होंने इस प्रेशर को कैरी ऑन रखना है तो। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो बेहतरीन जरिया है विकेट लेने का वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड है इस आखिरी सेशन में मुकाबले के। और आज भी जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो इसी तरह से ही आउट हुए, इसलिए स्टंप्स के आसपास और पैड्स के आसपास अहमद बशीर को रहना होगा। सरफराज अहमद ने बहुत गहरा सांस लिया है, क्योंकि जानते हैं टीम दबाव में है और मुश्किल मरहला है। उमर बिन यूसुफ दूसरी जानिब अच्छा खेल रहे हैं। सरफराज अहमद अगर इनका साथ देते हैं और ये ज़रा सी अगर पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, ये 15 से 20 रन की होगी, तो दबाव वापस दूसरी तरफ चला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह उमर बिन यूसुफ अभी 83 रन पे खेल रहे हैं, यहाँ से अपना 100 करते हैं तो उसके बाद एकदम मोमेंटम जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और शायद साउदर्न पंजाब, ATF साउदर्न पंजाब के शोल्डर्स गिरना शुरू हो जाएं उसके बाद। तो इनके 100 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सिंध ने मैच जीतना है तो। इस बाजी का फैसला कुन मोड़ आ पहुंचा है। लेकिन बहुत ही मुतासिर कुन इनिंग्स है ये उमर बिन यूसुफ की, एक अच्छे मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ और मुश्किल हालात में जो आप रन्स बनाते हैं ये हमेशा इनकी अहमियत होती है। जो सेलेक्टर्स होते हैं वो भी ऐसे रन्स को ज़्यादा कदर की नज़र से देखते हैं। इन्होंने अभी जो कौमी T20 था वहाँ पर भी चंद अच्छी इनिंग्स खेली थी, मैच विनिंग इनिंग्स मिडिल ऑर्डर में आकर उमर बिन यूसुफ ने। उम्दा टेक्निक है, फास्ट बॉलर पर हर तरह के शॉट्स हैं इनके पास। ऑफ साइड में 289 पे 5। ये तीसरे राउंड का ये पहला नतीजा आ गया है यहाँ एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम
में नॉर्दर्न की टीम ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इस तरह 3 में से 2 मैचों का फैसला हुआ है अब्टाबाद की पिच पे, और मैच जो है पहली इनिंग्स में 520 रन नॉर्दर्न ने बनाए थे, उसके बाद एक तरफा हो गया और 10 विकेटों से ही नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को भी हराया था इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। इस तरह ये वह टीम है जिसने 2 फतुहात हासिल किए हैं इस साल नॉर्दर्न ने। मैं तो लड़ूंगा, मुझे वैसे चांस मिलता ही नहीं है। बाहर खेलने पड़ते हैं लड़के। "92 runs to win for Sindh, and this new ball has created some waves. 1 wicket gone Saad Khan, courtesy to this man Abbas. Got the 2nd wicket this inning. Just wonderful game of cricket, I have to say this. It's been exciting all throughout these 3.5 days, and this last hour or so getting very, very intense. Sindh is not giving it away. They're hanging in there. Shah Faisal just doesn't get any better than this. There's a different energy now. This is what wickets do. Just the 1 wicket. But yeah, you're right. What a game. Usman Salahuddin in the gully. Both these teams have put in a lot of hard work over those 3.5 days. And definitely, it's all come down to this last session. So they don't want to give an inch. We've seen some intense cricket. Cricket of the highest order. The quality, the competition, the contest between bat and ball. You could not have asked for a better game of cricket. Umair bin Yusuf have played an excellent inning here for his team. It's not done yet. Ideally, he would want to win it for Sindh. He's in a position to do it. He has to have that partner with him to score a few boundaries here or there. He would need Sarfraz to do it. It's very clever from Abbas and Salman Ali Agha. Every time Sarfraz comes to bat, they bring the keeper up to the stumps because Sarfraz likes using his feet against Abbas, likes to get to the pitch of the ball. Nice helmet used for baseball. He's using it in cricket. Maqbool. Balled him! That is a beautiful delivery, that in-swinger by Abbas, getting the best of Sarfraz Ahmed. A huge wicket in the context of the game. An absolute peach from Muhammad Abbas. The in-swinger swung in the air and hit the seam, went along and knocked the stumps back. Sarfraz had no answers. Look at that. What a huge in-dipper that was. The gap was created and Sarfraz could only watch. When he heard the death rattle, he knew the damage had been done. Gone for 1. Southern Punjab back in the game, 290 for 6. The smile is gone as players take drinks.
Abbas getting 2 crucial wickets with the new ball, Saad Khan and now Sarfaraz Ahmed. Brilliant spell of bowling by him, and that was expected. We all were talking about when the new ball comes, it will do something. And he has done wonders for Southern Punjab. Those 2 important wickets. At one point we all thought that Sindh might create some history here. This was the first one. Dragged it on. Saad Khan too close to cut, and this one that seamed in after hitting the seam. That was a brilliant delivery by Abbas. 3 wickets for the experienced seamer, 3 for 46, but those last 2 were really telling blows. That one of Sarfaraz was an absolute beauty. And only Abbas can produce those deliveries. Sindh need 91 runs to win. In the remainder of 21.1 overs is a minimum of that. The hero from the first inning. It's doing a bit. Situation is completely different though. In the first innings, he was batting against an old ball. His team was down and out. So he came out with the license. He just threw the bat at everything. Here, his role is different. He got a single off the last delivery. He will face the next over as well. 291 for 6. Mohammad Umar played a cameo in the first inning. Can he repeat the performance? That's the question here. Wonderful delivery. Just left him after pitching. Confusion, pressure definitely on the batters. Definitely. Like I said, the role was different. This time it's angling in, seaming away. The brand new ball will create difficulty for the lower order batters. I think it would be better if Umair bin Yusuf start to take most of this strike. It could come down to an end very, very quickly the way ball is reacting off the pitch, especially that new ball. That is some cricket. Every delivery. We're hoping that some action is coming. Over here again. And let's have a look at the last wicket. After pitching, after hitting the seam, came in, no clue. A similar sort of shot was attempted last time when Sarfaraz lost his wicket. And it was very clever, smart captaincy. Brought the wicketkeeper in, minimized the movement of Sarfaraz. That's experience for you, Mohammad Abbas. 3 wickets for him. Uh-oh. Confusion, pressure. Would you want Mohammad Umar to change his approach? Or you just maybe just give him a go? Just go out there? Play like what he did in the first inning? Or you would just go for a draw here? What do you think? Come on. I don't think he's got the defensive technique. Look at this dressing room. It's all changed in the space of just few overs. They were excited. They were really, really animated. But this man has really changed this whole thing. You're talking about Umar. Does he have the ability to hang in there? You doubt it. But it will take a brave man to swing the bat like he did in the first innings. I'm not quite sure. And this, what I'm looking at Umar, the way I see him, I think he's not sure what to do. And that indecision may just cost him his wicket. Yeah, that's my concern also. He's naturally a big hitter. Look at those faces. They're tense. They can feel the heat now of this new ball. This camp is relatively satisfied, calm. But still, they know that the job is not done yet. They still need 4 wickets. Can they do it? Ahmed Bashir is getting the ball to seam away.
The equation will become very simple if they get rid of Umar bin Yusuf. Look, this changing room, everybody is sitting on the same place. You notice that? Nobody's moving. But there's a calmness on faces. That's the difference. If you look at Sindh's camp, there's a difference. The faces are tense because they hold the upper hand at the moment still. They just acquired 4 good deliveries. On the other hand, Sindh need 89 runs. That's a lot of runs. They've got about an hour and 15 minutes to go. The chances of victory has diminished for Sindh with those 2 wickets. Once again, ATF Southern Punjab is favourite to win. Draw is the second favourite. And still an outside chance for Sindh. But it will be close to a miracle from here on in. 292 for 6, Sindh. How well Umar bin Yusuf has played. The conditions were not easy. 4th day pitch, 85 at the moment. Would really want him to get to 100 because he's played that well that he deserves the 100. 89 more runs. Abbas to Umar. Good fielding. They're driving themselves around. They're just throwing themselves around. Smiles are back. After 5 overs, the 15 overs for the last hour will begin. And if you look at the clock, it's 4:13 right now. We've seen the game go along, stretch along to 5:15, 5:20. Just about an hour and 5 minutes to go for Southern Punjab to force the result. 2 slips and a gully for Abbas. He's not even trying to attempt to Abbas. That's a sensible way of doing it. That's, you can afford it because you don't want to be giving any wicket to Abbas anymore. You say what, 15 overs minimum to 18 overs? How about they play with this same approach for 8 overs and then for the last 8 overs they go after them? No? Don't agree? No, sir. You don't want to create some scenes here in the end? Well, Sindh has put a lot of hard work into it. They won't want to lose the match outright. Sharp one. Good delivery and well kept too by the wicketkeeper. So handy to have an experienced man like Abbas on these situations when you need to have someone with good nerves, calm nerves. That is where he comes in so handy. And he's so calm under pressure. And once again, the importance of a regular wicketkeeper. You see that ball, how it swerved after it passed the batters, completely changed direction. Good glove work from Maqbool. Was a cross-seam delivery from Abbas. He's bringing in all his variations. Solid. So there's no way, you mean to say? I don't think Sindh are going for it now. No hope? No hope. Their only hope is to secure a draw and earn 5 points for the draw. Come on, Sindh. Prove this man on my left wrong. Go for it. Umar has the potential. He's scored a 50, quick 50 in the first game. Just need to repeat that performance. Easier said than done. It's a very easy game to talk, a very difficult game to play. Swung in. It's so interesting, so intriguing, this game. We still don't know which way it's going. Still all 3 results possible. Technically, yes, I agree. But my friend on my left doesn't agree the third one. That's Sindh winning it. Well, they are possible, but it's improbable. That big in-swinger there from Abbas, testing Umar. But this hard-fought draw as well, if Sindh hangs on to it, we're guaranteed for some exhilarating cricket, some really tough cricket, and the battle will be intense, make no mistake. Pulled nicely into the gap. Should look to get 2. No, he's settled in for 1. Last ball of the over.
Probably the last delivery of the over. He wants to face Ahmed Bashir. It's end of another Abbas over. It's 294 for 6 after 88. Sindh need 87 runs to win. More appropriately, ATF Southern Punjab need 4 wickets to win this game. Saima, you played quite beautifully, but Abbas's spell has turned the game on its head in the last half an hour. This is a riveting contest. It's one of the very best of first-class cricket that you ever wish to see. If you are a real cricket fan, leave everything and go to PCB YouTube channel for this exciting game of cricket. Still not done yet. Now 87 runs required for Sindh. Umar bin Yusuf is looking very solid. 86 of 141 runs, 41 deliveries. Deserves 100. They've set up that field, that short point. Well, that last ball also went in the air, but didn't carry to that fielder. They want Umar to play that drive slightly away from the body with the newer ball. That's that fielder, just in front of square. There's protection there. A lot was expected of Sarfraz that he will come and play that cameo inning. Didn't happen for him. He was so disappointed, but he was brilliantly bowled by Abbas. I think that was the moment they probably thought that, okay, no more try. Yeah, if Sarfraz was here, like we said earlier, he's a busy cricketer. He would have rotated the strike, experience against the new ball as well. And that would have taken the chase deep down. And if Umar had come with 30, 40 runs to go, he probably would have swung. But 90, 88, 86, bit too many. 2 slips and a gully for Umar. Good delivery. Attacking the pads. That is the right way of doing it. Very sensible, very good bowling by Ahmed Bashir. And let me tell you, there's a huge role of Abbas in these conditions, in these bowlings, helping these youngsters bowl at crucial points. This is a pressure situation. He's led by front, led by example, got 3 wickets in this inning. Excellent cricketer. Just wondering if they can make a quick change and bring Ilyas for an over or 2. He's a little quicker with that new ball. Hurry the lower order. That's 4. Wasted effort. Precious runs given. Effort delivery went all wrong. There was swing, but it was misdirected, even out of the reach of Maqbool, who was diving desperately to his left. Runs are not of any consequence, in my opinion, at this stage. But another dot ball negotiated. He's done well, Maqbool. It all changed when he came in. Look at the fielding change. There's a short extra cover in place. There's mid-wicket in place for Umar. Brilliant. That is top-class cricket from both. He's just managing to keep these balls out. You won't find this in any coaching manual, but Umar has his own way. Have a look. Just watch the ball. You can give him credit for that. That footwork, just ignore that. Brilliant bowling by Ahmed also. Balls in with an angle. Sometimes it straightens, sometimes it leaves the batter. That is the area of uncertainty. Again, brilliant by Umar. He's playing like a proper batter. This is what runs do. Scored a 50 in the first inning. 299 for 6. He's trying. Come on, आखिरी 8 ओवर में चांस लेंगे. आखिरी 8 ओवर में चांस लेंगे. उमर चांस लेगा. मैं आपको बता रहा हूँ.
Although you might not agree, most people don't. We can hear somebody also not agreeing with us, with me especially, but I still believe that Umar is going to go after, especially when last 8 or 9 overs are left. He's gonna swing. I'm telling you that. It's not going to happen, Ali. Okay, we'll wait and see. Yep. We watch Ilyas though. Bowling change. That's what we wanted. Bit of an extra pace. But I wanted him in place of Ahmed Bashir because this is the end. He got all the wickets in the first innings. But he's replaced Abbas instead. Probably they've decided to rotate the 3 seamers for the remainder of the game. Was in the air for a bit. Was in the air for a bit. Yeah, he got him excited. Ilyas is a wonderful character. He's making the ball talks straight away. He's into action. Ilyas was the one bowler in the morning who was able to swing the ball in the air. Just went through with the shot for a little longer, Umair, that allowed the ball to go past Ilyas and just died down before it reached Abbas. This is plenty of drama still in store. Hold your breath, folks. Beautiful. That is extraordinary. That is excellent shot by Umar bin Yusuf. Through extra cover region for a 4th as he moves on to 91. You won't see a better cover drive than this all day long. Umar bin Yusuf has been exquisite. Nice stride. Weight coming into the shot. Full flourish of the bat. Beautiful to watch. He's been really expensive, Ilyas, in the second inning. 58 runs he's given because he likes to pitch the ball up to the batter, make him play that attacking line and length. Yes! No! I thought he's given it. You see that right hand coming up, and I thought the finger was going up. But I think he pointed at, he got a little tickle to it. Have a close look here. That in-swinger was sliding down. Look at Maqbool. He was expecting the ball down the leg side. Look at those. That right hand go up for a minute and then not to be. Got me excited for sure. I thought he's given it. Ilyas steaming in. This protection, they should look to get 2. They will quite easily do it in the end. 93 he moves on to. You're talking about Ilyas being expensive. He's bowled the attacking lengths. Now at this late stage, like I said, runs are pretty much inconsequential. So he's still looking for that wicket. You two are speaking too soon. Look at that. He'll always pitch the ball up to the batter, make him drive. He's been successful in the first inning. That is why probably he's been underbowled in the second inning, because of his line and length. Being so attacking. And 60 runs coming off him on the expensive side. Oh, that's good fielding. Very good work by Ilyas himself. Certainly saving 4 runs for his team. Yeah, like I said, this battle is intense and it's more and more of it. Ilyas giving it his all, like he always does. Persisting with that fuller length. But look at how beautifully Umar bin Yusuf has played it. Full face of the bat. Again, there is protection, just 1 run. That fielder is quite in the middle, not even in the circle and not even at the boundary. 1 run to end the over. It's 306 for 6, Sid. So technically we have 17 overs to go. 75 runs to get, 4 wickets to get for Southern Punjab. Just didn't get any closer than this. An excellent game of cricket.
Umar bin Yusuf nearing his 6th first class 100. He deserves this one. I think this one will go right up there as far as the quality is concerned. Now that's why this fielder is placed there, because he plays that back foot punches and that goes straight into that hands of the fielder. Splendid fielding. That was really struck sweetly by Umar bin Yusuf. Look at that smile on his face. Right off the middle of the bat. Riding the bounce. Excellent. Either side of the fielder, it would have been rocketed towards the boundary. That is why the smile was there. It was more of sarcasm. Umar bin Yusuf, top innings. And now that the fielder is just pushed back a little bit, single is available. That's Southern Punjab won't mind it. They would want to bowl maximum deliveries to Umar until he finds his middle and start hitting, start swinging. You don't agree? Ali, you keep asking for it. And I've told you, it's not going to happen. The best that Umar can do is to survive and earn his side a draw. I still believe in him. I still believe in his capabilities, his potential, his skills to go big. Just needs a signal from the camp. Straight, straight. No, bat again, surviving. Mohammad Umar. Big in swinger. Umar just hanging in by the thread. Look at that, just got a little inside edge. Or did he? But that angle was also quite big. Umpire called it inside edge. We heard two noises on live instance, but that angle really wasn't inconclusive. Well played. Okay, let's have a look at that LBW shout one more time. Asif Yaqub was very certain that he has hit it. He just couldn't find any edge. Look at that. I couldn't hear anything. Probably also Umar is suggesting that he's hit it. And also you look at Ahmed Bashir, he aborted the appeal. He just left the appeal halfway. Not a lot going for that appeal. It was close, but not close enough. Good decision, Asif Yaqub. Edged, gone. Second slip. Salman Ali Agha making no mistake. It's a good wicket. The dream of winning the match for Sindh side is over. He couldn't stay till the eighth over. Beautiful setup there from Ahmed Bashir. He bowled a couple of good in swingers. And this one was just wobbling in the air, a little bit of a way swing. Umar got the edge. Squared up, Salman Ali Agha pouches it safely. An important catch under pressure. The skipper has done it very, very nicely. Umar's vigil has come to an end. He lasted 16 deliveries. Sindh, 307 for 7. Mir Hamza walks in, and now we can surely say that the last hope that I was hoping that Mohammad Umar might swing his bat is over. I feel for you, Ali. I told you it was not going to happen. His know. best chance was survival. He lost his 16 deliveries. That's all you can ask from a later order batter in this tense situation. Imagine out of those 16 deliveries, he had a few boundaries that would have made the bowler change the line, because you let him bowl there
You were not even trying for any runs. You were just hanging in there, just putting the bat in front. It was supposed to happen. He's got limited ability with the bat. That's why he's batting lower in the order. He had 8 runs before he came to this match. 150, without a pressure, with a license, he was swinging the bat. It worked for him. It's not going to work all the time. No, I'm still not convinced. Last delivery. Well dug out. It's all Southern Punjab at the moment. 307 for 7. Sindh need 74 runs to win. सोलह ओवर्स का खेल अभी भी बाकी है और 74 रन बनाना है। ये 5 से कम की औसत है, लेकिन इस वक्त उमैर जो हैं इनका हदफ फ़िलहाल इनकी सेंचुरी होगी। मीर हमजा एक ऐसे बैट्समैन हैं जो विकेट पर रुक सकते हैं। क्या समझते हैं यासिर, यहाँ से ये बचाव करने की कोशिश करेंगे? ये बड़ा ही अच्छा कैच लिया। देखिए ये पहले दूर दूर बॉलिंग करते रहे, पिछले जो 2 ओवर से ये ऑफ स्टंप के बाहर यही जो आउट स्विंग थी दूर दूर कर रहे थे, स्क्वायर अप हो रहे थे। उस वक्त भी मोहम्मद उमर और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करीब आए और स्टंप्स की लाइन से गेंद को स्विंग किया और कैच देने पे मजबूर किया उमर को। जी हाँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस से बॉल कर रहे हैं। पहले 2 बॉल अंदर भी लेके आए उन्हें, जो एक इनसाइड है जो है बड़ा क्लोज वो था, और उसके बाद जो जिस तरह सेटअप करके इन्होंने आउट किया है, बहुत ही आला बॉलिंग अहमद बशीर की और फर्स्ट क्लास क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। एक दफ़ा फिर पांसा जो है वो खेल का पलटा और साउदर्न पंजाब, ATF साउदर्न पंजाब की फेवर में। आज पहले जो दोनों सेशन से वो सिंध की टीम ने जीते, लेकिन ये जो फैसला कुन मौका है, यहीं पर बाजी का फैसला होना है। अब 3 अच्छी गेंदें चाहिए हैं। सलमान अली आगा ने पहली इनिंग्स में एक कैच ज़रूर गिराया, लेकिन उनकी मजमूई कारकर्दगी स्लिप में अच्छी रही। ये अच्छा कैच ऐसे मौके पे जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कैच था ये पकड़ना। मोहम्मद उमर जिन्होंने 60 रन किए थे पहली इनिंग्स में, लेकिन इस इनिंग्स में बिल्कुल उन्होंने अपनी गेम को चेंज करके खेल रहे थे। जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग्स में बैटिंग की, अगर उसी तरह की बैटिंग करते तो शायद उसमें कोई शॉट्स मारने में कामयाब हो सकते थे। तो अब ये दोनों एंड्स जो हैं खेलना चाहते हैं। उमैर बिन यूसुफ, मीर हमजा पर उनको ज़्यादा एतमाद नहीं है। ये रन जो है दस्याब था, काफ़ी पीछे खड़े हुए थे इमरान रंधावा। जीतने वाली टीम को 16 पॉइंट्स मिलेंगे बैटिंग और बॉलिंग पॉइंट्स के अलावा। सिंध ने पहली इनिंग्स में 4 बॉलिंग और बैटिंग के बोनस पॉइंट्स लिए थे। भाई ड्रॉ होने पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे और ये 4 रन्स मिल जाएंगे उमैर बिन यूसुफ को। आज तमाम दिन दिल मोह लेने वाले शॉट्स उनने खेले हैं और ये उन्हीं में से एक था। उम्दा कवर ड्राइव जी, बहुत ही उम्दा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। रिस्ट की मदद से ये शॉट खेला, फ्लिक ऑफ रिस्ट, लेकिन नहीं, फुल फेस ऑफ द बैट। बहुत अच्छा शॉट। उमैर बिन यूसुफ ने बहुत ही दिलकश बैटिंग की आज और इस सिचुएशन में उन्होंने एक एंड को संभाले रखा और अभी भी जब तक वो क्रीज पे मौजूद हैं, सिंध की होप्स अभी भी हैं मैच जीतने की। ये मौका था सेंचुरी करने का, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा। विकेटें गिरने के बाद भी अपने शॉट्स
खेलते चले गए हैं। उमर 311, 7 खिलाड़ी आउट। तो ये छठी होगी, 15 ओवर आखिरी है अभी। आखिरी वो जो एक घंटा लाजमी होता है जिसमें 15 ओवर्स फेंकना ज़रूरी हैं, वो शुरू हुआ चाहता है इस गेंद के साथ। जी हाँ, मैंडेटरी ओवर्स का आगाज़ हुआ है और ये 15 ओवर्स करने ज़रूरी होंगे। सिर्फ लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ओवर्स पूरे अगर नहीं होते तो वो लाइट की वजह हो सकती है। उसके अलावा 15 ओवर्स करना ज़रूरी है। यहाँ उसके अलावा एक चारा ये है कि अगर दोनों कप्तान चाहें तो वो मैच ख़त्म कर सकते हैं जिस वक्त उन्हें लगे कि इसका फ़ैसला नहीं होने पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला है ये जा सकता है आखिरी ओवर्स की तरफ भी, क्योंकि सिर्फ 3 गेंदें दूर है सदर्न पंजाब की टीम। और यहाँ उमर बिन यूसुफ ये जिस तरह खेलते हैं, अगर 1-2 ओवर उन्हें अच्छे मिल जाते हैं, ख़राब गेंदें मिल जाती हैं तो ये फिर 70 रन्स भी उनकी पहुंच में हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और स्पिनर्स की अगर बात करें तो स्पिनर्स को लाना एक बड़ा गैम्बल होगा इस टाइम पे, क्योंकि उन पे रन्स खुल भी सकते हैं। लेफ्ट हैंडर खड़े हैं क्रीज पे, दोनों फास्ट बॉलर्स इस वक्त पूरी तरह अटैक कर रहे हैं। इस जाविये का इस्तेमाल आज दिन भर करते रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स को मजबूर करते रहे हैं दूर की गेंदों को भी खेलने पे, और ये तो करीब थी मीर हमजा के। जी हाँ, एक चीज़ है, सिंध की टीम ने पूरी तरह इस इनिंग्स में बड़ी अच्छा इन्होंने अपना इरादा जाहिर किया मैच जीतने के लिए। शुरू में ओपनर्स ने और फिर उमर बिन यूसुफ। यहाँ से अगर सिंध की टीम थोड़ा सा पिछले कदम पे आती है तो मुश्किलात इनके लिए बढ़ेंगी। तो उमर बिन यूसुफ अपना 100 करते हैं तो ज़रूर पॉजिटिव खेलें। यू नेवर नो, क्रिकेट में आजकल T20 क्रिकेट की वजह से 10 से 15 रन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 रन 12 रन के 2-2 3-3 ओवर्स अगर मिलते हैं इन्हें तो गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यहाँ और 4 से 5 ओवर्स के बाद जो नई गेंद का असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो जो मोमेंट मिलती रही है साधारण के पेसर्स को वैसी नहीं रहेगी। लेकिन क्रीज का सबसे अच्छा इस्तेमाल इस मैच में किया है अहमद ने। बहुत ज़्यादा उनकी रफ्तार नहीं है, लेकिन राइट हैंडर को लेफ्ट हैंडर को वाइड ऑफ द क्रीज जाकर ये गेंद करते हुए नज़र आए हैं। और अगर हसन अली इस मैच में खेल रहे होते तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये और भी कितनी ज़्यादा दिलचस्पी होती और ये बॉलिंग अटैक और मजबूत होता। इस बार गेंद शायद बल्ले से दूर रह गई। अंपायर को दबाव में लाने की कोशिश की थी। बॉलर जो है इस अपील में देर से शामिल हुए। जी हाँ बिल्कुल, बल्ला जो है ज़मीन पे लगा और एक साउंड, एक आवाज़ आई जिसकी वजह से अपील की विकेट कीपर ने और सब ने, और इख्तिताम पजीर हुआ इसके साथ। उमर बिन यूसुफ 99 रन्स पे खेल रहे हैं और वो सामना करेंगे इलियास का। 70 रन्स चाहिए सिंध की टीम को मैच जीतने के लिए और 15 ओवर्स का खेल बाकी है, 14 ओवर्स का। आज दिन भर
अच्छी टेक्निक दिखाई और अच्छा दिफा इनकी जानिब से देखने को मिला। कई बार लगता है कि ऑफ साइड में शॉट खेलने के लिए थोड़ा सा गेंद के लेग साइड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि बेसिक्स बहुत अच्छे हैं इससे स्विंग को भी कवर कर लेते हैं। ये इत्मीनान दे रन्स इनके लिए 99 रन्स, अगर ये सेंचुरी बनाते हैं, मैच बचाते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा शॉट था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। इस मौके पर जो है एक और फील्डर को, ये जो डीप पॉइंट के फील्डर हैं, इनको भी आगे लाया जा सकता है। यहाँ उमर के लिए आसानी के साथ ये रन्स इनको देने नहीं चाहिए। लेग साइड का इलाका मिड ऑन के अलावा खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस खेलने के लिए जाएं। और ये पुल शॉट खेला और ये रही शानदार सेंचुरी, छठी फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई। दूसरा रन यहाँ मुकम्मल क्या हो पाया था, ये नॉट आउट रहेंगे। यह सेंचुरी ज़रूर मुकम्मल हो गई है उमर बिन यूसुफ की, और आखिरी दिन की पिच पर उन्होंने अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला। और ये यादगार इनिंग्स है इस नौजवान बैट्समैन की, और यकीनी तौर पर इनके मुतालिक आइंदा आने वाले दिनों में हम और भी बहुत ज़्यादा सुनेंगे। फहम और फिरासत से भरपूर ये सेंचुरी थी और स्ट्रोक से भी, जिसमें 14 चौके शामिल रहे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही आला इनिंग, गट्सी इनिंग खेली उमर बिन यूसुफ ने। जो सूरत हाल थी उसमें बहुत आसूदगी से खेले, और ये दूसरे रन में जो था रन आउट की एक बहुत ज़ोरदार अपील हुई। बड़ा करीबी मामला था लेकिन पहुंच गए थे मीर हमज़ा, और इस तरह छठी सेंचुरी उमर बिन यूसुफ की। बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और बड़ी गट्सी इनिंग। एक बार फिर रन आउट का मौका था मीर हमजा के ही एंड पर, ये थ्रो भी की गई, पहले बॉलिंग एंड पर, अब बैटिंग एंड पर। इतनी जल्दी जो है मीर हमजा अपनी जगह देखिए छोड़ते नहीं है, देर से दौड़े और ये रन आउट हो जाते हैं। अगर ये लगती है कि हसन खान बहुत ही फुर्तीले फील्डर हैं, ये रन खतरे से खाली नहीं था और शायद अभी ज़रूरत भी नहीं थी, 2 गेंदें बाकी थी इस ओवर की मजीद। एक रिस्की रन और बाल बाल बचे मीर हमज़ा। 7 खिलाड़ी आउट हैं 314 पे सिंध के, और 67 रन चाहिए इनको मैच जीतने के लिए, लेकिन 3 विकेटें चाहिए ATF साउदर्न पंजाब को। उम्दा बॉलिंग। इस वक्त 2 फील्डर्स जो हैं वो मैदान से बाहर हैं, साधारण के उमर सिद्दीक और जैन अब्बास, और उमर सिद्दीक की जगह पर विकेट कीपिंग मकबूल अहमद कर रहे हैं, और हसन खान जो हैं ये एक और मुतबादिल फील्डर मैदान में आए हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा फुर्ती आ गई है जो फील्ड में। हसन खान अच्छे फील्डर्स में शामिल किए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये वाला जो चांस है, जिस तरह 2 बॉलें 3 बॉलें खेलनी है मीर हमज़ा को, इस तरह के मौके को मिस नहीं करना चाहिए साउदर्न पंजाब को। अच्छा खेले इस बार मीर हमज़ा, और इख्तिताम पजीर हुआ 314 पे 7। उमर बिन यूसुफ आज नंबर 4 पोजीशन पर खेलने के लिए आए, और उन्होंने किसी भी बैट्समैन को अपने सामने सर उठाने की मोहलत दी नहीं, और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा। फील्डर्स को भी ज़्यादातर रन्स अपने बाउंड्रीज में पाए, कवर ड्राइव्स, ऑफ ड्राइव्स से ये मुज़य्यन थी। और ये वो शॉट जो ऑफ साइड की बजाय लेग साइड में उन्होंने खेला और 2 रन पाके अपनी सेंचुरी तक पहुंच गए।
इनने ज़्यादातर जो सेंचुरियाँ टॉप ऑर्डर में बनाई हैं, ये मिडिल ऑर्डर की सेंचुरी की भी अपनी अहमियत है, ख़ास तौर पर आखिरी दिन। जी हाँ, बिल्कुल ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से करियर की तो है ही है, लेकिन ये इस तरह की इनिंग हमेशा याद रहती है जब चेस कर रहे हो और आप 100 करें। अली उस्मान को लेके आए हैं मीडिया एंड से, चेंज की बॉलिंग में साउदर्न पंजाब में। सिंध के ये इस मैच में वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। जैन अब्बास ने सेंचुरी बनाई थी साउदर्न पंजाब के लिए। यहाँ ये 8वीं सेंचुरी है इस साल किसी भी बैट्समैन की। सिंध की जानिब से फवाद आलम के बाद दूसरी है। उनने पंजाब के ख़िलाफ़ बनाई थी। सऊद शकील ने फैसलाबाद में सेंचुरी बनाई थी। और क्या ये पीछे रह जाते, लेकिन पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छी रनिंग, बहुत तेज़ भागे उमैर बिन यूसुफ। हालांकि बॉल बहुत क्लोज खड़े थे मिड ऑन के फील्डर, लेकिन उनकी स्प्रिंट को आप देखें कितना तेज स्प्रिंट था। यहाँ ये कुछ लगा जैसे मोहम्मद रिजवान भागते हैं अपने रन्स। क्या ये 2 गेंदों को निगोशिएट कर सकते हैं? यहाँ बाहिफाजत मीर हमजा, ये बहुत यहाँ मरला है। लेग स्लिप को भी लाया गया, शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, क्लोजिंग गली और बाल बचे। अब ये दाएं बाएं से जो इनको आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, इससे और बैट्समैन शक में पड़ता है। हालांकि गेंद जो है वो काफ़ी एतमाद से छोड़ी थी। जी हाँ बिल्कुल, और इस बार रोकने में कामयाब हुए मीर हमजा। और इख्तिताम 315 पे 7। बारह ओवर्स में 66 रन सिंध की ज़रूरत है और साउदर्न पंजाब की ज़रूरत है। उमैर बिन यूसुफ को रास्ते से हटाना, उसके लिए बड़े जतन किए जा रहे हैं, लेकिन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ये डटे हुए हैं, चट्टान की मानंद उमैर बिन यूसुफ। ये पिछले मैचेस में तो ये पिछले मैचेस के दौरान ये वीकेंड पर ये एक्शन देखने को मिलता था ये पड़ोस में, लेकिन ये मैच ऐसा हुआ है कि उन्होंने भी पैरेलल शुरू कर दी है कार्रवाई। यह एक मौके पे लग रहा था कि सिंध की टीम जो है वो मैच जीतने के लिए जा रही है और साउदर्न पंजाब जो बैकफुट पे है वो ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। साउदर्न पंजाब इस वक्त जीत की तलाश में है और सिंध की जो हिकमत अमली है वो अब लग यही रहा है कि वो ड्रॉ के लिए जाएंगे। इस मैच में सिंध को जो गिला रहेगा वो अपने सीनियर खिलाड़ियों से रहेगा। उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जो उनसे मंसूब की जाती है। फवाद आलम आज 22 रन बना सके, खुर्रम मंजूर ने 19 रन बनाए, सरफराज अहमद भी जल्दी आउट हुए दोनों इनिंग्स में, लेकिन जो इनके नौजवान खिलाड़ी थे उन्होंने वो सीना तान के सामने आए, उनने अपनी सलाहियतें दिखाई हैं।
बढ़ चढ़ के। और इस बार खराब शॉट था, ये बाल बचे हैं विकेट कीपर, और जो इर्द गिर्द के फील्डर हैं वो अपील करने से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे। क्या ये बल्ला ज़मीन पर लगा था? जी हाँ, बीट हुए, बल्ला ज़मीन पे लगा, बॉल काफ़ी दूर से गया है। जो आवाज़ आई है उसकी वजह से अपील हुई कि शायद बल्ले को लगा है। या अंपायर भी आजमाइश पर पूरा उतरे हैं, अच्छी अंपायरिंग की है खालिद महमूद ने, ख़ास तौर पर इस मैच में। यहाँ इसमें कोई शुबा नहीं कि ये मैच इनके भी यादगार मैचेस में से एक होगा। बहुत अच्छा बॉल अंदर आया पड़कर और इनसाइड एज हुए। जी हाँ, खालिद महमूद ने बहुत अच्छी अंपायरिंग की। काफ़ी अरसे बाद इनको हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं ये, और इस मैच में बहुत ही आला डिसीजंस किए इन्होंने। यहाँ क्योंकि जब ये मैच का आखिरी दिन होता है तो अंपायर्स की भी फिटनेस टेस्ट होती है। ये मुसलसल 4 दिन तक और सेशन बाय सेशन इतने ज़्यादा एक्शन की निगरानी करना, आपका इन्हमाक कम हो सकता है। अपर कट खेलने के लिए गए थे, ये ज़्यादा देर तक स्ट्रोक खेले बगैर रह नहीं सकते, लेकिन ये उनकी पहुंच से बाहर थी, इसलिए अंपायर ने ये वाइड कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी बॉल था और बहुत अच्छा डिसीजन अंपायर का। ये डेलिब्रेटली बाउंसर किया था मोहम्मद इलियास ने ताकि एक रन ना हासिल कर सके उमैर बिन यूसुफ। काफ़ी ऊपर बॉल था, अगर नॉर्मली ये बॉल होता तो वाइड शायद ना देते क्योंकि 4 दिनों की क्रिकेट है, लेकिन आखिरी बॉल है और सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल वाइड बॉल ठीक था। लेग साइड में 3 फील्डर बल्ले के करीब थे, इससे रन नहीं हासिल कर सके और अगले ओवर के लिए बेनकाब कर दिया है। पूरे ओवर के लिए अब मीर हमजा को 316 पर 7। और जी हाँ, मोहम्मद अब्बास जो है वो इस एंड से बॉल करेंगे। बहुत अच्छा फैसला सलमान का। मैच समरी, ATF साउदर्न पंजाब पहली इनिंग में 278 रन्स किए, सिंध ने 181। दूसरी इनिंग में साउदर्न पंजाब ने 283 रन्स किए और सिंध को 381 रन्स का हदफ दिया। सिंध 316 पे 7। जब से ये दूसरी नई गेंद की आमद हुई है, बड़ी हलचल रही है। इस अरसे में मोहम्मद अब्बास ने 2 विकेटें हासिल की, अहमद बशीर ने भी कामयाबी हासिल की। ये देखिए, ये चहन नहीं है इस पूरे इनक्लोजर में। सदर्न पंजाब का पलड़ा ज़्यादा वक्त इस मुकाबले में भारी रहा। आज 2 सेशंस जीते सिंध ने, पहला और दूसरा। एक मरतबा फिर खेलने पे मजबूर हुए मोहम्मद अब्बास की ये बड़ी कमाल बॉलिंग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ओवर है, इसको अगर सरवाइव कर जाते हैं तो अच्छा होगा। जो टाइम गुजर रहा है थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ रही हैं सिंध के लिए। ये जो आखिरी लम्हात हैं ये बहुत क्रूशल हो गए। गेंद ऑफ द एज गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। यह तकरीबन जो है 20 मिनट जो है, उसके बाद आमतौर पर अंपायर्स खेल ख़त्म कर देते हैं 5:15 पर, जो पहले 3 दिन की रीत रही। तो इसलिए मुमकिन है कि जो बाकी मादा तमाम ओवर्स हैं वो नहीं हो सकें, लेकिन
इनके जो नंबर 10 और 11 के खिलाड़ी हैं उनमें फ़र्क नहीं है, इनके नंबर 10 भी 11 की तरह के ही लगते हैं, इसलिए मीर हमज़ा को जिम्मेदारी से खेलना होगा। ये अच्छा शॉट है, क्लिप कर दिया, 1 रन लेना चाहेंगे, दूसरा भी और ये तीसरा भी मुमकिन हो सकता था, लेकिन इस ख्याल से कि 2 ही गेंदें बाकी हैं। उमैर बिन यूसुफ जो है ये करनी चाहिए थी कोशिश तीसरे की। यहाँ जी हाँ, सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं और शायद इस वजह से उन्होंने तीसरा रन नहीं लिया, क्योंकि इसके बाद जो अगला ओवर है वो पूरा फिर खेलना पड़ेगा मीर हमज़ा को। लेकिन ये 2 बॉलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमाल का ये दिन रहा है और बड़ा सख्त मुकाबला हुआ कांटे का। साधारण पंजाब के बॉलर्स ने आज के दिन 7 विकेटें हासिल की और कई घंटे तक ये लगा कि सिंध की टीम जो है ये मैदान मार सकती है, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलना शुरू हुआ, धूप नरम पड़ी, सिंध की बैटिंग भी नरम पड़ गई। और अब जो है तो मैच बचाने की ठान ली है उमर और हमजा ने 318 पर 7। सरफराज अहमद की जो विकेट थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से सिंध जो है वो बैक फुट पे आई। दिन का दौरानिया खासा कम पड़ गया है, लेकिन अभी इतनी रोशनी है सदर्न पंजाब के लिए कि वो ये मैच जीत सकें। उमैर बिन यूसुफ, आज का दिन इनके लिए बड़ा रोशन रहा। ये शायद इनके करियर की बेहतरीन, अगर इनिंग्स नहीं है तो बेहतरीन इनिंग्स में से ज़रूर होगी, क्योंकि पिंडी की पिच पर आमतौर पर जो साउथ से बैट्समैन आते हैं उनको मुश्किल होती है यहाँ खेलने में, लेकिन यहाँ के बाउंस, पेस, स्विंग, सीम का उन्होंने जुर्रत से मुकाबला किया और अच्छी टेक्निक भी दिखाई। ये मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इनका जो मुस्तकबिल है वो मुझे ताबनाक लगता है। उमैर बिन यूसुफ का मिडिल ऑर्डर में इन दिनों अच्छे खिलाड़ियों की ज़रूरत भी है पाकिस्तान को। यासिर, आपको कैसी लगी इनकी आज की काविश? ये बहुत ही अच्छी एफर्ट की उमैर बिन यूसुफ ने, और स्ट्रोक प्ले बहुत अच्छा था, टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, और जो पार्टनरशिप्स थी इनके साथ खान के साथ ऑक्यूपाई किया क्रीज़ को इन्होंने, ये अच्छी बात है। और अभी तक क्रीज़ पे मौजूद हैं, 171 बॉलें खेली। देखें, ये बेसिकली स्ट्रोक प्लेयर है, और जब से ये डिफेंसिव खेलना इन्होंने शुरू किया तो ये थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, लेकिन ये इस वक्त टीम की डिमांड है कि ये इस मैच को बचाएं, वरना उनका माइंड यही बना हुआ था कि इस मैच को जिता के जाना है मैंने, तो वो ये शायद इनको ये चीज़ थोड़ी सी एज ए बैट्समैन हर्ट कर रही होगी। यहाँ एक अज़्म जो नज़र आ रहा था कि अपनी टीम को इस पहाड़ जैसे स्कोर को सर करने का, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरे एंड पर वो साथ मिला नहीं। इनको ताली दोनों हाथों से बजती है, क्रिकेट टीम गेम है। जी, इनका और साथ का जो साथ था एक दूसरे के साथ, जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद सरफराज अहमद की विकेट अर्ली जाना सिंध के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और इसके बाद अच्छा शॉट, इस बार सिर्फ एक ही रन लेंगे कि ये, इसके बाद 2 बॉलें हैं जो कि सरवाइव करनी पड़ेंगी
मीर हमज़ा को। इसके बाद अबरार अहमद को खेलने के लिए आना है। गुलाम मुदस्सिर, ये दोनों टेल एंडर्स हैं। इसे एक विकेट की अभी भी ज़रूरत है। फौरी तौर पर अगर एक विकेट मिल जाती है तो ये जो हलचल है ये बाकी रहेगी, बाकी मादा ओवर्स में भी। तो क्या जो है मीर हमज़ा के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सिर्फ रोकने पे इक्तफ़ा कर रहे हैं, ये ख़ुद सलमान अली आगा बॉलिंग करने के लिए आ सकते हैं एक ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के ख़िलाफ़। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं और कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट हैंडर हैं। एक एंड पे मीर हमज़ा, हो सकता है कोई बॉल स्पिन हो जाए, कोई बॉल अंदर आए। लास्ट डे का पिच है, अनइवन बाउंस भी हो सकता है, तो ज़रूर चांस लेना चाहिए। डिफरेंट ऑप्शंस को अपने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर के सामने जो ये गेम पुरानी हुई है ये ज़्यादा सहल लगने लगी है इनको। आप बैटिंग मीर हमज़ा को 319 पर 7। What a brilliant game of cricket this has been. Still not over yet. Oh, just away from the grasp of Maqbool. He was desperately scrambling to his left. A little tickle there from Umar. Earns him a boundary. So close, yet so far for Southern Punjab. There you go, down the leg side, full stretch. Unable to grab. What a cricket, you're right. This has been a wonderful 4 days of cricket. Finishing here with sunset. Well, there could still be time for some more drama. Abbas running in, giving it his all. Both these teams have immense credit has to be given to both these teams for producing such a fantastic game. And also a word for the curators. This has been a wonderful pitch. We've scored runs, we've seen wickets from the quick men. Plenty of high-class skill on display over the past 4 days. And this man has played a gem. And look at that defense. Just the perfect picture. Yes, exactly. Well done. Well played. Omer and 108 runs in 177 deliveries. Really a class act. Need of time, played according to the situation. And I think so that they have they've done a really good cricket. These are Ali's friends in the background. That middle of the bat has really been hit consistently. Well, there's been a couple of games played simultaneously to this one. Khyber Pakhtunkhwa versus Central Punjab ended in a draw. Remember that one day was washout because of rain. Sabzada Farhan getting 100 in the second innings. Points there for Khyber Pakhtunkhwa. Made 220 and then they conceded a lead. But then second time round, only 3 wickets down. See on that 4th day, still that ball carrying very nicely. This has been a great battle between the experienced Abbas and a very, very talented Umar bin Yusuf. Must have been a huge learning curve. And it just, this is the beauty of this contest.
You've seen established test cricketers, household names, and then they've come up against some youngsters like Umair and Saim, and both of them, they produced excellent quality of cricket. Well, his top delivery, 99 overs been bowled, 3-2-3 for 7. A lot of tired bodies in both the camps. They've really worked hard. A few very tired people in our control room as well. They've put in a lot of hard work as well to bring you this wonderful broadcast. I hope you enjoyed the pictures coming from Rawalpindi Cricket Stadium. It's been an absolute privilege to bring such a wonderful game. Ilyas will have a chance to go at Hamza for the full over. 3 slips in a gully, short cover, short leg catching. Oh, squared him up. Point fielder is slightly back, but no chance of a run. I'm telling you, Ejaz, there is time for more drama. Yes, cricket is a game of chances. Anything can happen at any time. And you're right, might be an angle delivery onto the pads. Only watching the game, but he really enjoyed. I hope so for the last 4 days. Watching with intent, intense viewing. Hamza does the right thing. Takes the single and brings Umair back on strike. Time is running out for ATF Southern Punjab. They're still at this late stage. If they dislodge Umair bin Yusuf, that will really send the panic buttons in the changing room for Sindh. Squared him up. Pretty similar to the dismissal in the first innings of Umair. Same bowler, Ilyas. Well done, team. Both of these two, though that faces are giving you the story, but they have done extremely a good job in playing with a bat, with a ball. So some smiles at nearby finishing the day. Strange looking stroke. Ilyas went for the bouncer, it didn't come off at all, and just 2 deliveries. Can Ilyas dislodge Hamza? 7 overs potentially left after this. We know there's not enough time for all those 7 overs. Bad luck can come into play in the next few minutes. Not long to go for Sindh. Hamza has been resolute. Look at that. 21 deliveries he's faced. 22 now. Valuable contribution. Yes, exactly. Almost 4 overs. He's been there. So it's a good way just to block one end, because the wickets were starting falling at that time when he came up and had a bit of the go. And rightly doing so. 3 runs in 22 deliveries. That is the need of time for him and for the side. Good bouncer, good line, but well played, Hamza. He was equal to the task. Another over safely negotiated. 325 for 7. That was expected. Ali Usman getting the ball as the light fades here at the Pindi Cricket Stadium. Just trying to get as many overs through. Probably another couple left. Remember, Southern Punjab just need 3 good deliveries.
Mir Hamza, 23 deliveries, but standout batters, the two young guns of Sindh, Saim Ayub and Umar bin Yusuf. A lot was expected of Ali Usman. 1 for 72. He really toiled hard without much success. We were discussing earlier in the morning that in this pitch there wasn't a lot of pace, so for the spinners it was important to find the right pace to bowl on this pitch. Very, very comfortable. Yeah, looks like here straightforward deliveries from the spinner. So comfortable. But one of the good things, the runs were scored here on this surface, wickets were taken. So overall good 4 days of cricket. Just about few more moments. Talking about the wicket, 5 for Ilyas, 11 in the match for Abrar. Usman Salahuddin playing a beautiful knock in the first inning. Runs for him, runs for Saim Ayub, and 100 for Umar bin Yusuf. This has been a brilliant cricketing pitch. Just the time is running out to force the result though. 325 for 7. Well, Faisal, I think umpires, they were looking towards each other, but then they signal, just go for another over, I think. Might be 1 or 2. His sun is going down. Saw some kites as well. You got one in the picture now. Now Lahore is famous for a kite flying, but so is Rawalpindi. We've always seen in the past when international cricket was played here that during the matches a couple of kites will definitely come onto the field. But this game is, I think, heading towards a draw. Finally, I can say this. Even up until 10 minutes ago, you couldn't say this with any assurity. But now I think Sindh have managed a great escape here. Thanks largely to first Saim Ayub and then Umar bin Yusuf. Now Salman rushing through his over. Gone through the gap. How did it miss the off stump? Yes, there you go. I'll just get through from the defenses. Well, something about to happen, but it's gone good. Lights are on in dressing room. 325 for 7 after 102. You make the comment, the lights are on in the dressing room. Last time Paul Nixon toured Pakistan, he was in a dressing room with the lights on because England was reaching that famous win in Karachi. Pretty close to the sunset on that occasion as well. The umpires had come close, but I think they will allow one more over because it's spin. And it's Ali Usman will have to bowl to Umar bin Yusuf. Looking back at the 4 days, like I said, we've seen some intense battle. High skills on display, batting, bowling, fielding. You could say that some of the tactical decisions you can always question and argue. Salman Ali Agha's captaincy came into question earlier in the day when he wasn't as proactive as he has been in the later half of the day. One would feel that he allowed Sindh off the hook. Plenty of easy singles, rotation of strike. Didn't allow his bowlers to build plans against specific batters. But now, I think that, and plenty will have to be pondered upon when this match comes to an end.
more first-class runs for Umair. Just the one, in fact, because he will only allow Hamza the 2 deliveries. But yeah, looking back at those 4 days, Ijaz, how's your take? How did you see this game? Well, in this case, that might be, it's going to go draw. But I think cricket has won here. The batting, the bowling, the battle has been really wonderful. Right from the start of the day, everyone really chipped in, showed their skills. Openers, middle order, then the tail. Lots of time we did see that they were not on the mark, but on the second attempt, we did see some brilliant batting as one of the batter, Umair, is there, 110 in 192 deliveries. So overall, good cricket from both teams, Sindh and Southern Punjab. We have done a beautiful 4 days of cricket here at Pindi Cricket Stadium. Just keep an eye on both the umpires. They're coming together. It seems pretty gloomy out there. And as is the practice generally, they have had the reading in the previous days. They've set the standard. And I think Sindh has managed the great escape. We just need the final confirmation, and it has come. What a game of cricket this has been, and what a performance by Sindh. Handshakes in the dressing room. They really deserve huge credit because they came out of this game with their backs were to the wall, had to fight the whole final day. At one stage, they were in the hunt, but after that dismissal of Sarfraz, they shut the shop and were just content with the draw. Southern Punjab played wonderful cricket on 3 days of this match. They dominated and they have taken the lead on points in this game, but will be disappointed that they couldn't force the victory here. But good spirit between the two teams. 2 umpires, they officiated the game in a wonderful manner. They controlled the game. Excellent decision making as well. And eventually at the end of 4 hard-fought days, you see the smiles and you know that we've just seen a fantastic game of cricket. Yes, exactly. Well done. Graph went up, downwards, many a times in a bowling and batting. But overall, good standard of cricket we witnessed here. And all of them, they deserve applause because they have done a beautiful cricket. Test cricketers, the youngsters, the debutant, all of them, they've been chipping in. Sometimes it's your day, the luck is favouring you. Sometimes the luck is not in your favour. But overall, good cricket. And last day today was excellent. And that man in your picture, Umair bin Yusuf, will take the plaudits. This will give him huge confidence, earning a draw, batting out on the last day and scoring a magnificent 100 is really something special. Saim Ayub in the picture as well. He set the stadium ablaze with his magnificent stroke play earlier. Really a talent to watch out for in the near future. This Sindh batting card, look, there's contributions from everywhere. Some big, some small, but everyone chipped in. Khurram Manzoor 19 was featured in the first wicket partnership of 68. And Saud Shakil 24, another 50-run partnership for the second wicket. Umair bin Yusuf stand out 110. Had a good partnership first with Saim Ayub. Fawad Alam stayed for a little while, and then that partnership with Saad Khan really gave Sindh hope. But then the dismissal of Sarfraz really shut up shop for Sindh. They managed to get away with the draw. Well, 3 wickets of 55 runs in 20 overs. Mohammad Abbas, the senior pro. 2 wickets for Ahmed Bashir. 1 wicket each for Imran Randhawa and Ali Usman. And they finishes it at 326 for 7. Anytime a team bats 103 overs in the 4th innings and escape with a draw, you have to put your hand up and say well played to them. And that is how the match ended eventually. 278 played 181 on the first innings, a lead of 97 runs for Usman Salahuddin, a 5 for 4 Ilyas, Muhammad Umar with a 50 and Abrar with 5 wickets in the first innings. Second time around, Zain Abbas scored a magnificent ton. Abrar with another 6 wickets, 11 in the match for him. But since Umair bin Yusuf
110 unbeaten, saw them close at 326 for 7, and the match ended in a draw. You cannot find more exciting draws than this. I know we all were wanting a result, but this draw was exciting in more ways than one. We'll take a short break and we'll be back with Ali Yunus, who will be chatting with both the skippers in just a short while.
What a remarkable game of cricket we've just witnessed. Both teams fighting till the last over, but in the end, the match finishing in a draw. It's a very, very good game that we have witnessed. I've got the two captains to speak to. First of all, I would like to talk to Salman Ali Agha, the Southern Punjab captain. Salman, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैच शायद आपको जीतना चाहिए था, तो थोड़ा अनलकी फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जो टी के बाद हमने जाकर जो लास्ट घंटे में हमने 2-3 विकेट ले ली थी नए बॉल पे, अगर हम वो वहाँ पर एक विकेट और ले लेते तो शायद मैच जीत जाते, लेकिन दैट्स द वे क्रिकेट गोज़। आपकी डिक्लेरेशन की बात करते हैं, आपको लगता है कि शायद थोड़ा डिले होगी डिक्लेरेशन, आपको थोड़ा टाइम और देना चाहिए था अपने बॉलर्स को? लेकिन जिस तरह विकेट चल रहा था, हमारा यही था कि हम मैक्सिमम 110 ओवर जो है ना वो इनको देंगे, और टारगेट ये था कि 400 के राउंड अबाउट टारगेट हो, लेकिन वो है कि उसमें वो मिल नहीं सका, तो उसकी वजह से हमारा जो उम्र की और जहन की पार्टनरशिप थी, अगर वो थोड़ी सी और लंबी चली जाती तो शायद हम 400 के करीब चले तो जल्दी रन बन जाते, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे आउट हो गया, जिसकी वजह से हमने थोड़ी लेट कर दिया डिक्लेरेशन। ओवरऑल गेम की बात करते हैं, आपने डोमिनेट किया चारों दिन, तो आप सेटिस्फाइड हैं एज अ कैप्टन अपनी टीम से? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली गेंद तो हमने बहुत अच्छी खेली है। जिस तरह पहली इनिंग में हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, इस तरह का विकेट नहीं था कि आप इस विकेट पे 170 पे किसी को आउट कर सके, लेकिन ऑब्वियसली हमने फिर भी जो है अच्छी फाइट की, तो बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा मैं। और अब्बास का होना कितना ज़रूरी था सेकंड इनिंग में? हमने देखा कि अपने बॉलर्स के साथ वो कंटिन्यूसली बात करते रहे, तो काफ़ी हेल्पफुल हैं टीम में आपके लिए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनके आने से टीम को बूस्ट जरूर मिला है, और ऑब्वियसली वो जो बॉलर्स के साथ बात करते रहते हैं, तो वो आने से उनका बूस्ट मिला। होपफुली ही कैन कंटिन्यू लाइक दिस इन नेक्स्ट मैचेस एज वेल। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग टूर्नामेंट। सलमान, साउथ शकील, मस्ट बी अ वेरी प्राउड कैप्टन साउथ। आप अब जिस तरह टीम खेली है सेकंड इनिंग में, काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं अपने यंग बॉयज़ से स्पेशली? जी ऑब्वियसली, जिस तरह मुझे उन पर कॉन्फिडेंस रहा है हमेशा से, और मैं हमेशा से साथ को और उमर बिन यूसुफ को बैक करता रहता हूँ, तो ये है कि उन्होंने आज डिलीवर किया, और जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो खेले, प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने किसी भी वक्त ये शो नहीं किया कि वो यंगस्टर्स हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और जो उनका इंटेंट था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, तो मैं एज अ कैप्टन काफ़ी खुश हूँ उनकी परफॉर्मेंस से। टारगेट बहुत ज़्यादा था, तो आप एक टाइम पे ऐसा लगा जैसे आप चेज़ के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ ऐसा लगा कि बस अब इसके बाद शायद हम अटैक नहीं करेंगे? हमारा माइंड काफ़ी क्लियर था। हमारा प्लान ये था कि हमें सुबह वाला सेशन थोड़ा सा बस देखना है, उसके बाद से हम चेस के लिए जाएंगे, और हम काफ़ी अच्छा जा रहे थे। एट टाइम पे जहाँ साद की और सरफराज भाई की विकेट जो बैक टू बैक आई, वो जो स्पेल अब्बास भाई ने वहाँ पे किया नई बॉल के साथ, वो इंपॉर्टेंट था। फिर वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि यार ये थोड़ा सा वर्ल्डी हो जाएगा, तो बस वहाँ हमने फिनिश किया। अब बात करते हैं थोड़ा यंगस्टर्स के, आगे हमने जिक्र किया जिस तरीके से खेले हैं, अब्रार से स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने 11 विकेट्स हासिल की, और फिनिश जिस तरीके से उमर बिन यूसुफ ने किया, एज अ कैप्टन आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि यंगस्टर्स डिलीवर कर रहे हैं। जी ऑब्वियसली, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं काफ़ी इनको बैक करता हूँ, काफ़ी लाइक करता हूँ, और जो एनर्जी वो लेकर आते हैं, ख़ासतौर पर उमर बिन यूसुफ इन द फील्ड भी, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है एक कप्तान के लिए भी। और जिस तरह अगर हम बात करें अपना अब्रार की, जिस तरह उसने बॉलिंग की, 11 विकेट लेना है टॉप ग्रीन विकेट पे, काफ़ी ज़बरदस्त था, और काफ़ी कंट्रोल उसने बॉलिंग की, और काफ़ी लंबी बॉलिंग की। अगर आप उसका पहले दिन का स्पेल देखें तो 35 ओवर्स का उसने स्पेल किया वहाँ पे, तो काफ़ी ज़बरदस्त टीम कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करेंगे कि आगे पूरे मैचेस पूरे जीतें। नेक्स्ट मैच भी आपको इधर ही खेलना है, तो आपको क्या समझते हैं कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एज अ टीम? थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि हमारा ये अवे वाला एडवांटेज हमने कोशिश की थी कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर सकें, वहाँ हमने थोड़े से उनसे रन ज़्यादा करवाए। अगर हम वहाँ अर्ली ऑन उनको ज़्यादा पकड़ लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट साउथ शकील। वेरी मच, थैंक यू। Right, you heard it from both the captains. That's all we have from down here. It's back to the commentary box now. Thank you very much, Ali Yunus. And first-class cricket games coming thick and fast. In a couple of days, round 4 will begin. Balochistan versus ATF Southern Punjab at the Abbottabad Cricket Stadium. The live streaming will come from Pindi Cricket Stadium. Khyber Pakhtunkhwa versus Sindh, and Central Punjab will lock horns with Northern at the Iqbal Stadium in Faisalabad. That's starting from 15th of October. Well, we've seen 4 wonderful days of first-class cricket here, and we look forward to seeing more of the same in a couple of days' time. Signing off from the broadcast here from the Rawalpindi Cricket Stadium, this is Shah Faisal on behalf of all our production team. I hope you enjoyed our coverage, and we look forward to your company in a couple of days' time. Until then, it's good night from Rawalpindi Cricket Stadium.